Thank you. Now I would like to welcome the first presenter of today's virtual meeting, Dr. Saring-Stobden. Dr. Saring-Stobden is a scientist F, also the head of Horticulture Department at Defense Institute of High Altitude Research, DHAR, DRDO, Leh. His research area is related to the horticulture and protective cultivation in Ladakh. In 2018, Dr. Stobden was awarded with the prestigious Fakhruddin Ali Ahmed Award for his outstanding research in tribal farming systems by the Indian Council of Agriculture Research. He is also a Fellow of Indian Academy of Horticultural Sciences and Indian Society of Horticulture Research and Development. Welcome you, Dr. Saring-Stobden. Thank you very much, organizer, for inviting me to this workshop. I am from the Defense Institute of High Altitude Research, and it is an establishment of DRDO. In fact, DRDO is the first R&D institute established in Ladakh, and it was established way back in 1962. And primarily, we work on the horticulture sector in Ladakh region. And so far, this institute has immensely benefited the people in Ladakh. And one thing I would like to add, whatever technologies that we actually develop at DHAR, we formally transfer this technology either to the agriculture department or to the state horticulture department so that it can be actually taken to different places in Ladakh. So today I will be talking about doubling farm income in Ladakh. So I'm not talking about the futuristic technology as such, but then there are many technologies which are readily available, which can easily be replicated. And at the same time, some of the technologies already just gone to the farmers field, and we found that people are really benefiting out of those technology. So I've made a short presentation. So let me just share my Dr. Stobden, in the meanwhile, when you are uploading your presentation, I would request you and all the next speakers, sir, if it would be good if you can use common language, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है, हम बीच-बीच में वो भी इस्तेमाल करें so that हमारे जो किसान भाई जुड़े हैं वो भी समझ पाएं जो आप बोल रहे हैं, सर. Okay, just एक मिनट, हाँ यार. So your slides, yes, visible, sir, visible. So you can visible now. Yes, sir. You can use as a presentation mode at the bottom of the PPT. You can click that or F5. I'm using this for the first time, so some difficulties there. Sir, your slides are visible. You need to just press F5 for the presentation mode. Otherwise, you can go this way also, sir. Your slides are very much visible, sir. Okay.
Sir, at the bottom, yes, just next to where it is written 112%, you can use the presentation mode. You can click that presentation mode. Sir, right bottom of, yes, on the right, slightly right side, where it is written 112%. I can't see it here. On your PPT, sir, on your PPT at the bottom, it's written, yes, just next to your mouse pointer. No, at the bottom, yes, there. Just before 112%, yes. Use this. Now it will go into the presentation mode, sir. Okay, can you see it now? Sir, it's visible. It's not in the presentation mode, but I believe you can go forward, sir, with this way also. Sir. Okay, yeah, sorry, I'm actually new to this Microsoft. Yeah. Thank you so much. So I'll be talking about doubling farm income in Ladakh. So I'll be talking basically on the technologies which are ready to be adopted, not something which is actually like futuristic. And whatever technology which I'm going to actually discuss, they are very simple technology. They are farmer friendly technology. They have been tested at our laboratory. And some of this technology, we have already transferred the technology to the state agriculture department and horticulture department. And most importantly, we are basically looking at technologies or crops where the income of a farmer can be increased not just by double, but at least 20 times. So with that target, we have been working on on horticulture crops and at the same time on protected cultivation. So Ladakh, as we all know, is basically a cold desert. So whenever we talk about Ladakh and the futuristic technology, we really need to take into consideration the condition which prevails there in Ladakh. So Ladakh is basically a cold desert where the mean maximum temperature around 13.5 degrees centigrade and the mean minimum temperature is around 0.2 degrees centigrade. And we call it desert because we receive just 115 millimeter of precipitation in a year, and the relative humidity out there is very low, 25 to 36 percentage. And because of this cold climatic condition, the total crop area in the region is only 0.4%, even though the geographical area of Ladakh is more than that of states like Himachal or Haryana, but then total crop area is very low, and at the same time the forest cover is only 0.23%. The key challenges which the people in Ladakh are facing, and accordingly the futuristic technology should actually target on those. Number one, as said by the Chief Agriculture Officer, Mr. Tashit Setan, we have got a very short growing season. Your slides are not moving, sir. If you have moved, it's not moving. Yes, now it's moving. Good. Okay. So we have got a few challenges. Number one, the growing season is very short, from May to September. And as said earlier, despite having a huge geographical area, the land holding is very small. Almost 60% of the household get less than 1 hectare of land. And that's the reason that normally when we talk to any farmers in Ladakh, we never talk in terms of hectares or in acres. We actually talk in terms of canal, because the land holding is very small there, and 20 canals actually make 1 hectare. And apart from the cold, water scarcity is a major problem in Ladakh. And at the same time, since we have got a very short growing season, there's a glut of fruits or vegetable in the market, and that's why marketing become a very difficult for the people there. And at the same time, in recent days, actually, the incidence of insect pests and diseases actually it become a major problem there in Ladakh. So as a rule of thumb, people who are not actually much familiar about Ladakh, the rule of thumb, particular for crops like fruit, is that it comes into flowering in the month of May, and from July to September, we normally harvest the crop. In case of vegetables, we generally raise the nursery in greenhouses in March, go for transplanting in the month of May, and harvesting is done from July to September. And from October to June, we don't get any crop in the open field condition. Similar in case of cereals, we go for sowing in the month of April and May, and harvesting is done from August to September.
So whenever we have to actually talk in Ladakh, I request everyone actually who are working on in particular in the field of agriculture to keep these points in mind so that whatever technology they develop, it should be relevant for the people, for the farmers who are there in Ladakh. So despite having such difficulties, but we see that there's immense opportunity. The place of Ladakh is something very unique and something which you actually normally don't see in any parts of the country. It's something very common in Ladakh. If you just look at these ladies holding vegetables, like look at the lady who's at the center, she's holding a turnip and it weighs 5 kg. And most interestingly, it is not fibrous. It is actually very much suitable for consumption and it is grown all under organic system and that too in open field condition. So similarly, we have got many other opportunities which need to be harnessed. And particularly for Ladakh, the unique agroclimatic condition is such that whatever we grow, it is something very unique. So the mantra for agriculture, particularly for doubling crop productivity or basically for increasing our farm income is we need to build a brand and we should not sell whatever product that we produce on the farm as a commodity. So build a brand and not a commodity. This is going to be the mantra for agriculture in the coming days. So if you just look at the farm income in India, which actually applies to Ladakh as well, for cereals crop, the income which our farmers get is around 2,000 rupees per canal. As I said earlier, 1 hectare has got 20 canal. So in Ladakh, we normally talk in terms of canal only because of the small land holding. And if a farmer shift from cereal crop to fruit crops, the income increase almost by 5 times. That is around 10,000 rupees. And if he shift to vegetable cultivation, then the income which a farmer get is almost 6 times that of active cereal. So it makes a sense that instead of growing the traditional cereals crop to increase the farm income, we advise the farmer should grow fruits as well as vegetables. There some of the technologies we have already shown that you can increase the income not just by 2 times or 3 times, but almost 20 to 30 times. In case of tomato, if you just compare from the cereals, which is around 2,000 rupees, we have shown many times that it's very easy for farmers to earn 1,18,000 rupees per canal, which is many times more as compared to that of cereal. Similarly for apple as well as for watermelon also. So the drivers for doubling farm income, particularly in Ladakh, there are 4 major areas where intervention can be done, where we have seen that just by doing very simple intervention, the farm income has increased. Number 1, increasing the crop productivity. Ladakh is a core, so there are ample opportunities where actually we can increase the crop productivity. And number 2, it harnesses the niche potential of Ladakh. And third, diversification towards high value crop. And the fourth one, which I feel is most important, is product differentiation and branding, because whatever we produce in Ladakh is something very, very unique. So if you talk in terms of how to increase the crop productivity, I'm just giving one example that is on tomato. As discussed by Mr. Tashi Chetan, he actually discussed about this mulching technology. We work extensively of this and formally transfer this know-how to the state agriculture department. If you take 2 farmers, like say one is using a variety named Roma, and if we grow this crop without any mulching technology, then he gets around 1,475 kg per canal of land. But instead of that, if he use the recommended variety, that is Tolstoy, and if we go for adoption of mulching technology, the yield increases by almost 2,050 kg per canal. So in terms of money, using Roma without mulching, our farmers get around 44,000 rupees per canal. And if you grow Tolstoy with mulching, he gets around 1,18,000 rupees per canal.
So the difference in using the right type of technology, that is mulching, and the right type of variety, that is Tolstoy, the difference is almost 74,000 rupees. So this is the actually like very simple intervention which a farmer can actually use, and then they can increase the farm income by many fold. Similarly, Ladakh, whatever we produce, normally we produce the vegetable in the month of say July to September, and that is the time many of the vegetables they do find in places like Delhi or Chandigarh. Basically, they are off-season vegetables. So this is one of the picture which I have taken in 2018 in Chandigarh, and broccoli it was selling at 384 rupees per kg, and lettuce it was selling as 340 rupees per kg. But there in Ladakh, these crops grow naturally under organic system, and very well if farmers actually grow these vegetables, and if you look at mechanism where the vegetables that we grow in Ladakh, if it's taken to other places, metros, then there's a huge potential that farmers will increase their farm income many fold. Some of the crops which has got potential include broccoli, lettuce, cauliflower, cabbage, peas, watermelon, and muskmelon. And all of these we grow, we actually harvest this crop from July to September. So similarly, like another approach that can be used, or in fact, we have already used this approach is crop diversification. Watermelon is one such example, because watermelon is a warm season crop and nobody actually thought that watermelon couldn't be grown in Ladakh condition. But just by using the right type of variety and using the simple technology of mulching, we were able to get a production of 30 tons per hectare, which is above the national average of 24.9 tons. And people have been using this technology for the last 5-6 years, and they are earning anything between 50 to 60,000 rupees per canal. Let me remind you again that from cereals, people are getting just 2,000 rupees, and by growing watermelon, they are getting 50 to 60,000 rupees per canal. And most interestingly, this is all under organic system. And it's really difficult to find such a healthy crop in other parts of the country without using any chemical fertilizer or pesticide. So this is the uniqueness of Ladakh region. Similarly, another crop which we are targeting, we have already completed the trial and we have transferred the technology to the state agriculture department, that is sun melon. And this sun melon, again, we harvest in the month of September. There is basically an off-season crop, and we expect that farmers will earn anything between 50 to 60,000 rupees per canal. So very sweet, it's an off-season vegetable. Look at the apples of Ladakh. This is all under organic system without using any chemical fertilizer, pesticide, without any spray for the color development. Look at the color of this fruit. It's all because of the climatic condition of Ladakh. And most interestingly, we get this crop in the month of October. And we have found that a farmer can earn anything between 75,000 to 80,000 rupees in one single season. Let me remind you again that from cereal, we get hardly 2,000 rupees. So this is a very important crop where Ladakh has got immense potential to emerge on the world map of quality organic apple production. Look at these cherries. Cherries actually are new to Ladakh. We have introduced this crop and we are getting a high quality cherry, but this technology, it has not gone yet to the farmers. So from next year onward, we are actually going to multiply this cherry on a big way and then start giving it to the farmers. So in fact, cherry is the first crop which comes in Ladakh among the fruit crops. This is a peach. Peach is traditionally grown in Ladakh, but we have now gone for introduction of some of the exotic cultivars. This is Suncrest, and look at the bright colored fruit. In fact, I personally don't like peach much, but when we actually get the crop of this particular variety, it is so different and it's so tasty actually. So this is one crop which we are actually promoting in the coming years, and farmers, we can see that easily they can earn anything between 60 to 70,000 rupees per canal of land. And whenever we ask farmers to go for
fruit cultivation, normally they always resist that because it takes at least 8 to 10 years to get the crop. But we found that by a very minute actually intervention, that is just simply by using the black plastic mulch, we start getting the crop from 4th year onward. And this tree, which you can actually see, it's an apple tree. It is just 6 years old, and after 6 years, after 4th year onward, it start actually giving fruit. So since the last 2-3 years, now we are going in a big way actually in establishing apple orchard in Ladakh using this very simple technique, that is the mulching. Ladakh is basically known for apricots. Almost 62% of the total apricot production in the country is there in Ladakh, and we produce on an average around 15,761 metric ton. And since we have been working on this crop for the last few years, we feel that the best of the apricot in the world are being produced in Ladakh. But then popularity, or I should say the consumption of apricot, remain restricted to Ladakh because there are a limited number of trees with premium fruit quality. The drying that we are doing, as you can see there in the picture, it's slow and unhygienic, and we have got very poor processing facilities. And because of that, as of now, almost 40 to 50% of the apricot that we produce in Ladakh actually goes waste. So one approach that we have actually used is the product differentiation branding. I'm just taking the case of apricot. All over the world, apricot seed, if you just open the fruit, it has got a brown seed coat. But we have one cultivar which is called Rakse Karpo, and the seed coat is white. Rakse in Ladakh dialect means seed and Karpo means white. This is apricot with white seed coat. So this is unique to Ladakh region, and this is perhaps the world's sweetest apricot with TSS with an average of around 28.28 degree Brix. And we found that sweetness increasing altitude. Even if some other people actually take the apricot from Ladakh and grow it some other place, they are not going to get the sweetness which we are getting there in Ladakh. So we found, and we have also published this article also, and this particular Rakse Karpo is most preferred by the consumer. In 2017, when we published our article in a scientific journal and then convey the message to the farmers in Ladakh region, within a single year, the price of this Rakse Karpo has increased by 30 to 40%. And right now, in Leh market alone, people are selling this particular variety of apricot at 400 to 500 rupees per kg. So this is, I feel like, a small intervention from the scientific community, and there is a big actually jump in the price of the apricot. Very recently, we have now gone for application for GI tagging of Rakse Karpo. Very soon, I think like it will be a GI product. So another opportunity, or I would say a challenge which we face in Ladakh is that, as you can see in these pictures, this is a December photo of 2012, 2019 and 2020. And these people in Ladakh, they are waiting in queue for hours together just to buy few kg of vegetables. So this is the actually like situation that the people in Ladakh are facing. Even though they have got money in their pocket, but they don't have the fresh vegetables, and they have to rely on the government-run stores to get few kg of vegetable. Recently, things have changed. Now you need a ration card to buy vegetables. I think it is only Ladakh where you need a ration card to buy fresh vegetables. So in a way, it's a challenge, but at the same time, there's ample opportunity which the farmers can have in the coming years. So this is the greenhouse which Mr. Sonam Mongchuk as well as Tashit Setan was referring to. We call it a Ladakh greenhouse. This is a totally passive solar greenhouse. And in this greenhouse, the temperature never drops in minus. And so it remains 8 to 12 degrees warmer at night, particularly in the month of December and January. And this is a greenhouse which can be used all year round. And UT Ladakh, we have formally transferred the technology to them. And now they are giving 75% subsidy to the farmers in Ladakh when they actually adopt this technology.
as said by Mr. Tashit Setan, also 200 such greenhouses has already been established in 2021, and in this year, around 2,000 such greenhouses will be established in Ladakh. And most importantly, from income point of view, from a single greenhouse of 60 by 24, a farmers can earn 1.14 lakhs rupees in a single year. So these are the pictures which I've taken very recently. This is on 26th December 2021. And as you can see, the broccoli and cauliflower in this greenhouse, which otherwise is not possible in any of the greenhouse which Ladakh has tested in last many years. So these are some other like crops, like say, as you can see, like in peak winter months, we are able to grow tomato. Since 2018, we have been growing tomato in this totally passive solar greenhouse. When we say tomato, this is a highly temperature sensitive crop. The moment temperature drops to minus, the crop die automatically. So we have been able to grow tomato, cauliflower, broccoli, non-col in the month of December and January in the totally passive solar greenhouse. So last year we have also tried mushroom. As you can see, like he's my technical officer. He's holding mushroom in his hand, and these are again we are actually growing mushroom in the Ladakh greenhouse, which is again a passive solar greenhouse. So like when we come out with this technology and ask UT to adopt this technology, the first thing they asked was, okay, can we replicate the same on farmers field? So accordingly, DRDO has supported 5 farmers and we have established 5 greenhouses on farmers field. And I'm really happy to tell that this is the picture which has recently been taken on the greenhouse which the farmers has actually like established with support of DRDO, and they are able to grow crops like tomato, cucumber, cauliflower, broccoli and chilies. And with the success of this greenhouse on farmers field, UT has formally adopted our greenhouse and they are giving 75% subsidy through the agriculture department. So normally people feel that in that greenhouse, is it really possible to grow crop during summer months? Yes, actually, even when in the month of July and August, we still are able to grow crops there, even though the temperature goes up to 40 degrees centigrade. And from a single greenhouse, we are getting around 604 kg of vegetable during summer months. And most importantly, the advantage of this greenhouse is that we get almost 3-4 more yield as compared to open field condition. And from farmers' point of view, in this greenhouse, we are getting our crop, that is cucumber, almost 47 days earlier as compared to the open field condition. So if the farmer is getting more yield per unit area and if he is getting his crop 47 days in earlier, it means more money. More money means actually it's more income for our farmers. So this is a picture taken on 23rd June 2020. Like that time, actually, like it's me holding cucumber and okra. So this is totally off-season vegetable. Otherwise, we get this crop from August onward, but in this greenhouse, we are getting this crop in June onwards. So some of the recent initiatives which we have actually done with the UT Ladakh as well as the LHDC in Ladakh. Number one, this was discussed by the Chief Agriculture Officer. Ladakh has its own policy on organic, and a resolution was passed by the Ladakh Autonomous Hill Development Council on 9th March 2020 to transform Ladakh into a totally organic district by 2025. So these are the criteria which we have fixed, which was discussed by Mr. Tashit Setan also. We divide entire Leh district into 3 different phases, and accordingly by 2025, as per the policy, Ladakh will be fully organic by 2025. And afterwards, we have also come out with a project that is called Modi of Ladakh, that is Mission Organic Development Initiative of Ladakh. This is a 5-year project and it's almost around 500 crore rupees. The project site is Leh in Kargil district. This project has already been launched and the agriculture department is actually taking the lead in certifying Ladakh as a totally organic UT by 2025. And this project was conceptualized, and it was actually
prepared by people who knows agriculture well in Ladakh. So this is another project. This is called LG project, that is Ladakh Greenhouse project. Through this project, people are getting 75% subsidy for adoption of the Ladakh Greenhouse, which our institute has adopted, and this is almost a 76 crore rupees project. So this it's already under implementation, and farmers are getting 75% subsidy on it. Ladakh has got a very important crop, what we call the sea buckthorn. Almost 70% of the sea buckthorn in the entire Ladakh is in India is in Ladakh. So even though the sea buckthorn business started somewhere in 2001, but not much development was taking place. And we thought that if we can convert sea buckthorn as from a forest crop into a horticulture crop, then a lot of initiative or incentives can be given to the farmers as well as to the entrepreneurs. So in 2017, we prepared this document on behalf of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. And based on this document, now sea buckthorn has been included as a horticulture activity under Mission for Integrated Development of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. So our farmers as well as the entrepreneurs are getting a lot of incentives on growing or processing or marketing of sea buckthorn in Ladakh, as well as in 5 other Himalayan states. So for the first time, the UT Ladakh has taken the initiative to export apricots of Ladakh. And last year, 150 kg were exported to Dubai. And at the same time, for the first time, 20 tons of apricot, it was sold in Mumbai, Hyderabad, Ahmedabad, and Delhi. And it was sold at a very high price. So since last year was the first year, so from this year onward, we feel that the apricot of Ladakh will have a lot of value in the international market as well as in the domestic market. Earlier, it was restricted only to Ladakh region. So this is the Center of Excellence on sea buckthorn. To promote sea buckthorn, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has established a Center of Excellence on sea buckthorn. And we hope that in the coming year, this center will play a key role in promotion of sea buckthorn in not just in Ladakh, but in other Himalayan states as well. So DRDO and UT has joined together, hand together, and we have now established an apricot processing plant. As said earlier, almost 40 to 50% of the apricot is going west. So we and UT has actually come out with the apricot processing plant at a place called Nemo. And most interestingly, this plant will be run on GOCO model. GOCO means government owned, contractor operated. So it will. So we are giving the entire facility to a contractor and he will run it. So from July this year, this processing plant will be fully functional. And if you found that it is successful, the same can be replicated in other places of Ladakh as well. So I would like to say that the future of agriculture is very bright, particularly during the last few years. Government has come out with a number of projects and they are now implementing it. And it is not at all difficult to double the farm income in Ladakh. With this, thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Sir, our guest Rigzin has a question from you. Yeah. I am an ordinary organic farmer from a village which is almost 140 kilometers away from Leh city, and I am growing 40 to 50 types of vegetables. But there is a problem in marketing, packaging, and problems of aphids. Is there any training for the farmers of far-flung areas of Ladakh about all these? Yeah, we have been working on the management of some of the insect pests. Even though Ladakh, we don't get much insect, but then aphid is a big problem there. So we have already come out with a solution through organic means. Yes, it is very much there. And most interestingly, right now, the organic movement is a very beginning stage. But at the same time, the UT Ladakh and particularly the agriculture department, they are taking a lead in marketing of this organic produce. So I think in the coming few years, we will be able to channelize the system which we have. And then accordingly, I think there should not be much problem as far as marketing of organic produce is concerned. Probably for the coming few years, there will be certain problem, but
once it gets channelized, things will be all right there. Okay. Sir, next question is from Padma. She is asking that lay farmers in Ladakh are not aware of the soil testing. Most of them are using urea and DAP without proper knowledge about major and micronutrients. Is there any soil testing laboratory unit in DRDO for the farmers? Soil testing is being done by the Agriculture Department and the Sher-e Kashmir University. So anyone who wants to get the soil test, they can approach either the Agriculture Department or the Sher-e Kashmir University. So we at DRDO, we don't do the testing, but they can actually approach any of this institute. Okay. Thank you, sir. Thank you, Dr. CSIR-Institute for sharing your work with us about the doubling farm incomes in Ladakh, keeping the challenges of cold desert in mind. You indeedly showed a great presentation on the status of agri-biotech food. Thank you for showing the diverse crop varieties such as watermelon, cherries, peaches, tomatoes, while keeping the increment of farmers' income in mind. Whereas we also got information about the passive solar technology from Bihar DRDO. I hope your presentation will be helpful to the viewers and the farmers of Ladakh. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. Yeah, we can move to the next talk. Okay, sir. The next presenter of our today's virtual meeting is Dr. Vikash Gupta. Dr. Vikash Gupta has a doctorate in plant pathology from Kuset University. Presently, he is working as a senior scientist in plant pathology department, KBK Lay. And he developed and designed mushroom demonstration unit and filed patent, which also got published. He also managed and documented major insect pests of cold arid region. He established first spawn cum pathology laboratory in Ladakh. He is also holding position of manage facilitator and counselor of Indian Society of Weed Sciences from Ladakh region. He has also been awarded with several national awards in his tenure. Recently, he was awarded Young Scientist Award by the Agriculture Today Group, Best Scientist of the Year by GTA 2021, and Best Performer Award by Mahima Research Foundation. We welcome you, Dr. Vikash Gupta. Dr. Stobdan, you can stop sharing the slides. Yeah, thank you so much. Am I audible? Yes, sir, you are audible to us. Okay, please help me to share my slides because I am also using this software first time. No problem. Sir, you can use the upside arrow icon on the top ribbon, just next to your microphone icon. An arrow for the towards upside for sharing content. Yeah, I'm using one arrow which is saying open share tray. No, sir. So there you will get two options. One where you have you can see all your windows which are open on your computer. So you can select any of the window which is you want to share. Is it okay? No, sir, we cannot see your slides. We are yet to see your slides. You are not able to see it? No, sir, it's not visible. Not yet, not visible yet. So you may choose the share content option, and then there you can see the window would be written, and you can select any of the window you want to share. It will be showing you the open windows. Yes. The icon which are present in front of me is a camera, mute, and the open share tray, and the raise hand.
share Should I content. select from these options? Yes, Share the content. upside arrow. You can use that upside arrow icon. Now, once you click it, you will get to see that there is a screen which is MS Teams screen and some window which are open on your screen on your computer. So you can use any of the window you want to share, like PPT or something. Yes, Or, I am doing it. or alternatively, you can send those slides to us. If I'm putting my email ID in chat, you can use for sending me if anything it's not working at your end. Yeah, that's fine. I have shared my email ID in chat. You can Are use it. you okay? Uh, 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 Thank you, Tenzip Moto, for reminding us the lunch time, but we are running short of time, so actually a bit late. So we'll be having lunch at around 1:30 or so. Because there are really informative talks from our speakers, so we cannot help with you with the lunchtime. Have you shared, sir? Sir, I'm yet to receive on my email actually. No? Are you able to see? I tried once again. Not sir, not as of now. Oh, okay. Shekhar, you may try to give a demo from your screen that how to share. So that would be repetitive Try screen. that way. Just a demo from your screen, which one to click and how it will work. Okay. Or alternatively, I believe we can share from here if Dr. Vikas is comfortable sharing the PPT with us. I can share from here. Yes, Dr. Vikas, you want to say something? You sent on my mail. I am checking, sir. It's yet to come through. But in the meanwhile, you keep trying. I'm refreshing my email. If I'll share. Yeah. I am keep trying. मैं आता था आपके रूम में. No, it's okay, sir. You can open the PPT in the usual mode and यार then. इसमें देखना जस्ट वेट सर आई एम ट्राइंग ना. यहाँ पे पीपीटी नहीं खुल रहा से. ओपन शेयर ट्रे. So you can dictate once again na. Okay,
Sir, on the top, near to your microphone icon, you can see an upside arrow for sharing the content. You can use that button for sharing. There you will see the windows which are open on your computer. So you can use the window which is showing the PPT. Good. सर खोलिए इसको बस अब आप आ जाएगी शेयर हेलो Yes, sir. हाँ जी ये मैं कर दिया मैंने इतना यार बोल रहे हैं कि हम नहीं देख पा रहे हैं आप देखिए जरा I shared once again have you seen No, sir, we cannot see your screen. You try sharing any of the window which is showing your PPT. मेरा फाइन ऑलरेडी ओपन है ना तो मैं विंडो से उसको शेयर कर रहा हूँ आप सर आप ऐसा करिए अपनी पीपीटी को ओपन कर लीजिए ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप ईमेल आईडी मुझे सेंड करो सर आपको सर चैट में शेयर किया मैंने मैं फिर लिख रहा हूँ MS Teams की चैट में मैंने लिखा है आई एम शेयरिंग इट अगेन ये म्यूट आ गया ये था ओपन शीट रे डॉक्टर विकास मैंने अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में लिख दिया है वो विजिबल है आप ले लें ओके even Kunal is sharing with me your email ID na but I am trying once again from share tray okay is it visible now not yet sir we can't see okay I am sharing slide on email ID but it might be so much heavy na okay yeah I will try from once again I joined once again I think there might be some problem of refresh or whatever it is and meanwhile I am sent to my PC.
Hello. So, are you trying to? Dr. Vikas, if we are running into some problem, can we take next speaker for 20 minutes? In the meanwhile, we'll sort it out the problem at your end. Dr. Vikas, are you there? So, Anupriya, I believe Dr. Vikas has left the meeting due to some issue in the computer. I also think so. Let's start with the next presenter. Yes, next speaker, because next speaker is waiting. So I believe we can go with the next speaker and then we'll have the talk from Dr. Vikas. Yes, sir. Yeah, please go. So our next presenter is Dr. Rajul Patkar, CEO Soil Sense Limited. Dr. Rajul is a Chief Executive Officer in Proximal Soil Sense Technology Private Limited. She has completed her PhD from IIT Bombay on low-cost MEMS based sensors for agriculture. Proximal Soil Sense works on low-cost technologies for point-of-care diagnostics in agriculture, with a vision to bring affordable technology in agriculture and improve the economic condition of farmers. She also has developed a unique smart soil monitoring system for precise irrigation. We welcome you, Dr. Rajul. You may present. Dr. Rajul, are you there? Am I audible? Yes, ma'am, you are. Just let me just try and share my screen and see if that is possible. Okay. The problem here is I think I'm not able to see my PPT here in the sharing window. Ma'am, Let you me may just. click. Is it now? Is the screens visible now? I mean, the PPT is visible? Yes, No, Dr. Rajul, your screen is visible, but PPT, you have to select a different window actually. No, I have selected only one was visible. That's the problem. When I'm trying to share the screen, only one window is visible. Okay, and in the share tray, there is only one window which is coming. And only is your that. PPT and your PPT is open on your computer? Yeah, PPT is open on my computer, and the problem is that I'm not able to see the PPT. I believe just run your PPT in presentation mode and then again try for selecting the window. It will come through, I believe. Yeah. Let's know. Still, it shows just the desktop and window. The problem is that. Ma'am, you need to open the PPT in the background of your computer. Yeah, it is there in the background, and I generally use Microsoft Teams, so that's not the problem. But I don't know why it's not visible now. Dr. Chandrasekhar, we are also having this difficulty in sharing. I don't know, there's some problem. We are not able to share it. That's difficult. I think that some problem is there. Yeah, because Or,
I don't see the window of PPT. That's the problem. I don't know. I believe the point, but you know, I believe if you won't mind, Dr. Rajul, you can share your PPT with me on email, and I'll be sharing. And we will definitely will work on the issue after this session if there is some issue. Yes, yes, Dr. Rajul, your PPT is very much visible here now. मोहित फोन करके बोलूं. Dr. Rajul, am I audible to you? Hello. Dr. Rajul, am I audible to you? You're on mute. Oh, okay. Yeah. And your Okay. your PPT is very much visible. You can start with your. Okay. 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 If that is the case, I can start. Okay. Hi, this is Rajul, and thanks STI Ladakh for giving me this opportunity. I'm really humbled to be presenting to all of you where people like Wangchuk sir and others dignitaries have shared the stage. And this is my first interaction with Ladakh people. मैं पहली बार actually मैंने कभी visit नहीं किया है लद्दाख, so ये मेरा पहला interaction है लद्दाख के आप लोगों के साथ, and I'm really excited to present my technologies. So I mean, our startup is Soil Sense, Proximal Soil Sense Technologies, and we believe that जब तक कि your soil, अब जब तक आपकी soil healthy नहीं है, हम कुछ business, sustainable businesses, economies या society build नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने agriculture या soil पे ध्यान न दें. So for us, soil is very important. And I believe that, can you believe that if you just take care of the soil, अगर हम केवल अपनी soil की care लें, जो कि लद्दाख के लोगों ने काफी जो वांगचुक सर ने बात की, डायरेक्टर ने बात की, इसके पहले मेरे साथ जो साइंटिस्ट है उन्होंने बात की, सबने एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में बात की है कि सॉइल को कैसे हम खराब ना करें, कैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ओवर यूज ना करें. अगर हम ये चीजों का ध्यान रखें, इफ वी कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ दिस, हम लोग काफी सारी चीजें जो कि यूएनडीपी के सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं उसमें से 17 में से 13 गोल्स अचीव कर सकते हैं. अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स केवल जितनी रिक्वायर्ड मात्रा में है उतना ही प्रोड्यूस करें और जितना उतना ही डालें, तो हम काफी सारे, जैसे कि वांगचुक सर ने कहा, काफी सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशंस रोक सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रोक सकते हैं. अगर हम फर्टिलाइजर ज्यादा मात्रा में, केमिकल फर्टिलाइजर की एक बैलेंस मात्रा जरूरी है, पूरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आई डू नॉट नो, द साइंटिस्ट कैन टॉक अबाउट इट बेटर, but there has to be balance between organic and little bit of chemical fertilizer. अगर हम उसमें उतना ही फर्टिलाइजर की डालें जितनी जरूरत है, तो हम काफी सारा नाइट्रस ऑक्साइड का जो गैस एमिशन है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा डेंजरस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक्सेस फर्टिलाइजर डालने से प्रोड्यूस होती है, हम उससे बच सकते हैं. जो वांगचुक सर ने बात की कि क्रॉप लॉस रिड्यूस करने की, या तो ऐसे फूड वेस्ट या फिर जो प्रोड्यूस हो जाता है उसको प्रॉपर स्टोरेज ना करें, वैसा क्रॉप लॉस अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं. लद्दाख में वाटर की बहुत रेरिटी है, इट इज अ वेरी हार्श काइंड ऑफ ए क्लाइमेट. तो उस क्लाइमेट और हम वाटर को सेव कर सके, वाटर को सेविंग करके एग्रीकल्चर कर सके जितना रिक्वायर्ड है. ग्रीन हाउस की बात की, जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट का मतलब कम हो जाती है. तो ये सब चीजें अगर हम यूज करें, सॉइल का पीएच बैलेंस रखें, इन सब चीजों के साथ अगर हम काम करें, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड की से मतलब एग्रीकल्चर की सॉल्व हो सकती है. तो जिस तरह से अभी Ladakh is very different than other parts of the country. जो other part of the country में जिस तरह के problems हैं,
लद्दाख में शायद थोड़े से डिफरेंट हो, लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, अभी इसके पहले भी मेरे पहले किसी ने, एक पार्टिसिपेंट ने पूछा कि सॉइल हेल्थ कैसे करें। अगर आप देखेंगे कि सॉइल हेल्थ का भी अगर करंट इश्यू क्या है, अगर लद्दाख में भी यही प्रॉब्लम होगी और बाकी के कंट्री के पार्ट्स में भी, कि अभी आजकल फार्मर को सॉइल एनालिसिस के लिए सॉइल को कहीं एग्रीकल्चरल लैब में भेजना पड़ता है। अगर लैब में भेजना है तो आपको सॉइल भेजने का टाइम, वहां पे एनालिसिस होने का टाइम, जब तक वापस आपके पास रिजल्ट आए, उसमें जो टाइम लगता है काफी डिले हो जाता है। एंड बाय द टाइम द फार्मर्स हैव नो सॉल्यूशन बट टू पुट फर्टिलाइजर और जब यूज इट और स्टार्ट ग्रोइंग द क्रॉप, राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम, सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। जैसे कि एक ह्यूमन हेल्थ के लिए, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ के लिए आप क्या करते हैं, थर्मामीटर एंड ग्लूकोमीटर, अगर आपने सुना हो, ये दो चीजें अभी कोविड टाइम में भी आपके पास ये दो चीजें होना बहुत जरूरी हो गई, जैसे ऑक्सीमीटर, कि अगर आपकी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तभी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। वांगचुक सर ने काउ शेड के बारे में भी उसमें एग्जाम्पल दिया। तो अगर एक अच्छी सॉइल को मेंटेन करने के लिए आपको एक थर्मामीटर होना जरूरी है, ग्लूकोमीटर होना जरूरी है, जो कि आपको आपकी हेल्थ असेस कर सके कि भाई सॉइल का मॉइस्चर बराबर है क्या, सॉइल का टेम्परेचर बराबर है। ये थर्मामीटर जैसे एक्टिविटीज हो गई। और ग्लूकोमीटर मतलब सॉइल का पीएच बराबर है या नाइट्रेट, पोटेशियम, फॉस्फेट बराबर है या नहीं, तो ये ग्लूकोमीटर जैसे। तो हम चाहते हैं कि जैसे ह्यूमन की हेल्थ में रिवोल्यूशन आया बाय having devices like thermometer, glucometer, we want to bring similar kind of devices for the soil. So this is Dr. Chul, if I interrupt you, I believe your slides are not moving. Oh really? Yeah, oh, you have to okay. select from the left pane. Yes, right now it's working. So okay, maybe then I will not go in the presentation mode, I'll just keep it in this mode, right? Okay. So Yes, I was actually talking about all these problems and pH and NPK. Okay, so yes. this is what I was talking about. And ठीक है, सो जैसे कि मैंने कहा कि किस तरह के प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर में होते हैं। यू हैव प्रॉब्लम्स लाइक ओवर, अभी जैसे लद्दाख में तो पानी की कमी है, तो अगर क्रॉप में स्ट्रेस आ रहा है या कितना एफिशिएंट पानी उसमें लगना चाहिए, फर्टिलाइजर कितना होना चाहिए। डिसीज एंड पेस्ट की शायद लद्दाख में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी कोई एक साइंटिस्ट ने कहा कि शायद डिसीज एंड पेस्ट की भी थोड़ी प्रॉब्लम है। सो मॉनिटरिंग ऑफ ग्रीन हाउसेस इज इम्पोर्टेंट, reducing the fertilizer, so all this is important. So as I was telling, since today I'm here to present affordable technologies और मैं soil health के बारे में बात कर रही हूँ, glucometer और thermometer, ये one of the product what Soil Sense has developed after a lot of research of almost 8 to 10 years of research. We have come up with this product called NutriSense. We call it as a glucometer of soil. ये soil का glucometer जैसा है। जैसे आप लोगों ने कभी ब्लड ग्लूकोज मेजर किया होगा, तो उसके अंदर आपने एक ऐसा छोटा सा डिवाइस होता है, एक स्ट्रिप आती है, उस पे आप अपने एक ब्लड की ड्रॉप डालते हैं और आपको उसमें आपका ब्लड ग्लूकोज कितना है, उसी तरह से हमने ये डिवाइस बनाई है। अब आपको अपनी सॉइल को कहीं लैब्स में भेजने की जरूरत नहीं है। आप इस छोटे से, ये एकदम पाम साइज इंस्ट्रूमेंट है, आपके हाथ में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, आप लेके जा सकते हैं अपने फील्ड पे, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर पर्सन जाके उस पे सॉइल टेस्टिंग कर सकता है। जैसे कि पीएच के लिए एक स्ट्रिप हो गई, नाइट्रेट के लिए एक स्ट्रिप हो गई, पोटेशियम के लिए एक, और फॉस्फेट के लिए, जैसे अलग अलग स्ट्रिप है। और यही ग्लूकोमीटर हम आगे भी अलग अलग न्यूट्रिएंट के लिए यूज कर सकते हैं। सो व्हाट वी डू इज वी हैव अ ग्लूकोमीटर where you have a different strips, you make a soil solution, you put a drop of it, and within 20 seconds you have a result of your soil. So it is such a disruptive technology. और ये ऐसा नहीं है कि ये इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए यूज हो सकता है या केमिकल फर्टिलाइजर के लिए। दिस कैन बी यूज्ड ऑन एनी टाइप ऑफ सॉइल बिकॉज इट फाइनली टेल्स यू व्हाट इज द नाइट्रेट कंटेंट इन द सॉइल और व्हाट इज द फॉस्फेट कंटेंट इन द सॉइल, and it is very affordable. This is the one of the technology, I think in India there is no such technology like a glucometer. So, and it is very affordable. This technology has been developed after a lot of research, after trying out different principles of NutriSense like MEMS based spectroscopy, and then finally we realized कि electrochemical technology है जो सबसे robust, reliable and repeatable है।
दूसरी चीज जैसे कि ये हो गया न्यूट्रिशंस जो आपको पीएच, ईसी, एनपीके न्यूट्रिएंट्स बताता है. व्हाट यू आल्सो नीड टू नो इन लद्दाख, जैसे हम मॉइस्चर की बात कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल में कितना मॉइस्चर है, इसके लिए भी हमने एक छोटा सा हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है. ये भी आपका एक देख सकते हैं, इसकी साइज एक मोबाइल के हिसाब से ये साइज इज वेरी स्मॉल साइज. This is like your thermometer. You can connect a temperature sensor to it, a moisture sensor to it, a humidity sensor and temperature sensor. And it is again palm size. It is connected to a mobile. You can take it. एक चीज मैंने नोटिस की है कि अगर जो कोई स्टेशनरी डिवाइस, आपने देखा होगा सॉइल बहुत डिफरेंट है और उनकी मॉइस्चर कैपेसिटी डिफरेंट होती है. अपने इंडिया में सॉइल में फील्ड में एक ही फील्ड में काफी वेरिएशंस आता है सॉइल में, तो यू नीड सम काइंड ऑफ ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट वेयर यू कैन मेजर मॉइस्चर एट डिफरेंट प्लेसेस, बिकॉज ऑल द मॉइस्चर सेंसर्स आर पॉइंट सेंसर्स. ये जनरली एक जगह का मॉइस्चर देते हैं, तो आपके पास ऐसा चाहिए कि आप पूरी फील्ड का मैप जनरेट कर सके, मॉइस्चर मैप जनरेट कर सके, न्यूट्रिएंट मैप जनरेट कर सके. So this is one of the device. And one thing I realized about Ladakh people, I was reading about them farming and all that. I realized that Ladakh के farms बहुत छोटे छोटे होते हैं और फार्मर्स ऑलरेडी जैसे कि उनके रिसोर्सेस शेयर करने के लिए काफी मतलब दे शेयर करते हैं. मैंने सुना है कि उनका जो फ्लोइंग के लिए जो एनिमल यूज करते हैं वो भी वो लोग कभी एक किसान और दूसरे किसान के बीच में शेयर होता है. इसलिए हमने ये भी शेयरिंग जैसी डिवाइस बनाई कि फार्मर्स कैन शेयर दिस, तो एक फार्मर के ऊपर पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का लोड नहीं आता है. और वैसे भी ये चीजें काफी हमने अफोर्डेबल, बिकॉज ये मेड इन इंडिया, काफी अफोर्डेबल बनाई है. दूसरा एक डिवाइस है कि जैसे ग्रीन हाउसेस का जो हमारे प्रीवियस साइंटिस्ट बात कर रहे थे कि ग्रीन हाउसेस के अंदर टेक्नोलॉजी लगानी है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉइस्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है. वी ऑल्सो मेड दिस डिवाइस विच कैन बी यूज्ड इन ओपन फार्म्स, ग्रीन हाउसेस, लैब्स, and many researchers have used, like Indian Institute of Oilseed Research, mustard में ये टेक्नोलॉजी यूज करके काफी पेयर रिव्यूड इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश भी किया है, हाई इम्पैक्ट जर्नल में. तो ये वैसी ही डिवाइस है जिसमें 4 सेंसर्स है, सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर, एम्बिएंट ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर. इट इज ऑल सोलर पावर्ड. इट पुशेस द डेटा टू द क्लाउड. ऑल अवर अदर डिवाइसेस लाइक न्यूट्रीसेंस और पोर्टेबल मॉइस्चर मीटर जो मैंने दिखाया, सब डेटा क्लाउड पे स्टोर करते हैं. तो समझो ऐसा है कि लेव में फार्मर्स इसको यूज कर रहे हैं और कहीं और बैठ के साइंटिस्ट को फार्मर्स को गाइड करना है, तो वो डेटा देख के फार्मर्स को गाइड कर सकते हैं. साइंटिस्ट को वहां वापस उस फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है. So this is all the affordable technologies we have tried to build. We realize we have also built our own sensors because until unless हम अपने खुद के sensors ना बनाएं, उनका अपने soil के हिसाब से अगर technology ना बनाए, अपने farmers के हिसाब से या अपनी conditions के हिसाब से, वो sensors फिर इतने proper calibrated नहीं रहते हैं. तो this is the reason we have made our own sensors. और ऑल्सो वी बिलीव दैट केवल हार्डवेयर बना के केवल टेक्नोलॉजी फार्मर को देने से काम नहीं होने वाला है. ये टेक्नोलॉजी एक हमने 3 अप्रोच हम उसको कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी वहां फार्मर्स के साथ लगाएं, डेटा एक्वायर करें, उनको एनालाइज करें, उनके साइंटिस्ट के पास वो डेटा लेके जाएं, वो एनालिसिस करें और फार्मर्स को फाइनली एडवाइजरी के फॉर्म में ये सब चीजें का डेटा को एडवाइजरी दे. आई मीन देयर इज नॉट दैट जस्ट यू गिव अस द टेक्नोलॉजी एंड द डेटा एंड देन फार्मर्स डजंट नो व्हाट टू डू विद दैट डेटा. So it is that the experts have to pitch in and advise the farmers. So that is what we have built a platform where all kinds of technology sends the data like water level sensors, the water quality sensors, the soil health sensors, the soil moisture sensors, all pushes the data onto one common platform, and the experts can give an advisory, and also based on artificial intelligence and machine learning, which already we are talking about. Based on those analytics, advisories can also be generated. हमने अभी तक काफी क्रॉप्स में काम किया है, काफी सारे कॉर्पोरेट कस्टमर्स के साथ काम किया है, काफी डिफरेंट सॉइल में, काफी डिफरेंट जोग्राफीज में काम किया है. अभी तक हमने लद्दाख में काम नहीं किया है. हम हिमाचल तक आए हैं, हिमाचल में हमारी सिस्टम्स लगी है, IIT मंडी हमारी सिस्टम्स यूज कर रही है. But I'll be very happy if we can actually do some project and we can do some technologies adoption in Ladakh. I'll be very happy to be part of that. As I said कि ये डेटा वन कॉमन प्लेटफॉर्म क्लाउड पे डेटा आता है, उससे काफी सारी चीजें जैसे कि इरिगेशन का आप कंट्रोल कर सकते हैं. मैंने सुना है लद्दाख में इरिगेशन प्लानिंग होती है कि आज किस फार्मर को पानी दिया जाएगा और कल किस फार्मर को. इस तरह से इस डेटा से वो सारी प्लानिंग काफी इजी हो जाएगी.
एंड ये मेरा है कि हमने काफी लोगों के साथ किया है काम. दिस इज वेयर वी हैव बीन एंड थैंक यू so much. Thank you, Dr. Rajul, for the technology demonstration. Anupriya, would you like to some questions from the attendees? Okay, if Anupriya is not there, let me read No, it. sir, I'm here only. I was finding questions only. Can soil quality be different at different altitudes? Soil quality can be different at different altitudes also. It is in fact at the same altitude also, from one location to the other location, the soil quality differs. So that's why this kind of device will help you in assessing the soil, and then you can apply fertilizer based on the उस type का soil. Yeah. Okay, ma'am. I have not tried tested the soil of Ladakh. I have tested the soil up to Assam में. मैंने आसाम में पायलट शुरू किया है टी एस्टेट में, तो वहाँ की soil जरूर एनालाइज की है. So yeah, it can be different. Yes. Dr. Rajul, there is one more question. How a farmer in Ladakh can take these technologies, particularly like soil sense technology? How can they avail these technologies in Ladakh? Okay, so you just have to write an email to me, and we can work out how I can provide the technology. So that's it's like I am working from Kerala to Assam, so that's not a problem. People have to just write to me, and we can discuss. Okay. Okay. Thank you so much, ma'am. Yeah. Thank you for presenting the affordable technologies for sustainable agriculture and providing a vision to bring affordable technology in agriculture and improvement of the economic condition of farmers. And we are really impressed with the NutroSense device. I really like it Thank you. personally. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Before Dr. Rajul leave, people are asking for your email ID. So it would be good if you can put in chat box for all. Okay. 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 Sure. I have put it. Is it visible? Yes. And also we will look forward how this technology can be demonstrated in STI Hub Ladakh, because Dr. Rajul, what we are doing, we are, adopting a lot of technologies which are indigenously developed by our own innovators. Some are from IIT Madras, some are from IIT Delhi, BITS, Hyderabad. These are the technologies which are developed by BIRAC or DB or DST grant, or some technologies which are developed by innovators themselves. So we are showcasing them in STI Hub. We believe someday we can have your device or technology for demonstration in STI Hub Ladakh. I'll ask my colleague Mr. Mohit to coordinate with you and see how we can work out the things. Sure, sure. Look, we are also blessed to have received grants from BIRAC, Millennium, and Atal Innovation. So I definitely would be happy to demonstrate these technologies, because these technologies have to reach. And my focus is more on a small farmer, small land holding. And that's where we have built these technologies very affordable. So I'll be very happy. I'll look forward to collaboration. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Yes. Sincere apologies to the guests as we are not able to coordinate with the time. Now we shall meet at 2 p.m. after No, the lunch. no, wait. I believe Dr. Vikas is waiting. Okay, sir. Okay. Okay, let's take up his slides then. Yeah, Dr. Vikas, I am yet to receive your PPT on my IMTECH account. Can you send on Gmail, because Gmail is much faster and can have bigger sizes of attachment? Because I'm yet to receive your PPT. We are running in some problem. Dr. Vikas, I am putting my email ID again in chat box. Please send on that if
Just a minute, I believe. Yes, sir. Now you can unmute and say, because earlier you were presenter. Sir, now you can say. Yes, we can see your PPT now, sir. Over to you, Dr. Vikas Gupta. That's the problem. You have added me as a guest. Am I audible? Yes, sir, we can hear you and we can see your slides as well, sir. Please go ahead, sir. Over to you, sir. So nice of you. Very good afternoon and July to all of you. First of all, I am very thankful to the organizer for giving me opportunity and sharing my vast experience which I spent in Leh. So today I am going to deliver my presentation on mushroom cultivation in cold arid region Ladakh. And I want to say that farmers of Ladakh region are basically very enthusiastic about mushroom cultivation and want to adopt it at domestic scale. But low temperature and low humidity create hurdle in its cultivation there. But we designed a very low cost structure in which we can maintain humidity as well as temperature, and our structure is now replicated at many farmer field, and they are trying, and many good entrepreneur we have created, and in Ladakh region we created so many entrepreneurs which are cultivating mushroom even in minus temperature also, and many entrepreneurs started their own spawn laboratory in Ladakh region. So I am going to present my presentation today on mushroom cultivation. The mushroom, all we know, without leaves, without birds, without flowers, yet they form fruit. Fruit as a food, as a tonic, as a medicine. The entire creation is very precious. What are mushroom? The first question is what are mushroom? Basically, mushroom is the edible fungi, and it is the fruiting body of microorganism called fungi. And in addition, the low cost associated with growing mushroom help farmers to make relatively quick and financial return, positively contributing to their socio-economic upliftment. Its classification. Slides are not. You can select the slides from left pane on your. Yes, now it's moving, sir. The classification is kingdom is fungi and phylum is Basidomycota and class is Agaricomycetes and order is Agaricales and family is Agaricea, genus is Agaricus and species is Pysporus. Why mushroom are healthy food? All we know, mushroom is a rich source of protein, minerals and vitamins. Good source of iron, potassium and phosphorus. High fiber content, low in sodium and low in fat content. As modern diet we required is fulfilled by the mushroom. Now the important question, mushroom cultivation on agro waste. All the cultivation of mushroom is done on agriculture waste. The waste like rice straw, wheat straw, coffee pulp, sawdust, cotton waste, cotton seed hulls, logs, wooden logs, even maize cob and buck wheat straw. The last one which I highlighted in red color, that we tried ourselves. Maize cob we tried in Jammu region and the production is very good, and the buckwheat straw we tried in the Ladakh region, even the production for the oyster mushroom is very good. Common cultivated mushroom in the region is the button mushroom, dingri mushroom and milky mushroom. But when we talk about particular Ladakh region, we can go for button mushroom and dingri mushroom. And the scope and the viability and the conditions are very much favorable for the dingri mushroom. This is the cultivation of button mushroom, how we cultivate button mushroom. My skill student, 2 or 3 skill students are cultivating white button mushroom in Ladakh region, and they are fetching very good price there. Now I am talking about its cultivation technology. Its cultivation technology covers 3 steps, that is compost preparation, spawning and casing. And the ingredients is wheat straw, wheat bran, chicken manure, urea, gypsum and mustard oil cake.
First of all, we have to spread the substrate on any pakka floor, which is fully sanitized. And after that, we make a pile, which we called as compost pile. And these are the main turnings which we have to perform. That is the first turning at the 6th day, second turning at the 10th day, third turning at the 13th day, and the fourth turning at 16th day, and we can add gypsum on this day. Fifth turning at 19th day, sixth turning at 22 day, and seventh turning at day 25. And you can use some little bit insecticide to get rid of any insect problem in your compost. And if you don't want to use any insecticide or pesticide, you can just sterilize your compost by using hot water. This is how we break a pile and how we restake a pile. Now this is compost ready for spawning, and the entire business of mushroom depends upon your compost. If your compost is good, then you will definitely fetch a good price in the market. But if your compost is not good, then you have to face so much problems. And the qualities of good compost is it should be dark brown in color. It should not be greasy or sticky. It should be free from ammonia smell, and moisture is in the range of 65 to 70%, and pH is in the range of 7.2 to 7.8%, and it should free from any insects and nematodes. This is I already, you might remember, I already told you in butter mushroom we have 3 steps. One is composting, second is spawning, and third is casing. This is second step, that is known as spawning. To mix seed in the compost is known as spawning, and this is the spawn, and we mix the seed in the compost through broadcast method. And after the spawning, we fill the bags and shift in a dark room, and in dark room we kept it for some days, like 25 to 30 days. When whole the mycelium run in the bags, then we go for casing. And this is the casing mixture, and this first of all we have to sanitize the casing mixture also before use, and we sanitize it with formaldehyde. Formaldehyde in the ratio 1:7. If one part is formalin and 7 parts should be water, and we cover it till all the mixtures sanitized. This is the ready casing material. Now casing in bags, which is the third step in the mushroom cultivation. We cased the bag in on the top layer for 1 to 1.5 inch on the top layer. After casing, we water the bags regularly, and after some days you see the little bit primordias are coming out from these bags, which take shape of the white button mushroom when it matures. This is all about button mushroom, and now I am talking about the pleurotus species, which is also commonly known as dingley mushroom, and it's very much suitable for the Ladakh region, and many farmers are doing this. And I am running a DST project from an S&T hub, and I created a lot of entrepreneurs in the Ladakh region, and especially I focus women self-help groups, which are known as Ama Shospa group in Ladakh region. And maximum in all the villages, I tried my best to cultivate mushroom there. It's a very simple mushroom. In butter mushroom, we have to go for 3 steps. In this, we have only 1 step, that is spawning, and no much ingredients is needed. Only we need is the wheat straw, which is readily available in the Ladakh region, as wheat and barley is the major crop of Ladakh region. So there is no shortage of the wheat straw. Wheat straw is the main ingredient, and the rest is water, formalin, and carbendazole. This is some species which we tried, that is Pleurotus florida, Pleurotus eos, and Pleurotus flagellatus. These all species we tried in the Ladakh region and performed very
well, and our skilled students and our farmers are doing, and many people from the Stoke area are growing Pleurotus eos, which is pinkish in color. And these are some species, how much temperature they need. I mentioned here, like if we go for some low temperature, like Ladakh region, we can go for Aringi. Aringi bear temperature like 14 degree. No? And these maximum all species are available in our own laboratory in Ladakh region. Farmers are coming and we are providing spawn to them, and they are very much happy. Even all the species are available, and so if any farmer needed the spawn of these species, they contact our Stakna unit also. Now this is the wetting of substrate. First of all, we wet the substrate and we spread the substrate on the pakka floor or any sheet, and the proper wrapping of the bags after spawning. This is the bags on iron racks. When we kept here for 20 to 25 days. When mycelium run, pinheads formed and fruiting body comes out like this. This is the initiation of primordia. And this is all about the dingri mushroom, which is very easy, and everyone in Ladakh region can try this. Now, what is the spawn production? The mushroom seed is generally referred to as spawn. Spawn is the mycelium of the mushroom with its substrate, which is the propagating material used for initiating mushroom production. If we want many young peoples and many entrepreneurs are doing this now. They started their own spawn laboratory in Ladakh region, and presently 3 to 4 laboratories are working in Ladakh region, and entrepreneurs are fetching good price from that. And if anybody wants to start his own business in spawn production, so he also started and contact us. First of all, he has to raise pure culture. After that, he go for mother spawn and then commercial spawn. This is the flow diagram how the spawn works. First of all, we take a fruiting body. After that, we make the culture of that body. After that, we go for the mother spawn. Once we got mother spawn, then we go for the commercial spawn. These are the some equipments which you have to be brought if you have to start your own business. That is laminar airflow, hot air oven, BOD, autoclave, iron rack bags, and potato dextrose agar, cotton inoculation needle, cork borer, petri plate, flasks, ethanol, methanol, plastic pipes 12 mm, plastic pipe 10 mm, autoclavable bags, empty glucose bottle for master spawn, test tubes, quality wheat grain, calcium carbonate, calcium sulfate, plastic trays, formaldehyde, labor component, quality spawn, spirit lamp, and weighing machine. Value added mushroom product. Even we tried several products from mushroom, and we did it in our project, and we are able to develop pickle it from dried dingri, pickle, nuggets, and several other products like biscuits. Our home scientist in Krishi Vigyan Kendra Leh developed so many value added products from the mushroom. And if anybody wants to go for this, they can contact us. Eating mushroom and mushroom products, people would live healthier, happier, and longer. This is the first spawn laboratory in the Ladakh region, which was established by us in the KVK Leh, and till date 50 quintal spawn distributed among the farmers. This is the unit which was developed and designed by us behind the greenhouse, where we are able to maintain the temperature and humidity. This is the one more unit in our KVK cost Leh, where we are able to cultivate mushroom in the winter months when outside temperature is in minus.
This is how we providing technical know-how to replicate our mushroom structure design. Tribal women self-help group of village Chimde cultivate mushroom first time and they are so much happy. Mushroom unit sponsored under the supported under the project at Feang. And this we are doing one more thing. We are collecting the wild mushroom from the Ladakh region and we characterize it. And this is one of the wild mushroom. This is from the Dras region and which is commonly known as we are able to identify it and it is a Kabuli dingri. These are the some units which are supported under the project in different villages Takma, Chik, Chimde and Thikse. Now the skill development training programs conducted by us in the Ladakh region, we conducted six skill development training program of 1 month duration, and from and in our skill development program, we are very happy. We created maximum number of entrepreneurs, and those entrepreneurs are now the job providers instead of job seekers. Paddy straw burning in Punjab is a big issue even in the UP and Delhi, but it is very good substrate for mushroom. If we think about this, then we are able to solve this problem also. Thanks very much. Thanks a lot. Any questions? Sir, many of our participants are interested in knowing how can they contact you. Yeah, you can. I drop my email ID and my contact number on chat box. They contact me. They can contact me anytime. And if they are available, I am actually some days back, few days back, I was transferred to Kashmir, but I am running my project in Ladakh region, and my project staff is there, and even in KVK, they visit KVK Stakna, and they got help from that unit also. Okay, sir. Kindly share your email address here so that people can contact with you. Any question, please? I am happy if there is any question. They are asking, can mushroom grow hydroponically? No, 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 not possible yet. Okay. Dr. Vikas, our participants are asking for your email ID so that they can contact you in future. So yeah, definitely. Yeah, definitely, sir. I am sharing my email ID, my contact number in chat box, and even they can contact me also on even and how I visit Leh, and I am coming again in the month of April, and my project is still there, and my project staff is still there. They can come to our university in Stakna. They will definitely got so many help from that place also. Okay. 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 Thank you, Dr. Vikas. Thank you very much for the informative presentation, sir, and sharing the interventions to grow mushroom in cold desert area like Ladakh and showing Yeah. us the spawn production of mushroom, while button mushroom and dingri mushroom are more favorable in Ladakh. Yes. And thank you so much, sir. Thank you, Dr. Vikas, for the talk. There's an announcement for the attendees. We will be again starting at 2 p.m. So there'll be break of 20 minutes. So please don't go away, stay log in, and we'll be having very good lineup of speakers on agriculture at 2 p.m.
अलग इवेंट है अभी वो कल बुलाएंगे वो प्रेजेंटेशन भी कल आज वो सेकंड हाफ शायद नहीं ही इज नॉट देयर इन द सेकंड हाफ नहीं कल सुबह बायोस्केच और वो मंगाया था बायोस्केच तो उसके वेबसाइट पे है और ये हमारा abstract to the top देना नहीं तो मैडम मैं बैठता हूँ इसका प्रेस रिलीज 20 मिनट में मुझे फाइनल करके दीजिए
DST-SEED sustainable livelihood ये लाइन पढ़ लिया
स्कूल है ना, स्कूल है ना, यूनिवर्सिटी ना, चाहिए क्या है?
Hello everyone. I hope everyone has joined back. Let's just start. Yes, thank you all for joining back after the lunch. It was really a long session in the morning. Thank you all for staying connected to the session. Now I request Anupriya to introduce our next speaker and start the next session on agriculture. Over to you, Anupriya. Okay, thank you, sir. So our next presenter is Dr. Reet Kamal Tiwari. Dr. Reet Kamal Tiwari received his PhD degree in Earth Sciences from the Indian Institute of Technology, Roorkee. He joined Center of Glaciology at Wadia Institute of Himalayan Geology as a scientist. Since 2017, he became assistant professor in Civil Engineering Department at Indian Institute of Technology, Ropar. His research interests include geospatial technology applications in the field of snow, ice and glaciers, climate change, natural resource management, environmental monitoring, and planetary sciences. He is also a senior member of IEEE. Yeah, thank you. Thank you very much for the introduction. I have shared my slides. Hope it is visible to everyone. Yes, sir. Yes, it is visible. You can start. Yeah. So good afternoon, everyone. And it was a very good listening to the introductory session of all the guests here. And I have selected a topic, agricultural study, a remote sensing perspective. We know that Ladakh is one of the farthest region in India, and it lies in the Trans-Himalayan region of the India, and it is hard to reach, and all the villages are uh, separated with a lot of distances. So we, as we see in Punjab, that all the agricultural fields are concentrated near the cities. So monitoring them is very easy. But for a place like Ladakh, it is very hard to monitor all the agricultural field and see what is going on in there. So remote sensing can play a very vital role, and since we have audience from different background, so I will start with a presentation on what is remote sensing, a very basic one, and then we'll see a case study that I have conducted here at the Punjab, but same can be replicated over the Ladakh region. The crop that I have selected for that was wheat here, and Ladakh certainly has two important crops, which are wheat and barley. So same technique and same thing can be used there to see how the yield is going to be there in the next coming years, and what is the soil health conditions and other aspects of the agriculture. So starting from the remote sensing part, uh, remote sensing is the modern science and technique, and I would say art of acquisition of information without coming in contact with any of the ground object. So here we use satellite or UAV or any other photographic cameras to collect the information, and then we interpret those images to find out more information about the ground objects. So this is the basic definition of remote sensing, and
it is to look into what is different systems which works into the remote sensing. We have the source of energy, that is our sun, the earth's surface features which reflect the energies, and those reflected energies are captured by either by UAVs, low flying UAVs, some aerial platform, or the space platform, which are our satellite. And now India has very good capacity of the different satellites, so we get the data almost at the very negligible cost. And if we go into the global perspective, we have different agencies which provide the data at very nominal cost or without cost. Like NASA provides the Landsat data, which is one of the most used data, and that is freely downloadable by anyone. So those data are stored and then they are visually or digitally analyzed to find out the uh, meaningful information about the ground object, which is then given to the users. So if we talk about the sources of energy, we have this is the electromagnetic radiation. So we have the visible lights which range from zero point 0.4 to zero point 0.7 micrometers, and then we have near infrared, mid infrared, thermal, microwave. These are the regions of the electromagnetic radiation that we use in most of the remote sensing satellites and remote sensing cameras. So there are three phenomena which happens when energy is coming toward the earth. Either it is absorbed, transmitted, or reflected. So we use these three phenomena to find out about what are the ground objects. Depending upon the chemical composition and depending upon the type of material, different objects absorb the light at different wavelength and transmit or reflect them at different wavelength. So utilizing this known feature of different material, we can correlate the remote sensing images and the absorbed spectra that we get from the remote sensing data to find out more about the ground objects. So there are different sources of energy. One I told you, that is our sun, but nowadays and the remote sensing system which uses the sun as the source of energy are known as passive sensors, because they don't have their own ability to enlighten the earth and then get those energy reflected back. But there are other sensors which are known as active sensors, and here the microwave come into picture. And what happens is that the satellite, by they have inbuilt radar into them which sends the microwave signal toward the earth, and then those same signals after interaction with the earth object get reflected back, and the satellite captures the uh, incoming radiations also. So satellite act as its own source of light. So similarly, the camera that we use, we can use the camera in the daytime, but at the night time we have to use a flash. So the same camera which is acting as a passive sensor during the daytime act as a active sensor which has its own source of light during the night time. So these are the two primary division of the sensor, that is active and passive. And then we have different types of images. First, we have a panchromatic images, which are black and white, but they are of very high resolution. Here, the resolution of the image means when I am saying very high resolution, I am talking about the spatial resolution of the images. So spatial resolution, if it is very high, we will be able to demarcate even the smallest object in the earth feature. So nowadays, even if we look at India has launched its Cartosat 3 mission, which is around 0.2 meter
of resolution, which has 0.2 meters. So each and every object which is around 20 centimeter in size, we can identify using 20 to half a meter size object. We can identify with the help of satellite images. See how fast we are moving on. And there are sensors which are capable of capturing the Earth's images at a resolution of even 10 to 15 centimeters. So even the smallest object can be identified using the satellite images or using the panchromatic images. Then we have multispectral images, which are more oftenly used to identify the ground object or different properties of the ground object. Here we capture the image at different wavelength. So for a red, in one image we will capture only red reflectance. In one image we will capture green. In one we can capture near infrared reflectance. And then we stack them together to form a single image, which can give you idea about the reflectance of each object at different wavelengths. So they are multispectral, and even better than multispectral, we have hyperspectral images. So hyperspectral images are capable of sensing even the minor changes in the spectra of the outgoing solar radiations. So they can be used to find out about very slight change in the soil characteristic, soil nutrient content, and then the lakes, the pollution in the lakes, the melting of the glacier. All these things can be found out using the satellite images, using the multispectral or the hyperspectral images. So if I say about the identification of the ground object, this is how a image will give you a spectra. This is a spectra of a healthy vegetation, and you can see that the deciduous tree and coniferous tree, they have almost same type of structure, that they are reflecting somewhat in the green, then absorbing in the red region, and in their near infrared they are reflecting much higher radiation. But you can see that the deciduous trees have a little more reflectance than the coniferous tree, and these are the characteristics based on which we can classify which type of forest is growing, what is the forest suffering from any disease or not. Because if there is a healthy vegetation and a non-healthy vegetation, the reflectance spectra of both the vegetation will differ from each other. So based on these reflectance curves, this curve is called spectral reflectance curve, and based on this spectral reflectance curve, we can find out about the objects which are present near in the earth surface, and also we can monitor what changes they are going on. Is the changes going on in the positive direction, or it is going on in a negative way? Like if a vegetation is growing healthy, so they will start reflecting more, and if the vegetation is having some disease, then that will start decreasing, the reflectance will start decreasing. And without surveying each and every tree using the remote sensing, we can find out which portion or which portion of the forest need our attention. This can also be used to find out the illegal cuttings of the forest and many other things. So here I have shown some of the reflectance spectra of different ground objects, which are more oftenly we see. Like we have turbid water, vegetation, then dry vegetation. See, the vegetation and dry vegetation, they differ quite a bit in their reflectance characteristic. So dry vegetation even has the higher reflectance in the visible region, whereas the healthy vegetation has lower reflectance in the visible region. Similarly, concrete, dry soil, moist soil, clear water, everything can be deciphered using the help of the satellite data. So what are the platforms that we use for remote sensing?
Earlier, there were only one platform. When the remote sensing started, we used hot air balloons. We even tried tying up a camera in the pigeon's leg, and then hot air balloons, kites, all those things were used. Then different aircrafts were used where the camera was mounted at the bottom of the aircraft, and then the photographs were taken for the ground object. Then the came age of satellites, where the camera is permanently placed at the uh, uh, space, and they rotate our earth, and based on their revisit time, that after a certain duration they visit the same place again, and they capture the earth surface continuously, and all those data are sets are sent to a ground station, and then they are processed and given to the users. So we have ample amount of satellite data which are available to us. If we look at the Indian context, we have IRS series of satellite, LIS 3, LIS 4, Cartosat, then Reset was a microwave satellite which was sent. Then the next mission that we are planning with the help of NASA, in collaboration with NASA, is the NISAR mission. And the objective of NISAR mission is to develop different algorithms for agricultural studies. I am also participating in one with the MIT US group to find out more about the agricultural studies based on these data sets. Then the best platform which are now used and which are more suitable even for the Ladakh is UAV. They are small aircraft which are flown using the remote controls, and the small cameras can be mounted at the UAV, which can be used to capture the important information about the ground objects. So UAVs, why I said this is the best option, because when you have a distributed mass where you don't need the entire regional photographs, you need only the photographs of small patches. There the UAV can provide you much better resolution, and it can serve because satellite has a fixed duration to revisit your place. So whenever you need, you can use the UAV to capture the image. So UAV can be easily used to capture the images of the small agricultural field, and then they can be processed to find out more about the soil health and further on the agricultural yield. You can also use it to monitor the growth of your crops, and to monitor the growth of the crops. Suppose one area get certain disease, you can identify easily using the help of UAV without going into the field and checking each and every plant. So these are the benefits of using the remote sensing as a tool or technique to monitor the agricultural activities all around the globe, and especially at the regions where the agricultural fields are more distributed instead of segregated at a particular place. So now I will come to the topic, why agricultural study and soil study using the remote sensing. So soil is referred to as the topmost layer of the earth crust that support all life on the earth. And ever since the human civilizations have come into existence, they have been developing techniques to do agriculture into more scientific way, but it would not be wrong to say that in the pursuit of more scientific way of doing agriculture, we are doing many unscientific practices, like flood irrigation is one of them, where lot of water is being consumed, lot of water is being pumped out of the ground where it is available, and we are now looking at the ugly faces of these developments, that groundwater levels are reducing, subsidence issues are there. In Punjab itself, I have seen many places there are subsidence issue, buildings are getting cracked, the groundwater level is going below
half to 1 meter every year, and certainly one day we will have no groundwater even for our drinking. So we will be totally dependent upon the rain or the rivers, which are also drying up because of the heavy retreat in the glacier regions. So there is a need of more scientific agricultural management practices nowadays. So practice like shifting agriculture, water logging, ill-used irrigation facilities left the soil loosen its fertility. Now, due to the dependent upon the dependence of our on the different pesticides and the fertilizers, what the farmers are left with is the saline soil. The soils are much more saline than it used to be at earlier days, like in Punjab itself, when there is the abundance of water, people shifted from wheat to paddy, and now the paddy is one of the important crop and the cash crop which is grown in Punjab region. And what has happened because of that, many regions have turned in because we have to flood the field for that, and then we use heavy amount of pesticides and fertilizers, which has left the field more saline. And if the soil get more saline, then it will be the moisture content of the soil will decrease, and it will stop supporting the plants as it used to be. So we have to add more and more fertilizer, which increases the cost of the farmer, and one day eventually then the water absorption capacity of the soil also decreases, which leads into water logging, and we will ultimately ruin our all the agricultural fields because of all these things. So there is a need that we monitor how the soil health is getting affected each and every year, and there is no other way apart from the remote sensing to do that, because yes, there is a way of soil testing, but soil testing is a costly thing. It requires, and then we cannot do it for all the available agricultural lands, because it is a time-taking process also. So remote sensing is the only way where we can use it to find out more about each and every corner of the soil, that how the soil health is, what is the soil health of the agricultural field. So soil health studies using remote sensing were conducted along with the precision agriculture, uh, along with the precision agricultural research, has there is still a lack of dedicated research using remote sensing for soil health studies. So I have formulated this study, and one of my PhD students just completed his PhD in this topic, and with many international publications, and we hope that the same thing can be replicated at other parts of the country also. So these are the soil health characteristics which we look into in terms of agricultural uh, requirement, like physical health, chemical health, and biological health. And then there are subgroups like physiochemical health, biophysical health, and biochemical health. Out of these many health parameters where the soil can which can be affected with the ill health of the ill practices that we use for agriculture, there are few parameters which can be monitored using the remote sensing. They are soil moisture, which is one of the very important parameter, because the moisture content in the soil will ultimately lead you to the good yield in terms of crop health and crop productivity. Then you have soil salinity, and then you have soil organic carbon. So I have taken these three main parameters and tried to find out more about them using the remote sensing techniques. So if I go to historical perspective, how remote sensing has evolved over the time,
if we go for the year 1930 to 1950, we usually did the soil type identification, that what is the type of soil and nothing else, because that time the technique was not that much developed. And when we come up to the age of 1970 to 1980, when the Landsat was launched, the first Landsat satellite was launched. It was we confined ourselves to the classification studies of the soil. So that time we thought that first knowing the types of the soil was more important than knowing about the health of the health of the soil, because at that time we didn't even have the information about all the soil types which are present in the agricultural region. So our focus was on the soil classification study. Then from 1980 to 2000, we were more space-borne remote sensing satellites were available. There we did soil classification based on the spectral properties of the soil, that what are the chemical composition and what are the different nutrient content in the soil. Then we did the in situ studies, and then threshold based classifications were also done during this age. And from 2000 to 2010, the modern day of remote sensing, the classification studies were done more rigorously. We were able to even find out the fine prints of the soil characteristic. Then uh, thrust was given to development of the yield models also, that how the yield, different yields were also can be predicted using the remote sensing data. And in the modern after 2010, that is the coming the last decade that we have passed on, the yield prediction, the soil health study, the crop health study, these were the main focus. And then we now have we are now shifting toward the use of AI and machine learning toward using the remote sensing data, the radar remote sensing data, because nowadays the radar remote sensing data are more available. We have the processing capability. Earlier we didn't have the processing capability also for radar data, because they are very heavy data to process. So nowadays we are more focusing using the radar data, because one benefit that we get from the radar is that in any environmental condition or in any climatic condition, they can capture the earth's surface. Like if there is no sun, then also the radar and if there is cloud, it is raining, then also radar data can capture the earth's surface very clearly, but the optical data cannot be used at those durations. So now, recently, we are using the artificial intelligence and machine learning to understand more about the images and the things they are capturing. And one study here quoted Sharma et al. 2019, they used the RESET-1 data. RESET is our own Indian satellite data, and used different polarization, polarimetric data to find out about the soil moisture using the remote sensing data. And this is one of the most important thing that can determine the cost of the agriculture, because if we have sufficient moisture in the soil, then we do not need to irrigate. Or if we do not have the sufficient moisture, we need to immediately start our irrigation. So this data can help us to understand which regions are having higher moisture contents and which regions are having lower moisture contents. So accordingly, we can plan our irrigation techniques for those regions. The regions which are having dry soil for most of the duration, there we'll have to focus more on irrigation, but where the soil is having good amount of moisture, there we can curtail out our irrigation requirement. So these studies are very important. So now coming to the case study that I am going to show, this is done for the wheat crop for Punjab area. And in Punjab, I have selected the Roopnagar
district where I am located, so that I can collect the field data and validate the results also and see how our model is working. So this is the study area. This is the land use land cover map of the Rupnagar. It is also prepared using the satellite data. So here also I would say that this is also one of the important aspects that we can talk about in this workshop, because in Ladakh, almost all the things are distributed and located at the far flanks, far distributed. Every resources is far distributed, so we can use the remote sensing technique to map each and every corner of Ladakh, and then we can also use it to monitor how these are natural resources are changing, how the man-made settlements are changing, and what impact it is giving into the local resources. So all these things can be done using the land use land cover maps, which can be prepared using the satellite remote sensing data. So if we talk about our study area, it has the agricultural field. It has a very beautiful river, that is river Satluj, and it is one of the largest river. Then we have some highland areas also, build-up area, moist agricultural field, and the dry agricultural field. These two agricultural field, you can see both are fallow and taken the photograph in the same duration. However, one has higher amount of moisture, one has low amount of moisture. That is what I was talking about when doing a soil moisture study using the remote sensing. So if the agricultural fields are more dry, then here the before plantation you will need more irrigation. However, here you will not need that much volume of water for the irrigation. So then plantation like Kargil and Ladakh have apple plantation, and many other fruits are also grown. So they can also be monitored using the remote sensing technique. So these are the field studies. This is how we collected the data about the soil moisture and other parameters using the our group at the field. And these are our sample collection sites. What we had done is we distributed our sample sites from all around the Rupar. From these sample sites, we took the soil samples to find out about the moisture, then salinity, electrical conductivity, and also the organic carbon. These data went into the input to the model, and then we were able to classify for the entire Rupnagar that how these parameters are changing over each and every 15 meter by 15 meter area, because that was the resolution of the satellite data that we use, 15 meter by 15 meter. So for every 15 meter by 15 meter area, we had one data after our model implementation of our model. However, this study where we use 32 samples for 32 sites for sample collection, the cost was also very high for this type of study. So I will call you. So this type of study can be done at a very high speed using the remote sensing, but the field-based method are costly and less effective. Here in the field-based method, you will get only the sample data for few points, but remote sensing will give you data for each 15 meter by 15 meter area of the total study area. So these are the data that we used, and to keep the cost effective and make the things which can be reached to all the people, we used all the free data. So Sentinel-1, which is a microwave data, it is available every 5 to 14 days for entire globe, free of cost. You can download this data and use it. So we use the data for these dates. Sentinel-2, this is optical data. It is available at 10 meter resolution and available for everyone at freely available. Field data, I told you we collected the data for electrical conductivity, volumetric soil moisture, temperature, and electrical conductivity. Salinity was organic carbon was also tested in the lab. pH was also tested.
And then wheat crop yield data we collected through two sources. One was the farmer. We went to the field and asked different farmers for their yield, because the government data is not very reliable, although it is available for a long time. But the methodology that government follows is the crop cutting exercise, and crop cutting exercise is not done for each and every field. So it is uh, average of a larger area. So for Punjab, you will not see much change into the yield data which is given by government from one district to another district, because the government is taking mostly the average data, but overall the data is good enough. So this was the first study that we did for the finding of the soil moisture. So these are the different indices map, normalized difference, moisture index. So these are prepared using the Sentinel-2 data, and these went into the one of the input. Then from the field we collected the electrical conductivity, temperature, and then along with the Sentinel-1 back is the data, we did the different model. We applied different models such as an random forest, OLS, DT, SVR, KNN, ANN. All these models we applied. We used 70% of the data for the model to train and 30% of the data for model to execute testing. So testing was also done very rigorously, and then all the different statistics were calculated to find out the accuracy of the model. So this is the result, and these are the FI score of the OLS regression which performed the best. And here we can see that the satellite data can contribute. This FI score tells you how much a particular data set is contributing toward finding this particular result. So these are the inputs, sigma VH, sigma VB. These are the different polarizations. So you get this in the Sentinel-1 data, NDMI map, electrical conductivity, and temperature. So the satellite data alone has around 50% of the contribution in finding out the model output, which was our soil moisture. So this was the soil moisture map. We used only 32 samples from the field and the satellite data, and we were able to train the model to find out about each and every pixel using the backscatter data which we are getting from the satellite, along with the NDMI map, EC data, and the temperature data. So this is the soil moisture map which was prepared for the Roper area. Then and the accuracy that we received was more than 90%. So I can say with a very confidence that this model performed very good. Then the similar model was prepared for what we did, that we calculated one data and then the same data went into one of the input for the other model. So our second model was to find out the soil salinity. The soil salinity also depend upon the soil moisture. Therefore, the soil moisture also went as an input in this model, and then we were able to calculate the soil moisture at soil salinity at two depths. One was at the surface and one was at the 60 centimeter depth, because soil salinity at the surface is harmful, but soil salinity at a depth is much more harmful for the agricultural yield. So both the data were used to find out more about the soil salinity, and here also the OLS model performed very good, and here the contribution of VV was much higher, 37%, and sigma VH 18%. So and NDSI normalized difference salinity index 18%. So using all this freely available data, we were able to calculate the estimate the soil salinity over the entire Roopnagar area. And you can see that some of the pixels are white. So what we had done is that we have created a mask of the Roopnagar to separate out the permanent
water bodies, build-up area, and dense vegetations, because those are not the area of our interest. Build-up area, when it went into the model, it was giving some problems, so we removed the build-up area because that was not our aim to find out the soil salinity about the build-up area. Anyway, there is no use of that, so we were interested only on the fallow lands and the agricultural land. So we kept only those for model input, and we estimated the EC over the entire Rupnagar area. Then the soil moisture and EC went into the input for organic carbon calculation, and similarly we were able to calculate the organic carbon also using the same model, different regression techniques, and this was the organic carbon map which was prepared for the Roper area. Now, our aim was to integrate the soil health characteristic to find out more about the yield, that what will be the yield, because you know that if the soil quality soil health is better, your yield is going to soil health is better, your moisture content is good, then your yield is going to be much higher. Earlier, when the models were prepared for the yield, different models were already present for the yield, but they used the commercial data, which was costly. They used different complex models which are not easy to be implemented at low resources and for everyone to understand. And then none of the models use the soil health data, because and that was very surprising to see, because yield will depend upon the soil health. So without using the soil health data, whatever yield that we were getting was not good enough. So what we did is we trained our same models, and here our since the till now we had enough ample data points. So when the data increases, the ANN type of model perform much better. Artificial neural network models perform much more, better. So it was framed in a deep learning model, and then all the yield data that we collected from the field, the soil moisture that we created, the soil salinity that we created, the soil organic carbon map that we created, all went into input along with the yield data of the government and from the survey, and we were able to calculate the yield for the current year. So for the current year, which we used, all the data was 1920. So 1920 we got a good accuracy of around more than 72%. So 72% accuracy, you can see say that it is a low accuracy, but here the data was also a bit questionable, that what yield data we were giving. Secondly, not questionable that what we are giving as input, but what we are using for testing. So the accuracy may be higher also, but we had the limitation with the data. Secondly, the crop cutting exercises, where we average for a much larger area. By doing crop cutting at one field, we are predicting the yield of entire district, which is not very scientific way of doing it, but that is the usual practice, and that is the limitation. Actually, that is the usual practice because of our own limitations, that we cannot go to each and every field and do the crop cutting exercises. So now the government is also slowly shifting toward the remote sensing based technique for doing the yield prediction. So as the data will keep on adding here, the yield prediction algorithms will perform much better, and it will give you much higher accuracy. But compared to the crop cutting exercise, even the 70% accuracy is much higher. If in one of the meeting I was there, and the government says that even if we get 50% accuracy for the yield, it can be used for many purposes, like insurance sector can use the data, farmers can use the data, farmers can prepare if they are getting lower yield this year, they can prepare, the government can do planning in much more early stage. So by using this data, and then how we prepared the yield, estimated the yield on tonnage per hectares,
and now we had a trend model. So what we thought, okay, let us check for the previous years also, that can this model be applied for the previous years also. So we quickly calculated the moisture, salinity and other for the previous model, because we already had the trend model, and then we fed all the things for previous years, and we were able to get a very decent yield prediction using this same trend data. So therefore, we believe that if the model is developed for a region and then it is applied for a longer duration, your yield prediction will keep on improving, and you after a long after 5 or 6 years, you will not even need to give the input data. You just need supply the satellite data, and the model will be able to predict what will be your future yield for that particular season based on the crop situation. So this is the talk that I wanted to present. This is the last slide of mine, and I'm open to any questions. You have any questions, I can answer that quickly. Thank you. Thank you, everyone. Sir, the guests are asking that how will this benefit the common farmers? Yes, the common farmer has two requirements. They need to know more about their soil health, and doing the soil health testing for each and every field is a difficult task. Secondly, the soil health is a dynamic thing. Today the soil is not saline, but maybe tomorrow the soil can be saline. It may increase drastically, or it may go slowly toward the higher side. So if we do this type of study, we can take measures to stop the salinity. We can change the crop, or we can change our irrigation practice to stop the salinity. So this is a way it can help common farmer. Secondly, if you know your yield beforehand, then you will be able to plan what to do if you have a bad yield this year, or if your crops are having some problem. You can identify that at an early stage, and then you can rectify them. Okay. Sir, next question is, what is the future of UAV in agriculture? UAV has a great potential. Now the government has also eased the rule for flying a UAV. So earlier it used to have you had to take the lot of permissions. You had no import could be done for the UAV, but now for agricultural studies and for research purposes, you can use the UAV more frequently, and that is going to revolutionize our agricultural thing. UAVs are very cheap way to monitor the production. Secondly, it can also help you in spraying of the fertilizers. It can help you in spraying of the seeds and many other things. Dr. Tiwari, I have a question. Since it's a magnificent science that you are doing, I wanted to ask: is there any channel where you can communicate these valuable informations to a farmer like me who is working on the field, can get to know about these information on my mobile or some app or something, so that I need not to go to some government authorities to know about all this? Is there any channel that has been made for the farmers? No, not right now. This was my actually I was a glaciologist, and when I joined Roper, I thought that now I'm in Punjab, so I have to do something for the agriculture. So this is the first work that we did, and yes, we are planning to make a app where we can give this type of input. We have already submitted a proposal to the government, and if that comes through, definitely we'll have an app where we can channelize this type of information to the farmers. Yes, yeah, that's great. That's really great, sir, because that would be helpful for a commoner like me, having my land piece mapped on that app and can see all the remote sensing data and can be benefited in real time. That would be really great, sir.
Yeah, government is doing a lot of things there. There is a project going on by this agricultural IRAI New Delhi. They are now shifting toward remote sensing based agricultural yield prediction, and they are also trying to formulate a way how it can be used for crop insurance. So I think within next 4 or 5 years, we are going to see there is a good amount of change which will happen in this field, and there is a high probability that these things will be implemented digitally for all the farmers. Indeed, sir. We could see that there are a lot of artificial intelligence and image processing techniques you have used, and also developed some new algorithms. That was really nice to hear from sir. Over to Anupriya for. Okay, thank you so much, Dr. Reet Kamal Tiwari, sir, for sharing the very informative and in-depth remote sensing information and its applications that could be applied in the field of agriculture studies perspective. The case study on soil health parameter done in the district Rupnagar of Punjab is also very interesting. I hope your presentation will be helpful to our viewers. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you all the participants for this opportunity. Thank you very much, sir. Looking forward for more collaboration and more talks from you in our STI Hub Ladakh, sir. We would like to hear from you on more occasions, and would prefer to hear you in common language, so that more farmers can be benefited next time in Hindi or the common language that we generally Yes. If I would have been communicated to speak in Hindi, I would have loved to communicate that in Hindi. Surely I will try next time. And this is one of the big area. Ladakh is one of my favorite area where I work, because snow and glacier is another region where I work. Snow, glaciers, and agriculture now. So we'll be collaborating with you all for the next future. time in Ladakh, sir, for some Kisan Mela or something, sir. Yes, definitely. Thank you very आप बुलाइए. I am ready to join you as and when you ask for. Thank you very much, sir, for the kind support. And with that, I request Anupriya to introduce the next speaker. Yes. So our next presenter is Dr. Subrat Sharma. He is presently working as a scientist and head in GB Plant National Institute of Himalayan Environment and Sustainable Development, Ladakh Center. His area of specialization is agroecology and remote sensing, GIS. He has expertise in agroecosystem, forest landscape, and energy and rural development. I have shared the slides for Dr. Subrat Sharma. Is it visible? Yes, sir, it's visible to me. Yes, I can see. Yes, I am also. So, who is going to operate from your side or from? Myself, Chandrasekhar, I'll be working on your command, sir. Thank you very much. So nice of you. Let's go for the first slide. First, okay. This is not the first one. मैं क्या रखूं कम्युनिकेशन लैंग्वेज आप इंग्लिश हिंदी मिक्स कॉमन लैंग्वेज सर बिल्कुल सर हमारे साथ काफी फार्मर्स भी जुड़े हैं तो कॉमन लैंग्वेज ठीक है सर तो थैंक यू SIC हब एंड द what you call it ICM IMTECH for organizing this wonderful thing especially for the Ladakh यहाँ के लिए बहुत important थी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आपको मेरी पहली स्लाइड देख रहे हैं तो यू विल सी दैट देयर इज ए इशू नाउ इवन इन यूके जिसे हम बहुत डेवलप्ड कंट्री कहते हैं कि फ्रेश फूड राशनिंग हो रही है
एंड लिट्यूस जो है इसको राशन किया जा रहा है अवेलेबिलिटी के ऊपर। सो यू कैन थिंक ऑफ कि हम किस डायरेक्शन में फूड प्रोडक्शन कंजम्पशन के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। एंड इसका एक स्लाइटली डिफरेंट वर्जन है जो विंटर्स में हम लद्दाख में अभी फेस करते हैं कि जब हम लैंडलॉक हो जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं स्पेशली वो इंपोर्ट होती है फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो गवर्नमेंट रेगुलेट्स ऑन द योर लेफ्ट साइड इफ यू सी, तो यू विल सी दैट देयर इज ए रेट लिस्ट by the government, and on the right side there is a new entrepreneur is here who is providing the fresh food, bringing the fresh vegetables and fruits during the winters through air cargo. So you can understand it is a kind of a rationing that how much I can afford, मैं कितना मतलब खरीद सकता हूँ, ये मेरी जेब पर निर्भर करता है। तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर थिंक कि आप किस तरह से राशनिंग करते हैं, क्या आपको फूड अवेलेबिलिटी होती है। तो एक इशू अब डेवलप होने लगा है। नेक्स्ट प्लीज। सो ऑन दिस बैकड्रॉप आई विल इंट्रोड्यूस यू सम, हम बात करेंगे सिर्फ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज की और उनकी रिलेवेंस लद्दाख में क्या है। जो लद्दाख को बहुत अच्छी तरह समझते हैं वो जानते हैं कि यहाँ का एग्रीकल्चर एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है और जो है लार्जली मार्जिनलाइज्ड है। सो वी विल सी, हम फर्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि क्या क्या फ्यूचरिस्टिक मतलब क्या क्या दुनिया में डेवलपमेंट हो चुका है टेक्नोलॉजीज में। अभी हमने रिमोट सेंसिंग जीआईएस देखी, बहुत सी प्रीलिमिनरी स्टेज पर थी वो, लेकिन उसका बहुत एडवांस वर्जन आ चुके हैं। और जैसा अभी यहाँ से किसी ने पूछा कि क्या मेरा हेल्प कर सकता है, यस सर्टेनली इट कैन हेल्प यू ए लॉट। और ये लेकिन ये सब कॉस्ट इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो हमारे पास जो अभी ग्लोबली चैलेंज है वो ये है कि हमारी जो है एग्रीकल्चर जो है वो डेमोग्राफी पे डिपेंड है। हम जब जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम दूसरा ये भी जानते हैं कि हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, चाहे वो लैंड हो चाहे वाटर हो, और तीसरा जो है अनसीन थ्रेट्स हैं क्लाइमेट चेंज के। तो क्लाइमेट चेंज भी एक इसमें मेजर प्लेयर हो गया है आज की तारीख में, और ये उम्मीद की जाती है कि बाय 2050 हमें 70% मोर फूड की रिक्वायरमेंट होगी, जिस हिसाब से पॉपुलेशन और एफ्लुएंस इसको यूज करने का या हमारी डिमांड्स टुवर्ड्स अ फूड एंड वेराइटी ऑफ फूड्स की तरफ बढ़ रही है। जो डाइवर्सिफिकेशन फूड प्रोडक्ट्स में हो रहा है, तो हमारे को काफी हाई जो है एक फूड रिक्वायरमेंट्स होने वाली है। नेक्स्ट प्लीज। तो हमारा जो है, अगर हम पूरी दुनिया को खाना खिलाना चाहते हैं तो हमें लाइक ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरह काम करना पड़ेगा हमारे एग्रीकल्चर को। और मैंने ये देखा कि अभी हमारे स्पीकर्स में डॉक्टर स्तोपदन भी थे और डॉक्टर विकास गुप्ता भी थे। तो ये जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत इंटेंसिवली काम कर रहे हैं कि आप मशरूम से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम एग्जैक्टली बहुत प्रिसीजन और प्रिसाइज प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर की तरफ जाने का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ मैंने आपके लिए एक टेक्नोलॉजी का निकाला है कि क्या आज की तारीख में अवेलेबल है, क्या फ्यूचर की तरफ जाने वाली हैं। तो अगर आप ध्यान दें कि हाइड्रोपोनिक आज की तारीख में अवेलेबल है, वर्टिकल अर्बन फार्मिंग हो ही रही है, बीच में थोड़ा सा ट्रांजिशन है, ड्रोन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि सीमैप जो एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स पर लखनऊ में सीएसआईआर पर काम, सीएसआईआर की लेबोरेटरी है बड़ी फेमस, वो लोग इस वक्त ड्रोन को यूज करके न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी निकाल रहे हैं। तो हमारी रिमोट सेंसिंग जो अब ड्रोन के प्लेटफॉर्म पे आ गई है, वो यहाँ तक कैलकुलेट करने लगे हैं कि इसमें इस वक्त कितनी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, और उसी के हिसाब से हम वो अप्लाई करते हैं फार्म्स को। लेकिन ये अभी सब चीजें एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, क्योंकि ये टेक्निक इंटेंसिव है, इसमें इकोनॉमिक इनपुट बहुत ज्यादा है, आपकी कॉस्ट ऑफ जो है वो लार्ज फार्म्स के ऊपर तो हो सकती है। तो जब हमारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज को हम देखते हैं तो डेजर्ट एग्रीकल्चर, सी वाटर फार्मिंग, और स्पेशली जब हम मॉडिफिकेशंस की तरफ जाते हैं कि जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे तो हमारी पुरानी जो क्रॉप्स थी उनको हमने मॉडिफाई किया और अपनी प्रोडक्टिविटी सेवरल टाइम्स बढ़ाई। एक और बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेंशन होने जा रहा है, वो है कल्चर्ड मीट की तरफ। ये लेबोरेटरी लेवल तक तो आ चुका है, एंड रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था कि ये कहीं मार्केट में इंट्रोड्यूस भी करने की कोशिश हो रही है। तो ये बहुत तरह की चीजें हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फूड शेयरिंग, क्राउड फार्मिंग, ब्लॉकचेन,
ये बहुत तरह तरह से हम टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर सेक्टर में इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं धीरे धीरे ग्लोबली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लद्दाख, बट सर्टेनली वी विल टॉक अबाउट इट. नेक्स्ट प्लीज. मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगा कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है. जो अभी ये एक्सपेरिमेंटल और प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ हम जा रहे हैं, उसमें ये आपको ऑस्ट्रेलियन एग्जाम्पल है जिसमें एक ड्रोन और एक रोबोट है 4 व्हील, जो एक वेजिटेबल क्रॉप्स के ऊपर चल रहा है और क्रॉपलैंड के ऊपर, और ये प्रिसाइजली जो है अगर कहीं पर ये डिटेक्ट करता है कि हमारी वीड्स हैं, तो वो वीड्स को जो है वहां पर से हैंड पिक करता है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड्स देता है. मतलब आप एक केमिकल यूज कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए और फिजिकली वो पिक कर रहा है. लेकिन इसमें जो अगला एडवांसमेंट आ रहा है वो ये है कि ये जो है बिल्कुल प्रिसाइजली उसको आइडेंटिफाई कर देगा कि ये मेरे को नहीं चाहिए अपने खेत में ये वीड, तो वो उसको निकाल के पूरा मैनुअली बाहर कर देगा. तो ये टुवर्ड्स हेडिंग टू मोर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ. तो लेकिन इसकी वजह से आपको बहुत सारा जो है ह्यूमन लेबर, जो हमें, अगर आप सोचिए बड़े खेतों में, यहाँ लद्दाख में बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं कि फिर भी हमें अपनी वीडिंग करनी पड़ती है, तो वो एक काम इस तरह की बड़ी चीजों से निकल जाएगा. थैंक यू. नेक्स्ट प्लीज. दूसरी है कि यूनाइटेड किंगडम में सिमिलर एक्सपेरिमेंट हुए हैं. जो स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टर्स जो हैं, जब हम उसको पिक करते हैं, हम सब जानते हैं जिनके घरों में यहाँ गमलों में भी स्ट्रॉबेरी लगी है, कि इसको आइडेंटिफाई करना पर्टिकुलरली कि क्रॉप जो हमारा फ्रूट है वो कितना रिपन हो गया, परफेक्ट टाइम है नहीं है. तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो कैमराज है उनको यूज करके एक एल्गोरिथम डेवलप की गई है, और ये इतना एफिशिएंट टेक्निक है, टूल है, जो स्ट्रॉबेरी को हर 2 सेकंड में एक स्ट्रॉबेरी पिक कर ले रहा है. जबकि हमारा जो हम ह्यूमन आइज से करते हैं, हमें अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में टाइम लगता है, तो 15 to 20 मिनट मैक्सिमम हम कर सकते हैं. तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 साल में ये टेक्नोलॉजी जो लार्ज स्केल फार्मिंग है स्ट्रॉबेरी की, उसमें ये इंट्रोड्यूस हो जाएगी और हमारी जो ह्यूमन लेबर है वो कम हो जाएगी इसकी बदौलत. नेक्स्ट प्लीज. और इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो ये है कि अब हम एग्रीकल्चर फील्ड से बाहर आ गए. हाइड्रोपोनिक तो हमने सुना था कि हम सॉइल लेस कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन क्या हम अंडरग्राउंड कल्टीवेशन करते हैं? इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है यूके से, जहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो बॉम्ब शेल्टर्स हैं, उन अंडरग्राउंड टनल्स में 20 टाइप के सैलेड प्लांट्स ग्रो किए जा रहे हैं और इनको आर्टिफिशियली लाइट किया जा रहा है. अगर आप आज अमेजन में देखेंगे, amazon.in या कॉम में, तो आपको ये लाइट्स अवेलेबल हैं. आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, स्पेशली जब हमारे पास डार्क ज्यादा टाइम होता है. तो ये एक और नया मॉडिफिकेशन है कि जिसमें ना जमीन की जरूरत है, ना सूरज की जरूरत है, ना हर तरह से हम इसको रेगुलेट कर ले रहे हैं. तो ये एक नया एडवांसमेंट आ गया है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज का. नेक्स्ट प्लीज. दूसरा, जब हम जा रहे हैं फिश की तरफ, एनिमल प्रोटीन की तरफ, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास ऑलवेज मैमल्स हो या चिकन्स, पोल्ट्री हो. फिश फार्मिंग एक बहुत बड़ा पोटेंशियल निकल के आया है, और खास तौर पे अगर आप इस ग्राफ को देखें तो जो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू जो है कैच है, अभी भी जो सी से कैच होती है या फ्रेश वाटर से कैच होती है. लेकिन अगर आप देखेंगे कि रिसेंट ईयर्स में हमारे पास फार्मिंग बहुत ज्यादा होने लगी है. लद्दाख के पास एक ऑप्शन है कोल्ड वाटर ट्राउट का. रेनबो ट्राउट हमारे यहाँ है, हमारे कोल्ड वाटर फिशरीज में, और एक यहाँ का निश प्रोडक्ट है. इसको यहाँ पर अभी एनिमल हस्बेंड्री और जो फिशरीज डिपार्टमेंट है वो सर्टेन फॉर्म्स में करता है, लेकिन इसको विलेज लेवल तक बड़े आराम से लाया जा सकता है. द्रास में मैंने देखा था कि कुछ फार्मर्स इसको ग्रो करने लगे हैं, ट्राउट फार्म्स को, और इसकी इतनी डिमांड है कि लोग 50-100 किलोमीटर दूर से अपनी गाड़ी लेके आपके तक दरवाजे तक आते हैं इस फिश को खरीदने के लिए. अगर आप इसको केन्ड इंडस्ट्री के साथ अटैच कर दें, तो जैसे अभी हम इंपोर्ट करते हैं टूना और अदर फिशेज लद्दाख में, स्पेशली लेह में मैंने बहुत जगह देखा है टिंट फिशेज, यही आपकी एक बड़ी इनकम का सोर्स बन सकता है एक्सपोर्ट के लिए. नेक्स्ट प्लीज. जो अभी हम जीआईएस भी देख रहे थे और बहुत तरह के क्वेश्चंस भी आए थे, रिमोट सेंसिंग के भी आए थे, तो अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लगी है एक पूरा सिस्टम बनाने. ये मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक छोटे किसान के लेवल का एग्जांपल नहीं है,
ये एक बहुत बड़े फार्म जो मैकेनाइज्ड फार्म्स है उनके लिए है। अब हमारे पास जीआईएस सॉफ्टवेयर में हम इस सारे इनपुट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, सैटेलाइट इमेज को, जीपीएस को, ड्रोन को, और ये हो रहा है बाहर, ये हो रहा है। फार्मिंग सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन डेटा को रिट्रीव करते हैं AWS के साथ, और ये आपको सब डेटा सेट को पकड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बता देते हैं कि आपकी विंटर किल क्या है, लो टेम्परेचर कब आपकी क्रॉप्स के लिए डाउन जा रहा है, कोल्ड स्ट्रेस जो है कब आ रहा है जो एक सर्टेन डिग्री टेम्परेचर से नीचे जाना चाहिए, और कब आपकी क्रॉप हीट स्ट्रेस में आ रही है। स्पेशली खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए ये ज्यादा अप्लाई होता है और कनाडा के लिए। तो वहां पर इस तरह के बड़े मैनेजमेंट आने लगे हैं जहां पर आपने अपना दिमाग और अपने इनपुट्स को मिनिमाइज करना शुरू कर दिया है, और हम बड़े लेवल पर इंस्ट्रूमेंटेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मैकेनिकल विजडम की तरफ जा रहे हैं रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। तो नाउ आपने देखा कि इस तरह से बहुत तरह से, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं लेकिन बहुत तरह तरह के और डेवलपमेंट्स भी हैं। तो हम अब लद्दाख की तरफ आते हैं, क्योंकि इनमें से अगर आपने रियलाइज किया हो कि मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है हमारे फार्मर्स के लिए। क्यों? क्योंकि हम ट्रेडिशनल क्रॉपिंग करते हैं, यहाँ पर माउंटेन एग्रीकल्चर है, और हम अधिकतर स्नो मेल्ट वाटर रन ऑफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द लद्दाख में वन कल्टीवेटिंग सीजन है और मार्जिनलाइज फार्मिंग है, ये हम सब जानते हैं, और हमारी मार्केट भी बहुत लिमिटेड है। हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करके, डाइवर्सिफिकेशन करके उसको बहुत डिफरेंट मार्केट्स तक नहीं पहुंचा सकते। ट्रांसपोर्टेशन एक हमारी अभी भी ड्रॉबैक है। फिर हमारे जो पेस्ट मैनेजमेंट है, स्पेशली खास तौर पर लेह डिस्ट्रिक्ट में, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे यहाँ नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, वो ट्रांजिशन है या ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अभी भी पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। क्रॉप यील्ड वाइज दे आर गुड, और लोकल मार्केट में फेच करते हैं, आर्मी को जाता है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या हैं इन क्रॉप्स ग्रोइंग के, और ये हाउ दे आर गोइंग टू सस्टेन फॉर ए लॉन्गर पीरियड एज फार एज द प्रोडक्टिविटी इज कंसर्न, दे आर स्टिल द क्वेश्चंस समवेयर। नेक्स्ट प्लीज। तो जो हम इसको चैलेंजेस देखते हैं लद्दाख में, पहली तो मेजर यही कि इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी। यू नो कि हमारे पास बहुत बड़ी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, और स्पेशली टूरिस्ट बहुत आता है। फिर उसके अलावा भी जो लेबर क्लास या और अदर सर्विसेज हैं जिसमें बाहर से रेस्ट ऑफ द कंट्री से लोग यहाँ आते हैं, उन सब के लिए हमें खाना चाहिए, चाहे वो सीरियल्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो। तो इंश्योर फूड सिक्योरिटी, और इसको जो है हम कैसे कम कर सकते हैं डिपेंडेंसी, ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसके साथ हम एक बड़ी खासियत चीज भी है हमारे पास कि हम जो है कुछ यूनिक्स है। हमारे एप्रिकॉट बहुत अच्छे हैं, हमारे एप्पल बहुत अच्छे हैं, हमारी कुछ मटर बहुत अच्छी होती है, ऑर्गेनिक होती है। इस तरह के निश जो है प्रोडक्ट हमारे पास है। यहाँ का मिल्क जो उसमें विटामिन हैं वो ज्यादा बेहतर है, और अगर उसके डेयरी प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं और आगे भेज सकते हैं तो ये अपने आप में बहुत निश मार्केट है, जिसके लिए पूरी कंट्री में लोग पैसे दे के खरीदने को, अच्छे पैसे दे के खरीदने को तैयार रहते हैं। तीसरा जो चैलेंज है कि हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। वी नो कि हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, अच्छी दूसरी क्रॉप्स ले आते हैं जिनकी जो लो वॉल्यूम हाई प्राइस क्रॉप्स हैं, वो एक है। लेकिन उसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड फैक्टर हैं कि उसकी मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, इन सब चीजों को, तो उसको हम एक आम किसान तक, एक फार्मर तक कैसे पहुंचाए, एक उसको वायबल इकोनॉमी कैसे बनाए, ये अपने आप में स्टिल देयर इज ए बिग चैलेंज। नेक्स्ट प्लीज। तो जो हमारे पास अभी तक हमने देखा कि हमारे पास खासतौर पे बिहार का एग्जाम्पल है, जो बहुत अच्छे इन्होंने ग्लास हाउसेस, ग्रीन हाउसेस बनाए हैं, विंटर के लिए बनाए हैं। ये स्क्वाश टैबीज में काफी काम किया है। तो मॉडर्न ग्रीन हाउसेस हमारा एक ऑप्शन है जो कुछ कुछ दिखता है सामने। हमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं कि हम अपने जो भी खेत हैं उसको मैक्सिमाइज यील्ड कर सकें, और अदर स्पेस लाइक इंडोर वर्टिकल फार्मिंग जिसमें बहुत कम पानी चाहिए, ये एक ऑप्शन हो सकता है। एक ब्लॉकचेन बहुत इंपॉर्टेंट है लद्दाख के केस में, कि जो मैंने आपसे पहले कहा था कि हम निश प्रोडक्ट और प्रीमियम प्रोडक्ट है उसको हम कैसे मार्केट तक ले जा सकते हैं। ब्लॉकचेन वहां पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल इनपुट है, जो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टेब्लिश करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्नोलॉजी से जो पैदा हो रही है
वो लद्दाख में कैसे आ रही है, जो हम यहाँ कर सकते हैं। ये एक उसका ग्रीन वेजिटेबल का पैकेट है जो लद्दाख लेह की मार्केट में अवेलेबल है, और ये दिल्ली में उगाया जाता है। दिल्ली हाइड्रोपोनिक्स एक कॉमर्शियल वेंचर है जो वहां पर इसको उगा रहा है और आपको पैक करके लेह में बेच रहा है। दिस पैकेट कॉस्ट यू 80 रुपीज एंड दैट वेट इज 150 ग्राम। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास कितना पोटेंशियल है। ये काम हम खुद अपने यहाँ भी कर सकते हैं और ये प्रोसेस रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो मैं आपको, हमने जो पिछले 3 साल में सीखा है, यहाँ पर अंडरस्टैंड किया है एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो हमने कुछ छोटे छोटे इंटरवेंशंस किए थे, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ कि मॉडर्न ग्रीन हाउस जो टेक्नोलॉजी है ये अभी भी यहाँ पर क्वाइट एक्सपेंसिव है। इसमें काफी गवर्नमेंट इनपुट चाहिए आपको इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए। तो हमने इसको एक इसका सब्स्टिट्यूट निकाला है जो सिंपल है, लो कॉस्ट है और पोर्टेबल है। पोर्टेबल से हमारा मतलब यह है कि हम उस जमीन को खत्म नहीं करना चाहते। जो आपका विंटर कल्टीवेशन में जो इस्तेमाल नहीं हो रही है क्रॉप फील्ड, उसको मैं यहाँ आप इसको लगा सकते हैं और एक्सटेंडेड कल्टीवेशन आप नवंबर दिसंबर तक कर सकते हैं और फरवरी मार्च में सस्पेंस बना सकते हैं और फिर इसको हटा दीजिए और अपनी रेगुलर एग्रीकल्चर को आप करिए। तो ये इसलिए इसको पोर्टेबल कहा, और अदरवाइज आप इसे कहीं पर अपनी दूसरी अनकल्टिवेटेड लैंड में लगा के भी फर्दर कर सकते हैं। दूसरा, हमने जो हाइड्रोपोनिक का सिस्टम करा, जो हमने अंडरस्टैंड किया, तो ये बहुत ही कॉस्ट इंटेंसिव और बहुत ही टेक्नोलॉजिकली बैकग्राउंड आपको चाहिए इसको करने के लिए। तो हमने इसको 2 चीजें करी। जो हमने लद्दाख को समझा कि अगर आप एक गांव में हाइड्रोपोनिक करना चाहते हैं तो आपके पास एक जो है पावर सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए इंटीरियर्स में। तो हमने वो सब एलिमेंट्स हटा दिए, हमने इसको सोलर पावर्ड किया और बहुत सिंपल फॉर्मेट में किया। मैं भी आपको दिखाऊंगा आगे। तो इसमें हमने एक्सपेरिमेंटली किया वेजिटेबल और मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन, और मैं आप जान के हैप्पी होंगे कि जो कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं और जो प्रोडक्शन है वो बहुत आसान है और बहुत सस्ता है। तो इसको एंटरप्रेन्योरशिप के तरह यंग जो मास है वो भी टेकअप कर सकता है, क्योंकि आप ज्यादा अच्छी तरह से चीजें समझते हैं। और नन, आई रिपीट, नन ऑफ दीज इनपुट्स, मॉडर्न ग्रीन हाउस हो चाहे प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो, मतलब सोलर पावर्ड, इसमें कोई डिपेंडेंसी किसी तरह की किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मार्केट, ओपन मार्केट, इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डोर स्टेप डिलीवरी। सो ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी कम फॉरवर्ड फॉर दिस। थर्ड है वर्टिकल फार्मिंग। हमने वर्टिकल फार्मिंग में हाइड्रोपोनिक लोग यूज करते हैं या गमले यूज करते हैं, हमने इसका और सिंपल किया है कि हमने जो वेजिटेबल कल्टीवेशन है, डॉक्टर विकास गुप्ता अगर सुन रहे होंगे तो काफी नाराज होंगे कि हमने उनकी गाइडेंस में इसको बहुत ही आसान तरीके से उगाना शुरू कर दिया है। और हमने एक्सपेरिमेंटली करके देखा तो ये सफल है कि आप नीचे सब्जी उगाइए और ऊपर उसमें मशरूम उगाइए। नेक्स्ट प्लीज। ये सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आरटीसी एक रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर है जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सेक्रेटरीट में है और उन्हीं के कोलैबोरेशन में। तो ये मैं आपको नमूना दिखा रहा हूँ जो सिंपल लो कॉस्ट पोर्टेबल पॉली हाउस है। ये 15,000 रुपए से कम में बन जाता है मार्केट प्राइस पे। जो भी मैं आपको टेक्नोलॉजी दिखा रहा हूँ वो सब ट्रांसपेरेंट है, जिसमें आपको एक एक चीज आप बाजार रेट से, क्योंकि हम खुद बाजार से खरीदते हैं, तो ये वही रेट्स हैं। ऑल लोकली अवेलेबल मटेरियल जो इसमें लगता है, इसका कंस्ट्रक्शन टाइम 2 आदमी 5 घंटे में से खड़ा कर सकते हैं और 2 आदमी से 1 घंटे में लपेट के पैक करके रख सकते हैं अगले साल के लिए। और इसका एरिया करीब 300 स्क्वायर फीट है। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये 18 नवंबर 2020 की है। इसके अंदर आप देख रहे हैं, और नवंबर में जो लोग लद्दाख जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये कितना ठंडा होता है उस वक्त लद्दाख। तो उसके अंदर हम अगर एक्सटेंडेड कल्टीवेशन दिसंबर तक भी ले जाएं तो ये बहुत ही हमारे लिए काफी इंप्रूवमेंट है प्रोडक्टिविटी और कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट प्लीज। ये वो हाइड्रोपोनिक मॉडल है जो सिंपल लो कॉस्ट है। इज द सेम पॉली हाउस। उसी पॉली हाउस के अंदर हमने डिफरेंट चीजें इस्तेमाल की हैं। ये लोकली अवेलेबल बाल्टी हैं, ये पानी का पाइप है जो हमारे घरों में लगता है प्लास्टिक का,
और ये कुछ फोटोज आप ऐसे ही देख रहे हैं, ये टमाटर और हमने जो कुकुरबिट के हैं या खीरा है, ये सब चीजें इसमें ग्रो करके देखी हमने। शुरुआत में तो एक्सपेरिमेंटली करके देखी कि हम कितने सफल होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो है इसके रिकरिंग एक्सपेंडिचर 5,500 रुपए है 6 महीने का, जो इसमें केमिकल्स लगते हैं या इस तरह की चीजें लगती हैं। तो दिस इज पॉसिबल। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, बनना चाहते हैं, तो आप सीड क्वालिटी अच्छी कर लीजिए। आप और नई नई जो खास तौर पे जैसे आपने डेलीपोनिक्स का देखा कि आप लेट्यूस और ग्रीन वेजिटेबल्स हो रही हैं। मैं इसमें कैसे कर्सर लगाऊं, अगर आप मेरी सहायता कर दें तो लेफ्ट साइड में जो ये बाल्टी है, नीचे नीचे नीचे, यस, यहाँ पर ये पाइप है। ये पाइप में हमने लीफी वेजिटेबल्स लगाई हैं सिंपली। और राइट साइड में जिसके जस्ट अपोजिट साइड है, ये इसमें मेडिसिनल प्लांट्स है। वाइल्ड मेंथा और लोकल मेंथा, दोनों की आपको पता है कॉस्ट और डिमांड बहुत ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्लीज। ये तीसरा जो हम वर्टिकल फार्मिंग की और सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, ये हमने एक्सपेरिमेंट कारगिल से लेकर लेह तक हर जगह करके देखे। हमने सिंपल पॉली हाउस में, लोगों के पॉली हाउस में और अपने पॉली हाउस में डिफरेंट तरीके से मशरूम्स को ग्रो करके देखा और उसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में किया। जो ऊपर की फिगर्स हैं ये कारगिल की हैं और नीचे की ये यहाँ की हैं। तो आप ये एक हमारी आमाले का ट्रेडिशनल पॉली हाउस है जो बैकग्राउंड में बड़ी फोटो है। तो आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से मशरूम इसमें ग्रो किया है। और इसकी ट्रेनिंग हमने इन जो आमाले ग्रुप्स हैं उनको दी है और दे वर वेरी हैप्पी टू डू इट बाय देयर ओन हैंड्स। तो जो वर्टिकल फार्मिंग में नीचे वेजिटेबल्स हो रही हैं और ऊपर मशरूम्स हो रहे हैं, क्योंकि हमें दो चीज समझ में आई थी कि मशरूम के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, एक ह्यूमिडिटी और दूसरा लाइट इंटरेक्शन। तो अगर मैं किसी फार्मर को इंट्रोड्यूस करूं कोई क्रॉप, तो वो मैं कैसे करूं कि ये नहीं आप बाजार से ये भी खरीद के लाओ वो भी खरीद के लाओ। तो इसमें जो यूज है, जो बेसिक मटेरियल है, वो है फुगमा। फुगमा बहुत आसानी से यहाँ गांव में उपलब्ध है। और अभी तो हमने डॉक्टर विकास गुप्ता से इसका स्पॉन लिया था, लेकिन हमने फिर अमेजोन पे भी देखा और वहां पर भी बहुत कंपनियों का वो है, तो हमने वो भी ऑर्डर किया और उसको भी ट्राई किया। तो दोनों तरह से ये बहुत अच्छी तरह से मशरूम होते हैं तरह तरह के, और इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो छोटे मॉडिफिकेशंस, छोटी छोटी साइंस लगा के आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। ये सीधा सा मैसेज है इसके लिए। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू वेरी मच। और ये हमारे रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर जो लेह में है, काउंसिल सेक्रेटरीट में, तो ये उसकी एक फोटो है। और ये ऑल दीज डिमोन्स्ट्रेशंस आर अवेलेबल हियर और वर्किंग डिमोन्स्ट्रेशन से। इसके अलावा हम लोग गांव में भी जो इंटरेस्टेड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके साथ काम करते हैं और इन तरह के डिमोन्स्ट्रेशंस को हमने उनके साथ भी करके देखा है। अभी उर्सी गांव में आज की तारीख में आप समझ सकते हैं कि इस साल ठंडा कितना था। इस पॉली हाउस में बहुत अच्छी सब्जियां हो रही हैं। वो फोटो अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाता। Thank you very much. Now we are open for the questions. Sir, the first question is that how blockchain technology can help in marketing of agricultural produce? बहुत सही कहा आपने। हमारे पास निश प्रोडक्ट है। देखिए, मैंने यहाँ से एप्रिकॉट भेजा। मेरा एप्रिकॉट किसी और स्टेट के एप्रिकॉट के साथ मिक्स होके ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा रहा है, के नाम पर जा रहा है, तो क्या होगा? किसका नाम खराब होगा? लद्दाख के एप्रिकॉट का नाम खराब होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यही आइडेंटिफाई करती है, इंश्योर करती है कि आपकी सेफ्टी, आपका फूड प्रोडक्ट और आपकी ट्रांसपेरेंसी, ये आपके प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक ट्रांसपेरेंट रहे। यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा ये भी मॉनिटर करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कि आपका जो ट्रांजिट है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, वो कैसे इफेक्ट करता है। तो उसका जो फीडबैक है प्रोड्यूसर या जो मार्केटियर है, वो उसको इम्प्रूव कर लेता है अपनी जो कंज्यूमर चेन है। Okay, sir. Sir, next question is hydroponics. Is hydroponics and underground agriculture is possible in Ladakh? हाइड्रोपोनिक तो मैंने आपको दिखा दिया, दिस इज पॉसिबल। और ये सिर्फ हमने ही नहीं किया, ये कुछ लोगों ने ऑलरेडी जो एंटरप्रेन्योर
थे एडवांस, जो चल रहे थे थोड़ा सा आगे, उन लोगों ने किया। हमने हर एक को एटलीस्ट मॉनिटर किया है, और बिहार में ये बड़े टेक्नोलॉजिकली जो बहुत खास तरीके से करते हैं वो भी आपको अवेलेबल है। लेकिन जो हमारा इनपुट था वो ये था कि मैं किसी को जो हमारी अंडरलाइन फिलॉसफी है वो समझा दूं मैं आपको, कि अगर मेरी मदर कुछ कर सकती है तो वो टेक्नोलॉजी सिंपल है, अडॉप्टेबल है, ये मेरा मानना है। तो उसी टेक्नोलॉजी, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम चले कि एक यंग बच्चा जिसने एमएससी किया, एमए किया, बीए किया है, अगर वो ये करना चाहता है, वो इस पे अपना करियर बनाना चाहता है, तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर हमने मतलब जो 21 गया है, इसमें हमने पूरा कंसंट्रेट किया। हमने ऑल जो अवेलेबल कॉमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब हमने टेस्ट किए, और हमने पाया कि ये बहुत ही इफिशिएंट वे है जिसमें आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये बहुत आसान है करना, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा देना होगा। और इसका एडवांटेज क्या है कि इसके लिए आपको एग्रीकल्चर लैंड नहीं चाहिए। दिस इज एन एडिशनल, इन एडिशन टू योर क्रॉप फील्ड्स यू कैन प्रोड्यूस इट। और जब आपको एक बार इसमें प्रोडक्शन में मजा आने लगेगा, तो आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी अडॉप्शन की तरफ जाएगी, और आपको सब्जी के रेट तो यहाँ पता ही है 100+ ही चलते हैं। तो वो जो सारी चीजें हैं, वो उनसे ये कॉस्ट जो इफेक्टिव बहुत अच्छी तरह बन सकती है। आपको पता है हाइड्रोपोनिक्स जो कॉमर्शियली ग्रोन करते हैं नीचे, स्पेशली राजस्थान में, वो 10 रुपए किलो की भिंडी के ऊपर 3 साल में 20 लाख का रिटर्न वापस कर देते हैं। इट इज सो प्रोमाइजिंग टेक्नोलॉजी। सवाल यह है कि आप उसे बहुत सिंपल बना दीजिए और उसको बहुत आसानी से करने वाली चीज बना दीजिए, तो आपको इसके रिटर्न्स मिलने लगेंगे। दूसरा जो अंडरग्राउंड आपने कहा, अंडरग्राउंड के लिए मैंने वो जो एग्जाम्पल दिया था वो इसलिए दिया था कि लोगों ने कहां तक सोचा, पर मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा। मैं ये कहूंगा कि आप अपनी लैंड में गड्ढा क्यों खोदना चाहते हैं? वहां तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बंकर्स थे, लेकिन आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके पास ऐसे कमरे हैं या ऐसे ओल्ड स्ट्रक्चर हैं जिसमें धूप नहीं आती, लेकिन वो गर्म रह सकते हैं। तो वहां पर आप इन आर्टिफिशियल लाइट्स को यूज कर सकते हैं और सूरज की जरूरत को खत्म कर सकते हैं। तो दैट इज द टेक अवे मैसेज फॉर लद्दाख। लेकिन अगर आप गड्ढा खोद के, और अगर आपके पास ऐसी लैंड है कि जिसमें आप इसको साइट डेवलपमेंट करना चाहें, एक इनपुट देना चाहें, पर मुझे लॉजिकली नहीं लगता ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक क्वेश्चन और है अनुप्रिया, मैं पूछ लेता हूँ कि किसी ने पूछा है कि हमने एप्रिकॉट और एप्पल को रिसेंटली हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है यूएई वगैरह में, तो क्या हम ऐसे ही कैश क्रॉप लाइक वेजिटेबल को हम कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो सर बिहार या जीबी पंत इंस्टीट्यूट या कोई किस तरह से सरकारी सहायता उपलब्ध है उसके लिए कि वो कर पाए वहां? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। मैंने आपने लद्दाख में आज तक सिंपली इंपोर्ट देखा है। आपने पहली बार एक्सपोर्ट देखा है एप्पल का और एप्रिकॉट का। एप्रिकॉट तो वैसे भी थोड़ा पहले जाता था, जो ड्राई एप्रिकॉट की तरह जाता है, लेकिन एप्पल तो कभी नहीं गया मेरी नॉलेज में के हिसाब से। तो जब आप एक निश प्रोडक्ट बनाए, आपको पता है कैमोमाइल बहुत अच्छी होती है, और कैमोमाइल की प्राइस कोई भी जो है जरा देखें उसके ऊपर, तो इसमें जो है ये लो वॉल्यूम हाई प्राइस क्रॉप है। ऐसे ही आप एप्पल भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो सबसे बड़ा इशू है, जो मेरिट और डीमेरिट लद्दाख होने की है, वो ये है कि आप बहुत दूर हैं रोड सरफेस से, ये डीमेरिट है। और सबसे बड़ी मेरिट ये है कि आप बहुत दूर हैं दिल्ली से, ये बड़ी मेरिट है, क्योंकि आप एयर कार्गो से दिन भर जुड़े हुए हैं, डेली फ्यू फ्लाइट्स। अब यहां पर एक जरूरत है आपके लिए, वो है पॉलिसी इंटरवेंशन की, कि लद्दाख गवर्नमेंट आज की तारीख में अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, फार्मर्स के प्रोड्यूस को, जो बहुत अच्छा है ऑर्गेनिक के नाम पर, और ऑर्गेनिक है भी, जो जिसकी बहुत अच्छी मार्केट मिल सकती है, आपको दिल्ली तक, चंडीगढ़ तक एयर कार्गो में आपको ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडाइज कर दे। दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। आपका मार्केट अदरवाइज नॉट फीजिबल, नॉट इकोनॉमिकली वायबल।
तो आपको पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है यहाँ पर। और जिस दिन ये शुरू हो गई पॉलिसी इंटरवेंशन, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ जाएंगे, पैकेजिंग इंडस्ट्री आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री आ जाए, एयर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग एंड इंडस्ट्री आ जाएगी, और फार्मर्स को अपने आप अपने साथ इन्वॉल्व कर लेगी। इस वक्त साइंस नहीं चाहिए, इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए। ओके सर, एक सवाल है कि कैसे स्मॉल farmers, small landholders can adopt such technologies in Ladakh, sir? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो मैंने आपको छोटी छोटी टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स दिए, वो आप इंडिविजुअल लेवल्स पर कर सकते हैं। हमारे पास मैं जब लद्दाख आया तो मैं पहली बार मेरे को रियलाइज हुआ कि लद्दाख में नो वन इज लैंडलेस। चाहे आपके पास शहर में हो ना हो, गांव में तो है ही। तो अगर आप वहां पे शुरू करते हैं ये काम को, तो जो है आप छोटा प्रोडक्शन करेंगे, ये बात तय है। लेकिन जो मैं ब्लॉकचेन या ट्रांसपेरेंट उसकी बात कर रहा हूं, तो एग्रीगेटर आपको यहाँ पर चाहिए। जैसे हमारे पास वानला का एक एग्जाम्पल था लास्ट ईयर, वहां बहुत अच्छी मटर हो रही थी, लेकिन उनके पास मार्केट नहीं था। तो आप एक एग्रीगेटर है और आप छोटी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं। सिंपली आप उसको एयर टाइट पैकेजिंग कर देते हैं, मटर को वहीं पे छील के उसके दाने बना देते हैं, और उसको आप चाहे विंटर्स के लिए स्टोर कर लीजिए, चाहे बैक टू दिल्ली की मार्केट में दे दीजिए, क्योंकि जब उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्राइसिंग भी ट्रांसपोर्टेशन की कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको स्मॉल फार्मर्स अगर मिलके एक और प्रोग्राम है, स्फूर्त करके प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें सर्टेन एग्रीकल्चरिस्ट या लोग मिलते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक मेथड है, स्फूर्त के द्वारा एक दूसरा मेथड है, और अगर आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो प्राइवेट पार्टनर अपने आप आके खड़ा हो जाएगा एज एन एग्रीगेटर, जो आप लोगों से एक स्मॉल फार्मर से ये चीजें लेके उसको आगे मार्केट तक ले जाए। सर काफी हमारे पार्टिसिपेंट आपसे आगे भी सुनना चाहते हैं और जुड़े रहना चाहते हैं, तो दे आर आस्किंग फॉर योर ईमेल एड्रेस और सम फोन नंबर। सो आई बिलीव इफ यू कैन ड्रॉप योर ईमेल आईडी इन चैट सर। अच्छा, मैं चैट कर देता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें होगा शायद, मेरे फर्स्ट उसमें जहाँ टाइटल है उसमें है, अगर आप वो मिस कर गए हैं सर, बट आप अगर चैट में लिख दें तो मैं थोड़ा काफी सा लोग टेक्नोलॉजिकली अनएजुकेटेड हूँ, मैं करता हूँ। और नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप ओके, वेरी चैट, विल यू गाइड मी? So just next to the participant list, there you can see notification 6 is written over somewhere on upper ribbon. ओके Just next to it, there is a bubble sort of. ये मैंने कभी माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, सॉरी। सच में नहीं मिल रहा। It's okay. Otherwise, I will ask. Okay. I got it. Okay. हाँ। Can everyone can see? Not yet, sir. But again, it's okay. I will ask my colleague. FUTRTS@GBPIC. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you very much, sir. And over to you, Anupriya, for summarizing. Dr. Subra. Thank you very much, Dr. Subra Sharma, for such a beautiful talk on scoping of futuristic technologies in agriculture and relevance to Ladakh. You really gave simple and affordable advices on the challenges faced by farmers farming in the cold desert areas. I'm pretty sure this information is going to be very useful for the farmers. Thank you. Thank you for this lovely session, and I hope people are understanding it. मेरे को लग रहा है कि कुछ लोगों की समझ में आ रहा होगा, कुछ लोग मोटिवेट होंगे। तो इतनी तरह की आपने टेक्नोलॉजिकल डिमोन्स्ट्रेशन से डिफरेंट स्पीकर्स के द्वारा दिया है, तो होपफुली एंड एनीवन वांट्स टू कांटेक्ट मी, ये हमारे पास है, और हमारा ऑफिस यहीं लेह में है, काउंसिल सेक्रेटरीट में, वाइल्ड लाइफ ऑफिस बिल्डिंग में। तो आपका स्वागत है, जो भी फार्मर या साइंटिस्ट आके इंटरेक्ट करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much.
So our next presenter is Mr. Zubair Ahmed. Mr. Zubair Ahmed is the director of LOF Ladakh Organic Farming. He is also a proactive agri entrepreneur, mostly in the area of mushroom cultivation, medicinal plants, fisheries, and many more. We welcome you, Mr. Zubair Ahmed. Before Mr. Zubair Ahmed start, I would again request the speaker कि इंग्लिश का उपयोग करें, पर साथ ही साथ अगर कॉमन लैंग्वेज में बोल पाए तो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत फायदा होगा सर. Hello, Julie audience. Myself Zubair Ahmed. I am a farmer sir. तो मेरा आज का प्रेजेंटेशन ये है क्योंकि हमने प्रैक्टिकली जो काम किया है वो हम काम यहाँ पे हम आप लोगों को ऐसे फोटो प्रेजेंटेशन हम दिखा रहा हूँ सर. तो हमने आज से 2001 से हमने स्कूल के टाइम से हमने ये काम स्टार्ट किए सर. तो अभी हम जस्ट ये प्रैक्टिकल काम हम आप लोगों को एक केस स्टडी के हिसाब से इंटीग्रेटेड फार्मिंग और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी और लद्दाख कोल एरिया जैसे लाहौल स्पीति हो उसके हिसाब से हमने एक टेक्नोलॉजी बोलो अब कुछ एडोप्टेशन जो सक्सेस है वो हम आप लोगों को अभी हम प्रेजेंट कर रहा हूँ सर. नेक्स्ट स्लाइड. हेलो, नेक्स्ट कीजिए सर. और नेक्स्ट ये सब हम अब ये क्योंकि हमने हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन एक फील्ड है सर चिशोत में. चिशोत एक लॉन्गेस्ट एक विलेज है, तो वहाँ पे हमने एक फार्म सेटअप किया है जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो लद्दाख के हिसाब से शॉर्ट सीजन है, 6 मंथ कट ऑफ रहता है आउट ऑफ रीजन के साथ सर. तो यहाँ के हिसाब से हमने जो काम सक्सेस हो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में, तो उसमें हमने बनाया एक ग्रीन हाउस, अलग अलग टाइप का ग्रीन हाउस बनाया और हमने मशरूम कल्टीवेशन भी किया सर. तो इस हिसाब से और भी हमने पोल्ट्री फार्मिंग किया, फिश स्टॉक फार्मिंग किया, इस तरह हमने गोट रियरिंग भी किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग. अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करें तो हमें लाइफ स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट है सर. तो इस हिसाब से हमने इंटीग्रेटेड प्रोटेक्टेड एक लो कॉस्ट मशरूम कल्टीवेशन इस रीजन में हमने 2002 से स्टार्ट किया सर. एक स्कूल के टाइम में वो भी हमने चंगतंग में, एक चंगतंग आप लोगों को सबको पता है एक चाइना बॉर्डर के साथ है, वहाँ पे हमने सेटअप किया. वहाँ एक ग्रीन हाउस, ये नीचे वाला जो एक साउथ फेस में एक डोर खोल रहा है, ये वाला टेक्नोलॉजी वहाँ हमने सेटअप किया सर चंगतंग नियमामुत में सर. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट ये है ग्रीन हाउस में ड्यूरिंग पीक विंटर में हमने लीफी वेजिटेबल, क्योंकि अभी बिहार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर. उन्होंने अभी इस ऐसे पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस में उन्होंने काफ़ी वेजिटेबल ग्रो किए सर, जैसे ब्रोकली, टमाटो. इस हिसाब से हमने यहाँ लीफी वेजिटेबल किया, क्योंकि लीफी वेजिटेबल का प्राइस लद्दाख में 100 रुपये और 120 हिसाब से यहाँ पे सेल होता है सर. तो इस हिसाब से ये क्विक इसका हार्वेस्टिंग भी होता है सर. तो इसके साथ साथ हमने इसके अंदर मशरूम कल्टीवेशन भी किया सर. मशरूम यहाँ पे ऑयस्टर मशरूम सक्सेस होता है सर. नेक्स्ट स्लाइड. तो ये मेरा एक जोफ टेक्नोलॉजी है सर. जोफ मीन जुबैर ऑर्गेनिक फार्मर बोलकर. तो ये हमने 2012 में सेटअप किया. ये हम फर्स्ट टाइम आप लोगों को स्लाइड शो कर रहे हैं. अभी तक ये लद्दाख में जो विजिटर है उनको पता है, ऐसे स्लाइड शो में किसी को इतना खास हमने वो नहीं किया है सर. तो विदाउट फंडिंग, विदाउट हमने अपने सेल्फ हिसाब से हमने ये काम स्टार्ट किया सर. तो इसमें हमने ये पर्दा सिस्टम किया, तो इसमें ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करना, इसके साथ साथ हमने इसमें एक बेड, खाली एम्प्टी बेड से इसके अंदर हमने लीफी वेजिटेबल ड्यूरिंग पीक विंटर सीजन में और समर में हमने इसमें टमाटो, इनडिटर्मिनेट टमाटो भी हमने इसमें कल्टीवेशन किया सर. नेक्स्ट. तो ये हमारा ग्रीन हाउस है. तो ये ग्रीन बैक कीजिए सर, बैक कीजिए थोड़ा स्लाइड को. हेलो, हाँ. तो ये ऑयस्टर मशरूम का ये जो बेड्स है, इसमें हमने बेम्बू स्ट्रक्चर, ये 7000 का एक हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है. इसमें 7000 2012 में 7000 हमें इसमें कॉस्ट पड़ा है सर. तो ये बेम्बू हमने दिल्ली से लाया था. तो ये बेम्बू
ग्रीन हाउस के अंदर 100 फीट के हिसाब से ये बेम्बू स्ट्रक्चर में, इसमें आपने हेल्दी मशरूम, आप लोग खुद यहाँ पे फोटोग्राफ देख सकते हैं, हेल्दी मशरूम ये हमने ये नवंबर में इसमें हमने ये कल्टीवेट किए सर। और बाकी ये जो कटन देख रहे हैं, जो बुरियां देख रहे हैं, इसमें ह्यूमिडिटी का वो भी आप देख रहे हैं, इसमें हमने अपना दिमाग ला के अपना टेक्नोलॉजी कैसे करना है उसमें ऐड करके ये हमने अपने हिसाब से किया है सर। तो ये आप देखिए, और इसमें ये एक बंदा है, ये एयर कर्टन हटा रहा है, ये आईटीबीपी का बंदा है। इन लोगों को हमने अपनी फील्ड में लेके ट्रेनिंग भी की है सर, और इनके यूनिट में हमने इनको कल्टीवेशन करके लोग, हमारे पास 3 डिजाइन है सर। ये लद्दाख में किस हिसाब से एक डिजाइन है चंगथंग साइड में है, एक डिजाइन है जो बिजी ऑफिसर और बिजी जिनके पास लैंड लेस है उनके लिए भी एक डिजाइन है। ये है कमर्शियल कल्टीवेशन करने के लिए। तो ये है नेक्स्ट, ये हमारा एक लैब है, उसमें ग्रीन हाउस का कितना हेल्दी है ये आप देखिए। अभी इससे पहले शर्मा साहब ने भी एक वो दिखाया था, एक मशरूम का जो फ्रूट, उस हिसाब से है ना, हमने ये पैकेजिंग भी यहाँ पे बनाया है सर। नेक्स्ट, थोड़ा हम शॉर्ट में आप लोगों को बताएं। हाँ, ये है, ये 2004 में हमने ये पैकेजिंग किया है। तो ये एक पैकेट है, ये 1 kg यहाँ पे ये वाला एक डिजाइन, ये साउथ फेस का डोर देख रहा है, बैक कीजिए प्लीज, बैक कीजिए। ये जो साउथ फेस का ये ग्रीन हाउस का ये जो डोर देख रहा है, ये साउथ फेस का एक डिजाइन है जो हमने चंगथंग में सेटअप किया है सर 2004 में। तो इसमें पर केजी हमने सेल किया था 180 रुपीज में पर केजी, 2004 में हमने सेल करना स्टार्ट किया था। उसके बाद हमें इसमें लॉस, कुछ पैसा हमें बराबर नहीं हो रहा था, तो हमने इस 1 kg को हमने पैकेजिंग किया। तो इसमें हमें पैकेजिंग 15 पैकेट इसमें बनाया सर 1 kg में। तो 50 पैकेट हमने, पर पैकेट को हमने उस टाइम 30 रुपये में भेजा है सर। तो 315 हमें 450 पर केजी हिसाब से उस टाइम मिला था मशरूम, ऑयस्टर मशरूम पर केजी के हिसाब से, पैकेजिंग के हिसाब से। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। तो ये एक वाइल्ड मशरूम हमने कल्टीवेट किया। ये हमारा एक लैब है, तो हमने एक लैब सेटअप किया है मशरूम का स्पॉन यूनिट बनाने के लिए। तो हमने उसमें स्पॉन भी सेटअप किया था, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुआ था लैब में कैसे काम करना है, क्योंकि एक काम करता है तो दूसरा भी काम करता है। इस हिसाब से हमारा काम पर रिचार्ज करना, बाकी जितने भी एंटरप्रेन्योर हो, इंस्टीट्यूट हो, इस हिसाब से हमारा ये ऑब्जेक्टिव, ये मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है सर। तो इस हिसाब से हमने ये वाइल्ड मशरूम दराज से कलेक्शन किया, ये वहाँ दराज एरिया से। नेक्स्ट, ये एक डिस्प्ले भी किया है। नेक्स्ट, ये हमारा लैब है, एक हाइजीनिक लैब है लद्दाख में। फर्स्ट टाइम मशरूम, ये लैब हमने 2008 में हमने सेटअप किया था। उस टाइम हमने इसमें मशरूम स्पॉन भी तैयार किया था, फिर हमें कुछ सपोर्ट नहीं मिला था, इस हिसाब से ये थोड़ा डिफंग रह गया। मगर इसमें हमने मशरूम कल्चर बना के, इसमें मीडिया कैसे बनाना, ये हमने सोलन से ट्रेनिंग लेके फिर हमने इसमें सेटअप किया। नेक्स्ट, तो ये हमारा जो लैब के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स होता है वो सब हमने फॉर्मल लेवल पर, किसी ने हेल्प नहीं किया, अपने हिसाब से इसको हमने सेटअप किया है। ये इनिकुलेशन रूम है, ये लेमिनर फ्लो है, ये बीओडी है, ये आप लोग साइंटिफिक लोग अभी इसमें प्रेजेंट है, आप सबको मालूम है इसके बारे में। तो नेक्स्ट, तो ये हमने मशरूम कल्चर करके इसको स्पॉन भी हमने बनाया पीपी प्लास्टिक में, पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक में। उस टाइम स्कॉच कश्मीर में उस टाइम ये पीपी प्लास्टिक यूज नहीं करता था। जब मैं वहां पे विजिट किया, वहां पे देखने के लिए, उस टाइम वो लोग बोटलिंग में करता था। बोटलिंग में मदर स्पॉन टू कमर्शियल स्पॉन ये प्लास्टिक में करता था। तो हमने ये प्लास्टिक में कमर्शियल स्पॉन किया था, मगर उन लोगों ने बोतल में भी कमर्शियल स्पॉन किया था। उस टाइम ये सोलन वालों ने वहां पे ट्रेनिंग के टाइम में किया था। उस हिसाब से हमने ये लद्दाख का फोटो है, और ये हमारे विलेज शिशोद का फोटो, ये वही है। तो ये कोई शक नहीं है, ये प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाया सर। नेक्स्ट, तो ये मशरूम स्पॉन का जो वहां से जो बना है, ये जो मशरूम स्पॉन है, तो ये स्पॉन कैसे मतलब बेड्स में कैसे लगाना है वो सब हमने बताया सर, ये सबको मालूम होगा। नेक्स्ट ये स्ट्रॉ है, अभी शर्मा साहब ने भी बताया था। नेक्स्ट,
ये लेमिनर फ्लो है, ऑटोक्लेव है। नेक्स्ट, अब हम आ रहे हैं मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, क्योंकि लद्दाख ऐसा एक रिच प्लेस है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक। जैसे मान के चलो हमारे मेडिसिन बुद्धा, हम लोग बोलते हैं संगेस मल्ला, तो मेडिसिन बुद्धा जो आंखों से जो प्लांट्स देखता है, वो जो प्लांट्स अगर यूज करना है तो सारा मेडिसिन वैल्यू है बोलकर बताता है सर यहाँ के आमची सिस्टम में। तो हमने वहाँ हमने स्टार्ट किया था आर्टिमिसिया, जो एरोमेटिक प्लांट्स भी है और ये एक मेडिसिन वैल्यू है, ये एंटी मलेरिया में भी यूज होता है। और ससूरिया कोस्टा कुट बोलता है, इनुला रेस्मोसा, ये भी हमने आज से 10-15 साल पहले हमने स्टार्ट किया था। उस टाइम फील्ड रिसर्च लेबोरेटरी FRL भी स्टार्ट कर रहा था। FRL काफी अच्छा काम करता था और हमारे स्वास्थ्य पर भी बढ़िया काम करता है सर। तो नेक्स्ट, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स यूथ ये सब हमारे शिशोत में जो डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड है वहाँ पे विजिट करते हैं और उनको हमने डिस्प्ले किया है। यहाँ का मेडिसिन प्लांट का सीड ऐसा होता है और पोल्ट्री का एग ये होता है, वो हमने डिस्प्ले किया लोगों को प्रैक्टिकली। नेक्स्ट, तो ये एक सीड आइडेंटिफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेशन करने वाले लोगों को। मैं ये एक टेक्निक बताना चाहता हूँ एज ए प्रैक्टिकल। ये ससूरिया कोस्टस का एक सीड है और दूसरा वाला सीड है, लगभग दोनों सेम हो रहा है। अगर कोई सीड खरीदने के लिए जाएगा तो ये सीड मिक्स करके देता है, तो इसमें हमें बहुत कमाई करने वालों को बहुत इसमें नुकसान होता है। तो ये सीड आइडेंटिफाई कैसे करना है वो हम आप लोगों को बताएंगे। वो दूसरा वाला एक्टियम लाप्पा है, तो ये एक्टियम लाप्पा और ससूरिया कोस्टस और एक सनफ्लावर का सीड होता है, आप लोगों को पता है। ये सारा एक जैसा होता है, तो एक जैसा होता है तो इसमें हमें बहुत नुकसान होता है। ये एक्टियम लाप्पा का सीड बहुत मिलता है, ससूरिया कोस्टस थोड़ा मतलब कॉस्टली है। तो इस हिसाब से सीड आइडेंटिफाई कैसे करना है वो थोड़ा हम टंग पे यूज करके थोड़ा सा ये कैसा है वो इस हिसाब से हम अब ये एक ट्रेनिंग के हिसाब से हम बता सकते हैं। अभी शॉर्ट में हम आप लोगों को कैसे बताना है, ये लद्दाख में क्या सक्सेस है उस हिसाब से हम ये शॉर्टकट में आप लोगों को बता रहे हैं सर। नेक्स्ट, हाँ, ये अब आ गया हमारा कल्टीवेशन एरोमेटिक क्रॉप सेल्विया। तो ये फ्रेंच के लोग बोलता है इसको सेच। तो फ्रेंच एक कंपनी आया चैनल बोलकर एक कंपनी है तो उन लोगों ने ये देखा यहाँ लद्दाख में यहाँ पे एक सेल्विया बोल के ये सेल्विया यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम RRL बोल के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ किया, उसके बाद हमारे FRL ने काम किया, फिर सौरिकपा ने काम किया, उस हिसाब से फार्मर फील्ड के हिसाब से हमने ये काम किया। तो ये जो ऊपर वाला 2 फोटोग्राफ है ये बदर हुआ है, दूसरा है ये हमारा और एक फील्ड है कश्मीर में। तो ये नीचे वाला हमारा है, तो इसमें हमने ऑयल कंटेंट कैसा है, तो इसमें ऑयल का जो हमने यहाँ पे वो किया वो आप लोगों को डिस्प्ले यहाँ पे किया 12.15 इसमें हमने वो नीचे आप लोग ये ऐड कर सकते हैं। ये लद्दाख का कंटेंट बहुत अच्छा है और इसका अरोमा भी बहुत अच्छा है, खुशबू भी बहुत बाकियों से अच्छा है। तो ये उस टाइम CSIR का एक RRL उस टाइम होता था, अभी तो टिपल आई में उन लोगों ने उस टाइम फॉरेस्ट के साथ यहाँ की लेह डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ स्टार्ट किया था, उसके बाद यहाँ बहुत फैल गया था। अब ये वाला अभी हम दोबारा हम इसको कमर्शियली कल्टीवेशन करना चाहता है, तो इसमें CSR अरोमा मशीन बोलकर एक स्टार्ट कर रहा है। तो उसमें काफी इसका ये वाला क्रॉप भी रखा है। तो ये क्रॉप इसका ऑयल 10,000 रुपीज 12,000 रुपीज पर लीटर इसका पैसा मिलता है सर। और ये है इसका कल्टीवेशन भी इजीली है और इसका जर्मिनेशन भी बहुत बढ़िया है। तो ये मैं आपको ये लद्दाख का फोटोग्राफ है नीचे वाला जो देख रहे हैं सर। नेक्स्ट, तो ये सब सीट सिलेक्शन कैसे करना वो मैं पहले बताया था, वो दोबारा फिर आप लोगों को बताया क्योंकि ये स्लाइड शो जल्दी में किया, थोड़ा हमें टाइम हो गया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने आमची लोग और बाहर के लोगों को कैसे कल्टीवेशन करना शॉर्ट हमने मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का हमने उनको फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन और कम ट्रेनिंग दिया है। तो ये कैसे करना है, कंपोस्टिंग कैसे करना है, किसको कंपोस्टिंग जरूरत है वो हमने ऐसे बताया सर। नेक्स्ट, ये है सेल्विया, ये सेल्विया क्लेरिसेस बोलते हैं सर। कीजिए, ये हमने सीड सोइंग करके इसका नर्सरी हमने सेपलिंग्स तैयार किया है। 100 में से ये 99% इसमें कल्टीवेट जर्मिनेट हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया हेल्दी
ट्रांसप्लांट है, ये बहुत अच्छा, वो आज से काफी साल पहले किया है। अभी लोग टेक्नोलॉजी बोलता है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है और इसको आगे लेने के लिए फार्मर को जो मशीनरी है, जो फार्मर को फंडिंग है, ये देना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी सब एक ही करते हैं, सब उसी में चलता है, अलग अलग करना बहुत जरूरी है, ये हम लोग फार्मर की तरफ से हम बोल रहे हैं सर। तो नेक्स्ट ये है एक अच्छा सा, ये सब लोगों को ये इंटरक्रॉपिंग, लद्दाख में फर्स्ट टाइम इंटरक्रॉपिंग हमने ये किया है सर, फर्स्ट टाइम। तो ये कैसे करना है इंटरक्रॉपिंग, यहाँ एक एकोनिटम हेडोफिलियम होता है, ये हमारे कारगिल में काफी ये होता है सर, और हमारे नुब्रा में भी यहाँ पे इस साइड में होता था, ये स्क्रू एरिया में होता है, तो और तुर्तुक में होता है। ये एकोनिटम हेडोफिलियम, इसका काफी रेट है, ये काफी डिमांड है मार्केट का, कल्टीवेशन करने में बहुत मुश्किल है। तो ये एक मॉइस्चर एरिया में होता है और शेडिंग साइड में होता है। तो ये हमारे कारगिल में सुरू वैली में छंगरा से लेके पूरा सुरू वैली में ये होता है सर। तो उस हिसाब से हमने देखी, इसको हमने हॉर्टिकल्चर ऑर्चर्ड में हमने ये लगाया, जो बोर्ड डाल के ये देख गए सर। और नीचे वाला ये एप्पल ऑर्चर्ड और फॉरेस्टी डैक्टोलोजा हेटाजीरा, ये सलाम पंजा, ये भी मॉइस्चर एरिया में होता है, वो भी हमने इस तरह, ये 2 प्लांट्स, टोटल 3 प्लांट्स होता है। एक हमारा ये एक वो होता है बन ककड़ी भी मॉइस्चर एरिया में होता है, उसको हम बोलते हैं बन ककड़ी पोडोफिलियम हेक्साडम। तो ये कैंसर के लिए काफी ये डिमांड है, कैंसर के लिए यूज होता है, ये वैल्यू है मेडिसिनल। तो ये हमारा सलम पंजा है, ये हमारा टॉनिक के लिए काफी इस्तेमाल करता है सर। बाकी ये एकोनिटम काफी ये यहाँ के आयुष में स्वरिक्वा है सर, उनका काफी उनका डिमांड है। तो मेरा लद्दाख में ये स्पेशल ये लद्दाखियों के लिए है, आज का जो प्रोग्राम भी है लद्दाखियों के लिए रखा है। तो इतना आसान है लैंडलेस लोगों के लिए, जिनके पास ऑर्चर्ड है, जिनके पास फॉरेस्ट्री है, तो उनके लिए ये 3 प्लांट्स ये हमने किया है सर। कैसे लगाना है वो आप लोग इस तरह लगाएगा तो मेरे ख्याल से एक तीर से 3 शिकार बोलते हैं ना सर, आपको घास भी मिल गया गाय के लिए, और नंबर दूसरा आपको प्लांट्स भी मिल गया, नंबर तीसरा इसका जो पोटेंसी है वो नेचुरल की तरह इनको मिल गया सर। तो फ्रूट भी मिल गया इसके साथ साथ, तो एक तीर से 3 शिकार हो गया। नेक्स्ट तो ये हमने पोडोफिलियम हेक्साडम बन ककड़ी का सीड से हमने सीडलिंग तैयार किया सर। तो ये हम ये लगा रहे हैं यहाँ पे सर। और रेडियोला भी हमने, रेडियोला सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि ये 5000 और 4000 मीटर पे होता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। हमारे प्रेम मिनिस्टर ने भी रेडियोला संजीवनी बोलकर यहाँ काफी फेमस है। अभी अब रिसर्च करना है तो रेडियोला के ऊपर रिसर्च करना चाहिए अब, है ना। वो सब बहुत हो चुका है अभी, है ना। ये रेडियोला बहुत कीमती हो गया, तो मेरे ख्याल से ये स्पीशीज भी बहुत, 3 स्पीशीज होता है रेडियोला एम्बिकेटा और 2 स्पीशीज होता है। तो ये भी काफी यूजेस है प्लांट्स है, और यहाँ लोकल सब्जी भी बना के इसको तंतुर बना के लोग यहाँ के लोकल खाते हैं सर। नेक्स्ट और ये हमने ये लगा, बैक कीजिए प्लीज, बैक कीजिए। तो इसको हम शॉर्ट जल्दी बताएंगे। ये नीचे हमने इनुला रेस्मोसा पुष्कर मोल बोलता है, डबर च्यवनप्राश का काफी डिमांड है, ये हमने काफी कमर्शियली कल्टीवेट किया था। तो अगर कोई लगाना चाहता है, तो अगर यहाँ लद्दाखियों के पास कोई कुछ बंजारा फील्ड पड़ा होगा तो ये भी हम आप लगा सकता है। ये इजीली ये कमर्शियल कल्टीवेशन, ये एग्रो टेक्नोलॉजी निकल गया है यहाँ की। बिहार के पास भी टेक्नोलॉजी है काफी, जिन लोगों ने काम किया यहाँ स्वरिक्वा है, उनकी फील्ड में भी जाके देख सकते हैं। तो ये फार्मर की फील्ड में भी जाके देख सकते हैं, काफी लोगों ने इधर काम किया है। तो ये हमने लगाया। वो नीचे एक बंदा बैठ के वो काम कर रहे हैं, वो जांस्कर का एक आमची है, जांस्कर से 2009 में यहाँ पे लाके ट्रेनिंग करने के लिए, तो हमने उनको फील्ड में प्रैक्टिकली करके काम करने दिया। और दूसरा वाला एक लेडी है, आमची है, नुब्रा से लाया है हमारे फील्ड में, तो उनको हमने बन ककड़ी का ये हमने लगाने दिया है। तो ये ट्रेनिंग किया था। और नीचे वाला ये जो फील्ड है ये हमारा चिशोत में है। ये पुष्कर मोल का कितना हाइट हो गया, इसका सीट है बहुत कीमती है, हल्का होता है, और इसका प्लांट देखिए बहुत हेल्दी है। लद्दाख ये ले का फोटोग्राफ है। बाकी ये ऊपर वाला हमारा फील्ड है जो पानी ये इरिगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट ये है सबसे फर्स्ट टाइम लद्दाख में इंट्रोड्यूस किया है टेजिटस वाइल्ड मेरीगोल्ड। ये हमारे हिमाचल हर साइड में ऐसे जंगली होता है,
तो लद्दाख में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है और ये अंडर CSIR अरोमा मिशन में TMM इंडियन इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू उनके साथ काम किया, हमने उनसे सीट लिया। ये इनका हाइट हो गया लगभग 8 फुट से ऊपर। तो इसका अरोमा बाकी जगह से अरोमा यहाँ का एक स्पेशलिटी है, यहाँ इसका अरोमा बहुत अच्छा है, इसका खुशबू बहुत अच्छा है, क्योंकि खुशबू हर जगह होता है मगर इसमें डबल खुशबू जैसा होता है, दूर से भी आएगा तो इसका खुशबू इतना अच्छा है, क्योंकि लद्दाख में ये कमाल है। अगर लद्दाख में एक इंट्रोड्यूस क्रॉप करे तो लोगों को, और ये शॉर्ट सीजन में हमने एक जगह में लगाया था, बाकी एक फील्ड में लगाया था, एक एकड़ में लगाया था। तो उस टाइम हमने जून में लगाया था और ये सितंबर अक्टूबर में इसका हाइट इससे भी थोड़ा छोटा छोटा हुआ था। ये तो हमारे शिशोत में है, छोटा छोटा हुआ, इतना काफी इसका ये एक इंट्रोड्यूस क्रॉप है। इसका ऑयल भी बहुत कीमती है, ये एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ऐसे एंटीसेप्टिक उसके लिए ये अच्छा होता है सर। तो ये भी काफी कमाल इंट्रोड्यूस क्रॉप है। लद्दाख जैसे एरिया में शॉर्ट सीजन में ये वाला क्रॉप बहुत अच्छा है। टेजिटस ये वाइल्ड मेरीगोल्ड ये गेंदा बोलते हैं, तो ये बहुत काफी अच्छा है। ये अब सब लोग लद्दाखी लोग ये नोट कीजिए, ये शॉर्ट सीजन के लिए ये वाला क्रॉप कैश क्रॉप है, ये बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट, तो ये तो सीड सोइंग कैसे करना है आप लोगों को आज का ये ट्रेनिंग वाला सिस्टम नहीं, इसलिए ये कुछ स्लाइड से हमने लिया था। नेक्स्ट ये मेडिसिन प्लांट कल्टीवेशन अंडर डिफरेंट डिजाइन ग्रीन हाउस में किया था। नेक्स्ट, ये हमने नीचे 2-in-1 टेंच टेक्नोलॉजी किया है, 2-in-1। इसमें एक साल हम इसमें कंपोस्ट बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, उसका भी हम फोटोग्राफ दिखाएगा। अभी आप देखिए इसके अंदर सीडलिंग तैयार किया है, वेजिटेबल सीडलिंग। अब इंटीग्रेटेड, अब हम वेजिटेबल के ऊपर आ गया, तो हमने इधर वेजिटेबल हम सीडलिंग तैयार करके इसको हम सेल कर रहे हैं, इसमें भी पैसा आता है। नेक्स्ट, अगर पैसा कमाने का तरीका, अगर फार्मर को लास्ट में पैसा चाहिए तो हमें पैसा कैसे कमाना है उस हिसाब से लद्दाख में इंटीग्रेटेड फार्मिंग बहुत जरूरी है। फर्स्ट टाइम ये हम ये सोच रहे हैं सर। नेक्स्ट, ये इंटरक्रॉपिंग हमने जो पहले बताया वो सब हमने ये दोबारा इसमें लिखा है। नेक्स्ट, क्योंकि हमने फील्ड में किया तो वो हम ऐसे बता रहे हैं। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये जो हमारे समर का फील्ड है, ये हमने रेड कोरल, जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काफी इसका सीड्स लोगों को 50% 70% में सीड्स देता है, तो उसको हम सीडलिंग तैयार करके तो पर गुच्छा के हिसाब से हम इनको 70 रुपये 50 रुपये में बेचता है। तो इसमें भी बहुत कमाई होता है। ये टेंच में किया है, अभी वाला जो टेंच दिखाया था उस टेंच में ये वाला है सर। नेक्स्ट, अब ये देखिए, अभी वो 2 टेंच का वो देख रहे हैं, वो 2 टेंच वाला है, ये इसमें हमने कंपोस्ट बनाया है। पहले हमने छोटा एक पिच बनाया, उसके अंदर भी कंपोस्ट बनाया। ये नीचे वाला ये पोल्ट्री जो मैन्यूअर लेके, शीप मैन्यूअर लेके हमने ये बनाया। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब ये हो गया। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो लाइफ स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यही कह रहा हूँ। आज के इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी होना बहुत जरूरी है, जो लाइफ स्टॉक का कोई भी हो। नेक्स्ट, तो ये देखिए हमने कंपोस्ट बनाया, इसको पानी डाल के फिर इसको कंपोस्ट पैकेट किया। और दूसरा ये पैकेट है, ये पैकेट पर केजी 50 रुपीज में हमने 2006 में हमने ये भेजा था, उस टाइम दुकान में रखे। पहले कंपोस्ट बोलता था, लोग कंपोस्ट को हाथ नहीं लगाता था, ये बहुत गंदा है बोलता। अभी ये कंपोस्ट ये जूस के नीचे से ये आ गया, अब कितना बढ़िया हो गया, पैकेजिंग करके उस टाइम आ गया। अब इसको पैकेजिंग लास्ट में करने के लिए हमें इसके ऊपर पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, ये हमें बहुत मुश्किल हो गया आगे लेने के लिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये इजीली है, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये हम ट्रेनिंग कैसे करना है लोगों को, वहां पे ट्रेनिंग करके वो सब हमने बताया। ये ऊपर वाला सी वेब थ्रोन, अब सितंबर में हमारा सी वेब थ्रोन का काम स्टार्ट होता है, वो भी हम 40 to 50 टन हम तैयार करते हैं, उसमें भी हमें पैसा आता है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का यहाँ एक वंडर प्लान होता है सी वेब थ्रोन। नुब्रा वैली और हमारे इंडस बेल्ट में काफी है, और लद्दाख रीजन में स्पीशीज है। स्पीशीज तो 3 स्पीशीज है बोलता है, 6। अब ये रिसर्च जिसने PhD किया उनके पास पूरा इनका डाटा होता है। तो ये जो हमने प्रैक्टिकली काम किया, ये सी वेब थ्रोन रेमनर्ट्स, तो इसके ऊपर भी हमने इसका पल्प एक्सट्रैक्ट किया। अब इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है। अब सी वेब थ्रोन के ऊपर फोटोग्राफ अभी मैंने नहीं लगाया है यहाँ, अभी हमारे डॉक्टर स्तोपदान होगा, उनके पास काफी डाटा है, वो काफी हेल्प भी करता है। मैं यही कहना चाहता हूँ,
उनको सारा पता है। अभी हम झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि है ना हमने काम भी किया है। अभी फोटोग्राफ इसलिए नहीं लगे, टाइम ही नहीं था, क्योंकि ये सीबकथ्रोन हमने कैसे काम किया है इसके ऊपर हम आपको थोड़ा बताएगा। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है आज के डेट में। आज के डेट में इसलिए नेगेटिव है क्योंकि अभी बहुत कंपनी यहाँ आ रहा है। सेकंड, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर सब लोग पल्प एक्सट्रैक्ट करने के लिए निकल गया है, तो रेट का बहुत डिफरेंट होता है। अब ये रेट ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो कंपनी को पता चल गया। अब कंपनी डायरेक्ट यहाँ पे आके उधार लेता है। अभी भी हमारा पैसा फंसा है इस तरह, और बाकी लोगों का भी पैसा फंसा। अब कंपनी उधार नहीं लेगा तो हम दूसरा इंटरप्रेन्योर से लेगा, उससे उधार लेता है। तो ये हो गया, उधार वाला काम हो गया। मेरे ख्याल से ये कुछ वो पड़ रहा है, इसके लिए भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। लद्दाख के जितने रिप्रेजेंटेटिव है सीबकथ्रोन के ऊपर जो काम करता है, तो मेरे ख्याल से इसमें ये अब पॉजिटिव ये है, अभी हमारा लद्दाख यूटी बन गया, तो इसके ऊपर काफी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो सीबकथ्रोन के ऊपर काफी यहाँ पे लोग काफी यहाँ पे जोर कर रहे हैं। हमारे ऑनरेबल एलजी साहब भी इसके ऊपर काफी ध्यान दे रहा है, हमारे एलएचडीसी भी काफी ध्यान कर रहा है। इसमें काफी योगदान है, बिहार का भी योगदान है, डॉक्टर स्तोगन का काफी योगदान है। जो जिसने काम किया हमें पता है, हमने इनको खुल के बोलना है सर। नेक्स्ट, अब ये देखिए हमारा पोल्ट्री आ गया। पहले हमने ट्रायल किया था पोल्ट्री, हमने लोकल ब्रीड, यहाँ का लोकल होता है जो लोकल ये अंडे से निकाला, वो हमने उसके ऊपर हमने ट्रायल किया था, वो निकल गया था, मगर वो इतना लास्ट में सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद हमने ढक रखा, ये 2004 में, अब डेट भी देखिए, हमने उस टाइम से स्टार्ट किया है, अभी इतना वो नहीं है। फिर उसमें ढक और ड्रगलिंग का भी हमने वो निकाला है। फिर नीचे हमने इसको लार्ज मिलाया है, तो लार्ज मिलाया तो हमने वेंकी कंपनी के साथ हमने ट्राई किया। B380 हमने ड्यूल पर्पस, एक वो होता है ड्यूल पर्पस, बहुत सक्सेसफुल रहता है मीट पर्पस के लिए और एग प्रोडक्शन। ये हमारा जो अंडा देखते फर्स्ट टाइम लद्दाख में ड्रैगन मार्ट, अभी एक ड्रैगन मार्ट सुपर मार्ट में ये वाला अंडा मिलता है। ये 120 में 6 अंडा मिलता है, 120 में। तो ये अंडा हमारे फार्म से लिया है। अभी इस टाइम हमारे पास दिखाने के लिए पोल्ट्री भी है। अब लोग अभी प्रेजेंट कर रहा है, ये हम जो बोल रहे हैं यहाँ पे सच बोल रहा है। ये हमारे ले का फोटोग्राफ है, लद्दाख का है, इसमें लिखा है लद्दाख एग्रो प्रोडक्ट। लद्दाख एग्रो प्रोडक्ट हमारा बिजनेस ब्रांड है, तो ये बिजनेस ब्रांड है, तो इसमें हमें इनकम कैसे आता है, ये इनकम हम सेल करके यहाँ हर जगह में हम ये अंडा सप्लाई करता है, और ये चिक्स यहाँ की लोकल को रियर करने के लिए बेचता है। नेक्स्ट, अब थोड़ा टाइम नहीं है, हम शॉर्ट में जल्दी बताएगा आप लोगों को। ये हम यहाँ की यूथ को कैसे मतलब उनको थोड़ा बूस्ट कर रहे हैं और उनको कैसे करना है उसके ऊपर थोड़ा आइडिया भी लगा रहे हैं, थोड़ा ट्रेनिंग भी दिखा रहा है, और ये इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं तो हमको इनको वो बता रहे, क्योंकि ये काम सब बाकी जितने लोग फंडिंग मिलता है उनका भी काम है, हमें कुछ फंडिंग नहीं मिला, हमने अपने हिसाब से किया। नेक्स्ट, तो हम यही बोलता हूँ, ये आप लोग पढ़िए, वी पे द डॉक्टर टू मेक अस बेटर बट वी शुड पे द फार्मर टू कीप अस। ये आप देखिए, तो इसके ऊपर हम आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक वीडियो दिखाएगा, फिशरीज के ऊपर हमने काम बताया। तो ये एक फिशरीज का हम आपको एक चीज दिखाएगा, एक वीडियो दिखाएगा मैं मोबाइल में। ये थोड़ा आप यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिए, देख रहे सर, ये हमने फिशरीज में एक काम किया है। ये फिशरीज का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी शर्मा साहब ने हमने प्रैक्टिकली वहाँ पे रेस वे भी बनाया है। तो यहाँ का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो कोल वाटर फिशरीज बोलकर एक भीमताल में, उनके साथ काफी उनका साइंटिस्ट काफी बहुत डायनेमिक साइंटिस्ट है। वो लोग यहाँ पे आके पानी में जाके खाना भी नहीं खाता, उनके साथ हमने फिजियोलॉजी स्टडी किया, काम भी किया, पेपर भी निकाला, और हमने रिसाइकलिंग एक्वाकल्चर सिस्टम भी बनाया। अभी लद्दाख के लिए बहुत ये एक अच्छा है, न्यू ईयर के लिए ये अभी हमारे चिशोत में सेटअप है। यहाँ एक प्रॉब्लम होता है, यहाँ हेचीरी सक्सेस नहीं हुआ है, अब हेचीरी भी सक्सेस हो रहा है। तो ये हमने बनाया रिसाइकलिंग, फर्स्ट टाइम लद्दाख में कोल वाटर। एक हमारे साइंटिस्ट है डॉक्टर राजेश, उनके साथ हम मिलके ये काम कर रहे हैं, ये हमने लगाया है। तो ये एक लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में अभी ये फर्स्ट टाइम लद्दाख में हम जो काम करते हैं, नया चीज इंट्रोड्यूस करता है, और डायनेमिक साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूट के साथ मिलके काम करता है। इसके हिसाब से हमने काफी काम किया। अभी बोलने के लिए बहुत कुछ है, हमने इतना काम किया है, वो हम जो काम किया वही हम बता रहे हैं। और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ भी सकता है, क्योंकि
थोड़ा हमारा लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, तो बाकी फील्ड में कोई टेंशन नहीं है। आप लोग बताइए प्लीज। धन्यवाद जुबैर अहमद जी। और आपकी भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं आप कहूँगा कि बहुत ही सुंदर आपका प्रेजेंटेशन रहा। और आपसे पहले भी हमने जो भी साइंटिस्ट आए उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि हम कॉमन लैंग्वेज में ही बात करें, ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को हमारी बात पहुंचे और समझ में आए। तो आपके प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे STI हब से जुड़े और हमारे आगे की एक्टिविटीज़ को भी मदद करें, अपनी एक्सपर्टीज से हमें या लद्दाख के लोगों को अवगत कराएं। थैंक यू जुबैर जी। और ओवर टू डॉक्टर कुंजस। क्वेश्चन होगा तो बताइए सर प्लीज। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच का जुबैर। इट वाज सच अ नाइस टॉक। और मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मैं आपको बहुत टाइम से भी जानती हूँ। एंड यू हैव बीन वेरी प्रोएक्टिव एग्रीप्रेन्योर इन मेनी फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। क्वेश्चन कमिंग केले, क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, आपके लिए बहुत कोई लोग क्वेश्चन होगा तो बताइए, क्योंकि है ना हमने जो बताया इसमें कोई मिस्टेक हो जुबैर गया। जी, आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं। तो आपका ईमेल आईडी मैंने मांगने में हमने आपका, दे दिया है। हाँ जी हाँ जी, वेलकम वेलकम, कोई वो नहीं। हाँ जी सर, तो जो भी अभी इसमें थोड़ा सा कुछ मिस भी हुआ है। जो काम किया है इसमें काफी काम किया है, वो थोड़ा मिस हुआ है। हॉर्टिकल्चर के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया है। और इसमें मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये भूल गया एक चीज। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करे तो हमें खाद तो चाहिए, तो खाद चाहिए। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, टूरिज्म सीजन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ के भेड़ बकरी अभी लोग रखना अभी बंद कर दिया। तो उसके लिए हमने एक स्टडी किया था। ब्लैक बंगाल बाहर का है, बांग्लादेश से है वो स्पीशीज है। उसको हमने लोकली रियरिंग कंडीशन किया, अंडर लोकली रियरिंग। तो वो कैसे, उसमें टेबलेट आता है, तो उसमें उसको हमने लद्दाख ब्लैक बंगाल में लोकली कैसे खाना, लोकली शीप के साथ बैठा, लोकली गाय के साथ बैठा, वो है ना ज्यादा खाना भी नहीं खाता और ज्यादा नुकसान भी नहीं देता है। अगर ले वाले एरिया अगर वो पाले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बेस्ट है। और चंगतांग के पास तो ऑलरेडी चंगतांग की पश्मीना शीप है। तो मैं ले एरिया के लिए बोल रहा है। सिटी शहर में रहेगा तो 5-6 अगर ब्लैक बंगाल पाले तो बहुत सक्सेसफुल है। धन्यवाद जुबैर अहमद जी। और मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। तो जो हमारे प्रतिभागी जुड़े हैं पूरे देश से, उनको बहुत कुछ प्रेरणा मिली होगी आपके आपके काम को देख के, कि कैसे आपने पिछले 15-16 सालों में कितना कुछ अचीव किया है। और वो आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए सब कुछ पाया है। आपने IIIM के साथ काम किया अरोमा मिशन में, और आपने और भी जो लोकल लेबोरेटरीज हैं, चाहे वो जीबी पंत इंस्टीट्यूट है या दिहार है, आपने सबके साथ मिलकर काम किया और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। और आप इसी प्लेटफॉर्म को मैं यूज करते हुए हमारे सभी प्रतिभागियों से जो जुड़े हैं, आवर ऑल पार्टिसिपेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू please register yourself as innovator on our website. If you have some idea, any crazy idea, कुछ भी आपके मन में है, कुछ भी आप सोच सकते हैं कि आप एग्री टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, आप एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं, आप किसान के लिए काम करना चाहते हैं, आप मोबिलिटी पे काम करना चाहते हैं, आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, आप हाइड्रोपोनिक्स पे काम करना चाहते हैं, आप STI हब में रजिस्टर करिए। हम आपको सारी सुविधाएं देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने सपनों को पूरा करें, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करें, टेक्नोलॉजी डेवलप करें। हम आपको मेंटर्स देंगे, हम आपको इंडस्ट्री से जोड़ेंगे, हम आपको जुबैर अहमद जैसे इंस्पिरेशनल मेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे कि आप अपने टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाएं। और इसी के साथ में हमारे स्पीकर्स जितने भी आज सुबह जुड़े हैं, डॉक्टर सुब्रत शर्मा, डॉक्टर विकास गुप्ता, डॉक्टर रीत कुमल तिवारी, और जो आगे जुड़ने वाले स्पीकर्स हैं, मैं इस मंच को यूज करते हुए आप लोगों से सर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप एज ए मेंटर अपने आप को रजिस्टर करें STIHubLadakh.org पे, ताकि जो लद्दाख के लोग हैं वो आपसे जुड़ पाएं और अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने में आप लोग से मदद ले पाएं।
I request you all to visit our website and register yourself as innovator or the mentor. धन्यवाद आप सभी का मेरे को सुनने के लिए. Over to Anupriya for further proceeding in the workshop. Thank you, Mr. Zubair Ahmed, for the informative talk on integrated organic farming, where we got to learn about the proactive agripreneur work, which was experimented in many aspects of for the best mushroom cultivation. You have trained many farmers and initiated the greenhouse cultivation of mushroom and the first lab set up corn production. You have introduced cropping techniques for the first time in Ladakh, which is great rising in agri-technology. I believe that this presentation is going to be very informative for farmers as well as the guests. Thank you. Our next presenter is Dr. Muhammad Deen. Dr. Muhammad Deen completed his postgraduate in the veterinary sciences from Mathura Agriculture University and joined training in and outside India. From 1972 to 1990, he worked in the Department of Animal and Sheep Husbandry, Leh. He has also worked as a Chief Project Officer in Rural Development. He has served as Additional Secretary, Deputy Commissioner in Kargil for 2 years, Registrar Cooperative Jammu Kashmir, Special Secretary, Commissioner Secretary in Animal Husbandry. In 2007, he retired as a Secretary in Jammu Kashmir State Finance Commission. Ladakh Environment and Health Organization, LEHO, was founded in 1991 by Dr. Muhammad Deen. LEHO aims to sustain and improve the ecological farming system, promotes afforestation, biodiversity, ecological restoration, as well as the preservation of the diversity of culture, tradition, and languages. We welcome you, Dr. Muhammad Deen. Anupriya, before Dr. Mohammadin starts speaking, I would like to say sincere thank you to him, because LEHO was the first NGO who extended their support to us in 2019, when STI Hub was just an idea in our minds, and we contacted Dr. Mohammed for his support, and he wholeheartedly extended his support. He committed his support to our project in all possible manners. Sir, thank you very much. And it's our pleasure to have you on board today, and I would like to hear you from you, sir. Over to you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much for all that introduction. I think I would like to have the PowerPoint uploaded from my side, and instead of then I can go easier way. Can you stop that one and I try to do from here? Stop, sir. Now you can, sir. You can try. Oh, what happened? End of show. What happened? Sorry. Sir, you need to select the window of the I just software. Activate the where I can activate. Dr. Kunzes, can you please mute your microphone, please? Dr. Kunzes. Hello. Please mute your microphone. No, but it is already sharing, but it doesn't really show the slide. Sir, actually, you are sharing the MS Teams window. You need to share the window in which your PowerPoint is open. Yes. Just a minute, please. I'll just try to go, and it says end of slideshow. Then use the left arrow, sir, to go back on keyboard. I can't see anything on the board. No, on keyboard. So on your keyboard, you can navigate back. Okay. Try navigating back. Right. Yes. Yes.
This is my slide. Yes, sir. So you can go to first slide, sir. All right. Okay, that's good enough. Now it's much better. I'll just go back and try. Okay. It was really very interesting, when I received your mail saying that NGOs who has done innovative research on technologies can make presentation. Then I wrote back immediately that, Leho at present is not engaged in any research on agriculture, so we cannot make presentation. You just called me back and said it's not, the workshop is not all about presenting, innovations or technologies, only research based, but you would like to hear from the NGOs working on the ground in the villages, feedback from the ground, so that we might find solutions to a lot of issues, problems that they bring. I was very happy, so I thought that it's a good chance that I can make a presentation for my organization. Leho's, main mandate is environment. That's why we have a vision, a carbon neutral, self-reliant Ladakh. It's a long-term vision. It's long time. I hope I will be able to see it. Our mission is very clear: to conserve environment, organic farming, culture heritage, social values through self-sustaining development modules based on local renewable energy resources. We came into existence in 1991. That's more than 30 years. Now, at that point of the time, before 30 years, the situation of Ladakh was totally different. Ladakh was carbon neutral. There was no emission of greenhouse gases. The number of vehicles in the whole region was less than 1,000. We had been eating only organic food. As a matter of fact, it was a default organic. At that period of the time, Government of India and state government had started propagation of this chemical fertilizer in the region. And, we were more or less self-sufficient for our food production. It's my lifetime, which I have seen personally. We had been eating only our own food. Hardly we should bring from outside something. And then in Ladakh, every family has land, every household has land. So it was 90% agriculturist. Animal husbandry played a very great role in the life and also economy of Ladakh at that time. Animal to human ratio, it's just wrong. It's a human to animal ratio, 1:4. We had a population of 100,000 people, and that we had 4,000 livestock, 400,000 livestock. And mostly, of course, this was in Changtang region. We had been cultivating for past many years, only 10,000 hectares of land, because there was a limitation of this glacier water. This all land is cultivated with irrigation from the glacier water. And those periods were a very golden period. During winter, we used to get lots of snow. And I never remember any year when we had not to throw away heaps of snow from our roof. Every year, a lot of snow, and very regular snow. That would result, whatever snow melts in the summer, the glaciers would get recovered. We had a lot of springs. The streams were full of water. And as a matter of fact, it was a very peaceful situation. Strong, sustainable agriculture system, a strong culture, strong tradition, a clean environment. It was the time before. Now, during this past 30 years, a lot of things have changed. Now the situation is totally different. The farmers, if you look now, the farmers are living agriculture, as it is not economical. There are a lot of lucrative jobs in tourism and in army business.
You go to the village, talk to the people, see the village, more than 30 to 40% of the land are uncultivated. You ask them why, they tell you that we are shortage of labor, workforce, because the youth from the village has gone out for better jobs. They have gone to college, university, or schools for studies. And they say there's no water, shortage of water. The reason is now, presently, the situation is really the water patterns change. We don't get much snow. There's no regular snow. And the winters are not so cold. The glaciers are melting and causing into severe shortage of water. We had a lot of springs, they are drying up. That situation of self-sufficiency, we have now come down to 85% dependent of our requirement of food from outside. Animal husbandry used to play, as I said already, a very positive role, but now, especially sheep and goat, the villages other than Changtang have disbanded. They said they should not keep sheep and goat. It has a great impact on the soil fertility and the economy of the farmers' families. The increase, it's now 130,000, Leh district I'm talking about. And of course, the floating population of tourist army labor are more than 400,000. So this big population has a lot of pressure on our land, on our water, soil, and most of it on the environment. The worst part you can observe is that the number of vehicles, which I said before 90s, it was 1,000, it has gone up to 40,000 registered vehicles. Each vehicle produces on an average daily basis 12.4 kilograms of carbon dioxide, the greenhouse gas. And if you calculate for 40,000, annually Ladakh is producing 180,000 metric tons of carbon dioxide each year. So these are all very grave situation. Now, the situation is so grave, may take a lot of time to recover, but I'm optimistic, seeing the great potential of the natural resources God has given to people in Ladakh. See the land data. We have 45,000 hectares of land. Out of that, we are utilizing only 10,000 hectares. We have 25,000 hectares of cultivable wasteland. And with this, Ladakh is, somebody said already, it's a mountainous desert region. Ladakh region, the desert is with water. Rest of the world, desert means no water. Here we have a lot of rivers flowing through the whole region. You have got Indus running for more than kilometers from Damchok to the last border near Pakistan. Shayok River, Nubra River, Zanskar River. These rivers are full of water. See the amount of land and amount of water. In the past, we could not use it because we had no resource and no technology. Now, the situation is different. Technology is available, resource there should be no problem. Now, seeing this, we can produce whatever, the potential is that we can produce so much of food that we can meet our requirement and also export to rest of the country. As an organic food, it would be very interesting. For me, in next 10 or 15 years, Ladakh should be much greener because of this potential of water. There will be plantation, there will be crops, and there will be livestock husbandry. Now, under the new circumstances of, it will be a compulsion for UTR state to take more greenery projects to achieve the targets of carbon neutral, which they have already declared to make Ladakh as a carbon neutral. And also, I feel that
to ensure economic stability of this new state or the new UT, we will have to depend a lot on this land-based economy. In addition, we have a lot of solar energy, wind energy, hydro energy, all green power. If we have a really very good development plan, strategic plan, we can, the state can earn a lot of revenue from these sources of energy, which would also mean greenhouse gas absorption. I put intentionally construction of greenhouses, extension of growing period, because Ladakh, one of the biggest issue is that our cropping season is very short. Now this new technology of greenhouses come, which has a lot of potential to extend our growing period to 9 months, 8 months, or to the extent of 1 year. For this whole thing, which I said, we need some strategy or action plan. We need to have a very futuristic development plan. We need to declare Ladakh as an organic region. Have to bring reform agriculture and allied sector policies. To do this, we need some committees which can be always done. In Laos, one of the main activity was organic farming, and to make Ladakh as organic region. In this connection, in 2015, we invited the Sikkim Chief Minister, but unfortunately he couldn't come because of some engagement. He sent his agriculture minister. We invited Dr. Vandana Shiva. She is an activist in organic farming, to advise us to work on this organic policy. The meeting was with the Hill Council. We had an MOU how to go ahead in collaboration with Sikkim government. It's now also going on. As I said, organic, some of out of the activities, then one of the main activity was the organic farming. Awareness and seminars. Leo had a very long sustained awareness for the last 20-25 years in the whole region. We had demonstration of organic farming and greenhouses, compost pits, vegetable cellars, drying of vegetables, seed production, seedling production. And the result is now the Hill Council in last year made a resolution in their General Council to declare Ladakh as organic region by 2025. This is because we had met the whole ground for them to reach to that stage. We do eco-village development. It's a concept for holistic development in a village, utilizing local natural resources to reduce minimum greenhouse gas emission. And also, we try to bring all local innovative techniques which they had been using for many years. Seed conservation and seed banks. We have 2 seed banks. We work on seed conservation. We have 2 seed banks. Compost, if we have to go organic, probably we'll have to prepare organic manure. So we work on organic manure production. Organic food production is one of the very important issues. We had been working on it. Especially we had started making organic products in a village called as Tapmachik. Especially this dried apricot, dried cheese, walnut, walnut oil, apricot oil. We did processing, value addition, packaging, and also we had tried marketing. We did marketing within Ladakh and outside Ladakh. We have also developed a brand called as Organic Ladakh. And there's a website also, Organic Ladakh. Our brand of organic product is Be Organic. Now, to go organic, we need to have some sort of a certification. So we had started forming this participatory grantee system groups to do certification. We had certified quite a bit of farmers in village Tapmachik.
The other activities Leo had been doing for past so many years, Greenhouse was one of our first projects. Probably Leo might be the one of the very old NGO who had started. In 1994, we built 18 greenhouses in village Umla. Umla village has got 18 families, and we had built one greenhouse to every family. At time, was the simple technology, not double wall, just the wall and a polythene above. And the polythene was not UV stabilized. At that time, UV stabilized polythenes were not available. We started long time back. But later on, in 2009-10, we had a big project from European Union. We were a group of NGOs, Ladakh, SICMOL, LNP, and LEHO together had this greenhouse project. We invited engineers, solar engineers from France, and did a lot of research on developing this new improved technology where we have double wall insulation and the solar direction. It really proved very successful. At the end of the day, when we finished and launched it and submitted to the local government, and local government, on the recommendation of the local government, MNRE accepted our this type of greenhouse technology and sanctioned few crores of rupees to Lerida to replicate the technology. And really, it has taken up a very big step. And the situation was that, in the past, we could never find vegetable in the winter, except that it has to come by air from rest of the country. Far past 10, 15 years, we are seeing a lot of vegetable in the winter coming from our greenhouses, from the local production. So we work in Leh, Kargil, and Spiti, for this greenhouse technology. Now, this greenhouse technology, we took it somehow to some very far-flung school hostels. These are most of them are government school and also some private schools. In Puga is a government school. Our intention was that having a greenhouse, they can produce vegetable. It will improve the diet or the nutrition of the children. Along with greenhouse, we had vegetable cellar to preserve vegetable in a natural way for a longer period. And also all other activities to improve nutrition and hygiene. Likewise, we had in Numa for boys and girls, we in Sheh Lamdon, Leh Lamdon, Jamyang Lingshet Hostel. It's near Choklamsar, not in the village. We did go to Padum Zanskar. It had been very successful. It is going very well. These are all running projects at present. We did go to Raru Zanskar, but we had some problem and it didn't really work well. We did very well in Zangla and Skagam. These are very far-flung areas where we did this agriculture work, the greenhouse project. But greenhouse project, the interesting part in the school was that children had a lot of interest in knowing about vegetable, growing vegetable, knowing the soil. So it was an education in addition to the food vegetable for the children. It was an education. And also we organized different trainings for the children, exposure visits and proper resource person and giving them the lessons and trying to make them aware about the soil management and water. And the children also like to participate in, a collection of vegetable, cooking food. That along with this, not only inside the vegetable, in these schools, we try to do some outside the vegetables like kitchen garden, apple plantation. And this, we had our Sibak Throne was again a very important plantation program, which we started in many villages. One or two, we try to show it here. We did in Umla village. Vegetable cellar concept was good, and it's not just like the old one. It's a bunker. It's not a bunker. It's really, this lady is inside
the vegetable cellar. It's an underground storage facility where the temperature in summer remains about 6, 7, and in winter it doesn't get freeze. It's something very good, you know. And then in this compost pit, that's compost making, we did about 450 compost region. The other activities which we had been doing is with the self-help group women. You know, we have about 50 self-help women groups doing a lot of activities. They grow pulses, peas, watermelons, vegetables. Some of them also do handicraft work. They put organic food stalls, especially when there is a conference or a meeting. So this was something very interesting with the self-help group. Medicinal plant development. We are working with DABA India for development of medicinal plant for past 5-6 years. Right now, we have identified 3 economically valuable plants. That is Inola racemosa. That's called in Ladakh is called as Manu. Second is Econotum hydrophyllum, and third is Arnibium. These have economic value, and the Inola racemosa has taken off very well. Now, a lot of villages, about 15, 16 villages, people are growing Inola, and we had started procuring, we have started processing the roots. It's taking off. I'm sure that this will have a good development if the situation changes from, shortage of labor and shortage of water problem in Ladakh. Mulching is something very important, which we thought under the condition when we have so much of shortage of water. So the mulching really reduces the water requirement. It reduces human labor. So it's something wonderful. We all have to work very much. We had been working quite a bit on the water conservation techniques. We constructed 5 artificial glaciers. The first we did in Umla in 1995-96. It's doing so well. Even now, the benefit of that, on this left, what you see is the Umla glacier, which we made it in 90s, So it's really giving a lot of benefit to the people. So we did it in Lekir, we did it in Umla, one we did in Gangles. We also tried to do this ice mountain. People are now replicating this ice mountain because it's much simpler to do it. The artificial glacier is little expensive and complicated, but very useful for water conservation. The other activities that we had in this program was, construction of water harvesting tank. Again, in Umla, we did in 90s. It is doing so well. We did the second water harvesting tank in Umla. So it's really giving the people a real benefit of storing water and its conservation, especially during night they store, in the day they use it. And now I just want to talk a little bit about the apricot development. As I mentioned to you in my mail that, we had some achievement in apricot. Apricot is one of the, we have both drying variety and non-drying variety. I'm more interested for the drying variety. We we did a survey of drying variety of apricot, that is Halman. The survey was conducted to see the belt for this, is Sham area, that is from Takmachik to Da. In this belt, we grow this almond because it needs a particular environment and condition. So this is the belt. Of course, there are some villages in Nubra, Tiakshi and Turtuk also produces, but quite less quantity. In the survey, what we got is, it was done in 10 villages, the whole belt where the region where it is being produced. The total number of chuli is the non-drying variety, less value. There are 10,000 plants. And Halman, which is the drying variety, there are 17,000 plants.
And the production, if you look, chuli is 48,000 kgs when it is dried. We have taken the dried quantity here. Halma is 1,000 kg. That is nearly 200,000 kg halman is produced. So it has a lot of economical impact in the region, because this is something very important. This was covering 10 villages and there were 834 families. If you calculate at the present market rate, it's about nearly 7 crores of rupees. That means 80,000 per family per year. But the biggest problem we had in this is the drying of the apricot. Drying of the apricot, you know, the traditional drying, how they do is that, you know, the whole method was very crude, right from the collection. They shake the tree and the apricots are fallen on the ground, and then they are dried in open on rooftops, stones, rocks, cement blocks, in direct sunlight. The fruit gets exposed to dust, exposed to flies, and also the direct sunlight causes, the changes the color of the fruit and it becomes very dark brown. Many times rain causes damage to the whole fruit. So there was a lot of problem in the whole process. And a lot of institutions like the government, horticulture department, NGOs have tried to intervene and develop solar dryers or other normal dryers. But technically they were very sound, but practically it did not work for 2 or 3 reasons, you know. One is the equipments are very small. You can see here on the left. Here you can see on the left, small, it caters about 100 to 200 kilos at a time. Second is very expensive. This one costs about more than 1,000 on my left, the one solar dryer. It costs more than 100,000. And the others also is quite expensive. Second is, it's difficult to maintain. This solar dryer, you have it can be used only for 1 month at the time when the apricots are mature. Now, rest of the 11 months you have to store it, maintain it. It's quite tedious and difficult thing to do it, you know. There's a very big problem. So the solution was that we need to have a bigger drying system. तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ये जो ग्रीन हाउस को कन्वर्ट किया सोलर ड्रायर एज ए सोलर ड्रायर. ग्रीन हाउस में हम लोगों ने वो नीचे से उसका पॉलिथीन उठा के वेंटिलेशन डालने की कोशिश किया, रैक्स बनाया और रैक्स में ट्रे डाले हैं. यू कैन सी इन दिस वन ऑन इन द मिडल, दिस इज द वन इन द ग्रीन हाउस, you know. So this improved the quantity to be dried, you know. The number of trays you can increase depending on the height of the greenhouse, and the greenhouse can be large, big. In the first trial we did on my left top also, the lady is trying to dry in trays in many layers in multiple tiers, you know. So it was really very successful in terms of first it was dust free, the quality wise it was much hygienic, and the color, because this apricot didn't get direct sunlight, so it had a very beautiful, good color. It really revolutionized their income. When we did this in 2015 in Tagmachik village, where we distributed 50 dryers. There are 60 families. We try to cover all the families for drying of the apricot. So in the first year, at that time, the market rate for normal sun-dried apricot was 180 to 200 rupees. And once we put this and improved it, it really rose up to 300 to 350. It was amazingly very good signal. The
villagers had it and their economy suddenly pushed. And then we brought the villagers from the neighboring villages, try to show this technology. There was a lot of appreciation and really remained very positive. And in the collection of the apricots from the tree, we also brought a little improvement in collaboration with the squash lay, putting a net, collection in a net, you know. A net is tied on the trunk of the apricot tree, and the tree is, when you shake the tree, the apricot falls on the net, and you can collect at one particular point from a hole without damaging, without getting soil. So it was something very unique and was very useful. So these were some of the activities we have done in Leho in terms of the activities. I think that's all. That's all, I think. If there are questions, you can have it. Yeah. Thank you, Dr. Mohammed. Sir, I have a question. Like, you worked in Sikkim and also you worked in Ladakh. So, do you see any similarity between the climatic conditions or the soil conditions for the agriculture? I believe, because I am asking this question because if there are some participants from Northeast, they can also be, benefited from your reply, and how two different regions can merge their agricultural practices or something. It's totally different. Okay. Our we are dry climatic conditioned, and we depend on the water through irrigation, not rainy water, whereas Sikkim is totally on rain base, and they have a lot of moisture. There's a lot of greenery. So the soil and then the condition of the farmers is totally different. Everything is different. But what we wanted with them is, because they had the experience of getting themselves declared as an organic state. So we wanted to look at their policy, look at their system, look at their quality control, the certification process. The certification process in any organic products is very complicated, very expensive. Unless we come through this, our products will not get value. And then Sikkim is a state, and they have much better resources. Ladakh is very small. And in Ladakh, whatever we have, everything is at very small scale at present. In future, we are going to be definitely scaling up everything after we have become UTR. One day we will be state. But for the time being with Sikkim, our intention is only learning of their experience in implementation of the organic food system, organic certification, and that sort of a thing. Yeah, thank you very much. And I believe the participants who are listening to Dr. Mohammadin, now they know whom they have to approach for, for some rare quality of seeds, because Dr. Mohammadin is having seed banks. Also, he helps in eco-village development. So if anybody wants to have their village to be developed, may please contact Leho for these pursuits. Also, I really, listened to you, sir, very carefully, that how you connected the greenhouse concept with the nutritional for nutrition for the kids. It's really amazing. It's really unique thing to hear that how this things can be related. Like having organic farming is one thing, but relating that to the schools for addressing the malnutrition. Commendable job, sir. Thank you very much for talking to us today and enlightening us with these ideas of yours. Really good. I believe Anupriya can also summarize your talk. Over to Anupriya. Thank you very much, Dr. Mohammadin, sir. It was really a very interesting presentation. You have received a lot in your professionalism, which encourages us to get more knowledge from you. You have worked on shaping the agriculture sector of Ladakh. Be it
any eco-village development, seed conservation, compost manure production, organic products, or apricot development. I would like to extend my thanks to Leho for being kinder in the genesis of STI Hub Ladakh. We wish you stay in touch with us for the upbringing of the best out of people from Ladakh. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Okay, so our next speaker is Mr. Pranay Kumar. Mr. Pranay Kumar is a founder and CEO of the Chakras Farm. They are an agri-tech startup blending innovation to organic farming and enabling it with technologies like artificial intelligence and Internet of Things. Well, sincere apologies, but as we are running short on time, I request the presenters to kindly try to complete their presentations as soon as possible. Over to Mr. Pranay I Kumar. request Dr. Mohammadin to stop presenting. Sir, if you can stop presenting, so no, the cross, yes, thank you very much. Yeah, so hi and good evening to everyone, and thank you so much for inviting us, Anupriya and the entire team. So as you have like introduced us, so basically like we are an agri-tech startup based out of Sikkim, and हमारी company जो है, because I want to like continue my talk in Hindi, so it'll be easy to understand for everybody. एंड सो हमारी कंपनी जो है बेसिकली एक ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनी है एंड लाइक अब बेसिकली हम ऑर्गेनिक भी नहीं बोलते बट हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ है ताकि जो भी पॉसिबल टेक्नोलॉजीज या जो भी पॉसिबल मेथड्स है फार्मिंग के वो सारे लाइक यूज कर सके एंड उनमें हम टेक्नोलॉजीज डाल के उनको और लाइक प्रिसाइज बना सके एंड अच्छे क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए लाइक फार्मर्स को हेल्प कर सके. सो मैं अपने स्क्रीन शेयर करूंगा अभी एंड जस्ट अ सेकंड. Is it visible? It is visible, sir. You can start. Yes, Pranay, it's visible. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, so yeah, we are an agri-tech startup. So हमारी कंपनी जो है बेसिकली अपनी कंपनी के बारे में मैं बताऊं तो हम लाइक अटल इंक्यूबेशन सेंटर SMU-TBI जो सिक्किम में मणिपाल ग्रुप्स का है उनके साथ हैं एंड हमारी जो कंपनी है वो अभी रिसेंटली सेलेक्ट हुई है जो कि लाइक इंडिया में लाइक 15 स्टार्टअप सेलेक्ट हुए थे उसमें से हमारी कंपनी भी एक है नॉर्थ ईस्ट से एंड बेसिकली हम लोग जब बोलते हैं टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या फिर किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि हाँ हमारा फ़ोन से कनेक्ट होगा लैपटॉप से कनेक्ट होगा जैसा सुबह हमारी बात हो रही थी सोनम वांगचुक सर जैसे बता रहे थे. सो हम लोग टेक्नोलॉजी एक्चुअली बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं ताकि अपने काम को आसान बनाए. बेसिकली टेक्नोलॉजी का काम वही है. मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियर का है. मैंने लाइक एग्रीकल्चर लाइक सब कुछ सीखा है अपने खुद से करके सीखा है तो मेरा भी वही थॉट प्रोसेस है कि करके देखो अगर हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो फिर से करके देखो रुकना मना है. ठीक है. सो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग अभी तक शुरू करके बढ़ते आए हैं. सो ये मेरे बारे में है प्लस जो हमारी कंपनी अभी है वो लाइक कुछ प्रोडक्ट्स है जो हम लोग अभी मार्केट में भी लॉन्च करने वाले हैं एंड उसके साथ साथ जो एक्चुअली हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सारे पैन इंडिया के लिए बनाते हैं करते हैं वो हर लेवल के फार्मर्स के लिए डेवलप है. अगर बताया जाए आपको तो करेंट हाइड्रोपोनिक्स का है अपनी कंट्री में राइट एंड एक्वापोनिक्स बहुत लो स्केल पे करते हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइक Pranay, we are losing your voice in between. So if you can check your internet. Pranay, if you can hear us, we are not getting your voice. It was cracking in between. So can you please check your internet?
Hello, Pranay, can you hear us? Yeah, I can. I'm so sorry. Okay. No, I'm so sorry. I couldn't recognize like mute पे था बोल के. I'm so It's okay. sorry. Now you can start again on from second slide in your deck. Yeah. I'll start from here. Yeah. So as I was saying, जैसा मैं बता रहा था पहले भी आपको, so there are different kind of challenges we face every day and every farmer faces every day, right? So जब हम लोग बात करते हैं challenges की, तो हमें लगता है कि supply chain management में change, like जो problems आती है उसकी वजह से farmers like suicide करते हैं या फिर farmers को सही rate नहीं मिल पाता है. दिमाग में रखते हुए अगर हमने भी like और देख के and like हमने supply chain के segment में नहीं जाके हमने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की एंड उसके बाद हमने लाइक जो अपना जो प्रोडक्ट्स है या फिर अपनी कंपनी का जो है वो सब हमने शुरू किया. सो जो मेजर चैलेंज जो आप देखते हो ग्लोबली जो अभी चल रहा है एंड लाइक अगर आप बात करो अफ्रीका की या फिर आप रिसेंट ट्वीट की बात करो एलन मस्क की, जो उन्होंने अपने लाइक कंपनी के शेयर्स देने के लिए तैयार हो गए थे यूनाइटेड नेशंस को, राइट? सो इन सब चीजों को देखते हुए आपको लगता है, आपको इंडिया में भले ही पता ना चले कि हाँ वर्ल्ड हंगर एंड फूड हंगर है, बट ये है जो हम देख रहे हैं. तो जो पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है एंड जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है 2050 तक का, उसके हिसाब से लगता है कि हम जितना भी ग्रो कर रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा हमें ग्रो करना पड़ेगा. सो वो एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चैलेंज है जो हम लोगों को अभी से सोचना चाहिए ताकि वो सिचुएशन हमारे देश में ना आए. अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कोई भी गाँव में रहना नहीं चाहता है, ये एकदम फैक्ट है, बिटर है बट ट्रू है. दूसरा है क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर आप देखें तो आप लद्दाख में इटसेल्फ वहाँ पे लाइक आप आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बना रहे हो ताकि आप फार्मर्स को लाइक प्रॉपर वाटर लाइक ईयर अराउंड वाटर मिल सके एंड उनकी लाइक क्रॉप लाइक वो फार्मिंग अच्छे से कर सके, ठीक है? तो ये भी एक कहीं ना कहीं देखने में अच्छा है कि हाँ हमने कुछ बनाया है, हमने कुछ क्रिएट किया है, बट हाँ कहीं ना कहीं ये भी है कि ये एक समस्या है जिसको हम सॉल्व किए अभी और दूसरी चीजें बाकी है आनी. जैसे सॉइल के न्यूट्रिशन कम हो जाएंगे तो आपको बायोफाइट फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इवन. तो ये सारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो सॉइल में चेंजेस आ रहे हैं, जो पानी में जो मिनरल्स है उसकी चेंजेस आ रही है, ये सारी समस्याएं हैं हमारे सामने. एंड इन सब का रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट पॉवर्टी एंड हंगर ऑब्वियस है. फार्मर सुसाइड क्यों करता है? हम कहीं जाके काम क्यों करते हैं? ताकि हमें 2 पैसे मिले, ताकि हमारी जिंदगी हमारा परिवार चले. तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है एंड इसको लेके एंड जेंडर इक्वलिटी को लेके हमने लाइक यूनाइटेड नेशंस के साथ हम लोग काम करने के लिए हैं. हम लोग बहुत जल्दी पायलट भी करने वाले हैं मलेशिया एंड या सिंगापुर से. सो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है. इवन केन्या के लिए भी हम लोग लाइक प्लान कर रहे हैं कि कैसे वहाँ के लोगों को लाइक और एक नेचुरल फार्मिंग और एक सस्टेनेबल फार्मिंग का मेथड दिया जा सके विदाउट टेक्नोलॉजी, क्योंकि सबको टेक्नोलॉजी की जरूरत होती नहीं है एंड जिनको जरूरत होती है उनको पता नहीं होता है कि उनको कौन सी टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए जिससे उनका काम आसान हो. तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो लाइक जो एजुकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जिसके लिए लाइक हमारे कुछ फ्यूचर प्रोडक्ट्स भी हैं जिसके लिए लाइक हम प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि उसमें आए. सो अब adoption of different method of agriculture, I would not like to like speak about the slides, but still इंडिया में हाइड्रोपोनिक्स जो है बहुत बूम पे है एंड दूसरे में आता है एक्वापोनिक्स. जो सब जिनको लगता है कि लाइक हाइड्रोपोनिक्स में आपने बस सोलर टाइप के मिनरल्स मिला दिए एंड आप लाइक कोई भी प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट ये एक ट्रेंड है जो चलता आ रहा है जहाँ पे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स अगेन यूज होता है. एक्वापोनिक्स में भी आप सारे प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते हो. कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें आपको, या फिर कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनमें आपको लाइक थोड़ा बहुत सिंथेटिक फर्टिलाइजर या फिर मिनरल्स कहीं ना कहीं से डालना पड़ता है. सो बहुत सारे लाइक गैप है हम लोग लाइक इनको लाइक फुलफिल करके इनको लाइक कर सकते हैं. वर्टिकल फार्मिंग अभी ट्रेंड में है. हाइड्रोपोनिक्स के साथ भी आप वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हो. बेसिकली कंपनी जो हमारी कंपनी है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को वर्टिकली कर रही है. सो हम लोग लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रो बेड्स बना रहे हैं लाइक ताकि लाइक सारे टाइप ऑफ प्लांट्स लाइक जितने भी लीफी ग्रीन्स है या फिर लाइक टोमेटोज, बेल पेपर्स या फिर कोई भी सैफरॉन हो गया, इन सारे क्रॉप्स को हम लोग वर्टिकली ऑर्गेनिकली ग्रो कर सके. प्लस लाइक जो टोमेटोज है, टोमेटोज को भी हम लोग अभी हिट एंड ट्रायल पे है कि उसको वर्टिकली कैसे ग्रो किया जाए ताकि ज़्यादा रिजल्ट्स आए एंड कम कॉस्टिंग में ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोग लाइक ज़्यादा प्रोड्यूस हमारे फार्मर्स लाइक वो कर सकें. सो बहुत सारे मेथड्स है बट जैसा मैं कहूँगा कि जो आपके पास रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज आपको यूज करनी चाहिए, क्योंकि आप लाइक आपके पास 50,000 है और आप 5 लाख का अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो होगा नहीं.
फिर आप कर्ज में पड़ जाओगे एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो आपके पास रिसोर्सेज है वहाँ से शुरू करना बेटर है, क्योंकि यहाँ पे लाइक हमारे सेशन में लाइक बहुत सारे ऐसे फार्मर्स भी हैं एंड बहुत सारे एस्पायरिंग फार्मर्स भी हैं जो जिनको लाइक करने का है, बट वो हाइड्रोपोनिक्स के 4 यूट्यूब वीडियोस देखेंगे। आई एम सॉरी, मैं मतलब अगर बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी, बट सीरियसली अगर आपको अगर कुछ भी अगर बिजनेस वाइज अगर लेके करना है, क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ एंड मैं फेस करता हूँ, डेली चैलेंजेस फेस करता हूँ, तो मुझे पता है कि कितना दुख होता है जब अगर आप कुछ सोचो, कुछ सपना देखो एंड अगर आपका वो पूरा ना हो तो इसके लिए आप प्रॉपर अच्छे से प्लान करो। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करके एक लाइक प्रोटोटाइप एक पायलट रन करो, ताकि आपका एक सही प्रोसेस हो, सही एक पूरा एक चैनल बनाओ एंड उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करो टेक्नोलॉजीज। ठीक है। सो अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। सो इंडिया में जहाँ तक मैंने देखा है, बिकॉज मैं लाइक बिहार से हूँ, मैं पढ़ा लिखा बेंगलोर में हूँ एंड वहाँ पे बिजनेस करने के बाद लाइक मैं सिविल इंजीनियर था बेसिकली एंड लाइक मैंने कंस्ट्रक्शन की बिजनेस शुरू किया। कंस्ट्रक्शन के बाद मैं एग्रीकल्चर में आया, खुद से हिट एंड ट्रायल बहुत सारे किए। इतना सारा हिट एंड ट्रायल करने के बाद मैं लाइक आई एम अ फेल फार्मर बेसिकली। पिछले 3 साल तक मुझसे कुछ ग्रो नहीं हो रहा था। मैं धीरे धीरे करके सीखते सीखते ग्रो किया एंड देन आई अंडरस्टूड, आई लर्न हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग है जहाँ पे आप लाइक पूरा पेस्टिसाइड्स एंड लाइक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, एंड देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, पर्माकल्चर, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है। तो इन सारी चीज़ों पे हमने बहुत ट्राई किया एंड जब मैंने लाइक इन सारी चीज़ों में जब ग्रो करके सीख लिया कि कैसे ग्रो करना है, तब मैंने सोचा कि इसको टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इनेबल कर सकते हैं, ताकि जो चीज़ जिसमें मुझे डिफिकल्टीज हो रही थी वो तो अगर हम देते हैं तो वो कैसे एक बार में सीख सके। ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है। जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, जो आज का जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, लाइक आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु ऑल आर वर्किंग इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स, IoT एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन टेक्नोलॉजी से आप लोग बहुत फेमिलियर हैं, क्योंकि ये आप लाइक पंजाब या फिर हरियाणा जैसे या फिर महाराष्ट्र, नागपुर में आप देखेंगे जाके, तो लोग पेस्टिसाइड्स लाइक वो स्प्रे करने के लिए या फिर लाइक सीडलिंग्स के लिए भी ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज होती है। स्प्रे करने के लिए, वाटर स्प्रे करने के लिए भी आप यूज करते हैं। ठीक है। हेल्थ असेसमेंट के लिए बहुत यूज होता है, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए बहुत यूज करते हैं हम लोग। एंड इवन जब हम लोग लाइक बिफोर लाइक प्लांटिंग एनी क्रॉप्स, हम लोग सॉइल एंड फील्ड के एनालिसिस भी इससे करते हैं। So IoT बेसिकली हम लोग IoT एंड AI यूज करते हैं एंड वी आर लाइक प्लानिंग टू यूज VR आल्सो इन द फार्म, सो दैट लाइक जो वर्टिकल एंड कमर्शियल फार्म्स जो होते हैं उसमें हम लोग अगर VR यूज करें, बिकॉज हमारी टीम से कुछ लोग हैं जो IIT बॉम्बे एंड IIT मद्रास से हैं, जो लोग लाइक VR टेक्नोलॉजी पे बात करने के लिए हमसे आए थे एंड उन लोग हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं एक्चुअली। सो बेसिकली IoT एंड AI जो है वो आपका लाइक स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर डेटा को फिल्टर करता है, फिल्टर करके आपको एक सही डेटा प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका क्रॉप जो है फेलियर होने के चांसेस कम करता है। और AI जो है बेसिकली वो मॉनिटरिंग का काम भी करता है, प्लस ये फार्म ऑटोमेशन जितना है ये सारा चीज आपका मॉनिटर करना है, फार्म ऑटोमेशन को ठीक तरीके से चलाने का काम करता है। सो ब्लॉकचेन जो है ये आने वाली टेक्नोलॉजी है। जब हम वेब 4 की बात करते हैं या वेब 3 की बात करते हैं, तो ये ब्लॉकचेन जो है एग्रीकल्चर में अभी तक नहीं था, इंडिया में नहीं है बट US में यस है, बाकी कंट्रीज में US यूरोप में बहुत जगह पे ये सारी टेक्नोलॉजीज चल रही है। तो ब्लॉकचेन बेसिकली आपका लाइक ट्रांसपेरेंट पेमेंट है। ठीक है। अब आपके पास अगर मान लो अगर एक सामान है, मान लो 1 kg गेहूं है, तो आप अगर सामने अगर किसी दुकान के पास गए, दुकानदार के पास एंड उसको 1 kg गेहूं दिया, 10 रुपए उससे लिए, तो वो एक ट्रांसपेरेंसी रही, राइट। सो आप अब वो जहाँ बेच रहा है वो उसको अगर 15 में बेच रहा है तो वो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, तो सॉरी, तो वहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम आती है कि आपसे लेके वेंडर तक एंड वेंडर से लेके आगे तक पूरी सप्लाई चेन की जो है वो पूरी ट्रेसेबिलिटी होती है। सो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी बेसिकली इस पे चल रही है। सो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आपको कुछ भी चाहिए तो लाइक मैं, मेरे दोस्त लोग, बहुत लोग हम लोग हैं जो कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, सो हम लोग कनेक्ट करा सकते हैं आपको। रोबोटिक्स अगेन लाइक अगर फार्मर लाइक रोबोटिक्स बेसिकली मुझे नहीं लगता कि लाइक गांव में जैसे हमारे जैसे बिहार जैसे गांव में रोबोटिक्स की जरूरत है एग्रीकल्चर में, बट यस मेट्रो सिटीज जैसे बैंगलोर, हैदराबाद वगैरह जगह की अगर बात करें, वहाँ पे रोबोटिक्स जरूरी है क्योंकि मैन पावर बहुत कम है वहाँ पे। ठीक है। सो टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से लगता है कि जितना जरूरत है उतना यूज करना चाहिए, ताकि हमें अपने नेचर का भी ख्याल रखना पड़ेगा। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग यस नेचुरल है, बट टेक्नोलॉजी उसको इनेबल करने की बात बहुत कम लोग करते हैं।
So मेरा सवाल है आप लोगों से कि like is it really important for the farmers, like technology, is it really important for the farmers, like do they have to use it? Like मुझे नहीं लगता है, but आप लोगों को क्या लगता है? इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर राउंड में आप बता सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स में आप like इनबॉक्स कर सकते हो क्वेश्चंस. So let's learn the art of nature and become an artist with us. So I always say this because I find myself like I find myself an artist basically, because like whenever we do or we try to do something and Hello, Pranay, we lost your voice. I believe some network issues at your end. Can you hear us, Pranay? We lost your voice. It's okay if we can't connect again with Pranay. We can, Anupriya, we can have the questions from chat and can mail to Mr. Pranay for answering if that would help, because I would like to have the same question to Pranay which was asked by Dipanjan Das in the chat, that how his technology can help the marginal farmers in Ladakh. But unfortunately, we lost his voice. Okay, no problem, sir. I'll Pranay, forward. Pranay, you are on mute. If you can hear us, please unmute so that you can answer the questions. Pranay, you are on mute. Can you hear us? But again, we need to ask him for unsharing his content so that the next speaker can share the content. yeah, hello. Yeah, Pranay, we lost your voice in between. Actually, we have a question for you. How do you think that these technologies which you proposed to the marginal farmers in Ladakh region particularly, how this AI or robotics or blockchain can be of use to the small farmers? Can you please elaborate on it? Yeah, can you repeat your question, please? I lost you in between. Okay. So question was how these technologies which you proposed in your talk, say blockchain or IoT or robotics, can be of help to the marginal farmers who have small chunks of land in Ladakh particularly. Yeah. Will it be cost effective for them to use such technologies? Yes. So actually मैं इस पे बिल्कुल बात करूंगा because ये मेरा favorite topic है actually. ठीक है. So recently like Ministry of Information Technology के CEO से बात हुई थी हमारी. So he came for an event and I asked him the same question कि सर हम लोग जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं IoT के जो डिवाइसेस बनाते हैं वो हमें कॉस्ट पड़ता है 5,000-6,000 का, तो हम एक नॉर्मल फार्मर को कैसे दे सकते हैं? ठीक है, अगर कोई मान लो गेहूं ही उगा रहा है, अगर उसके लिए अगर हम उनको कुछ टेक्नोलॉजी उनके लिए बना के दे रहे हैं तो हम कैसे देंगे? सो बेसिकली हम लोग अभी एक्चुअली काम कर रहे हैं. इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली 2024 तक कुछ लेके आ रही है जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे इंडिया में सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं.
ठीक है। सो उसकी वजह से जो कॉस्टिंग जो आपको 5,000 6,000 एक फार्मर को अगर एक फार्म में सेटअप करने की अगर लगती है, तो उसको हम लोग कॉस्ट रिड्यूस करके 2,000 ला रहे हैं। सो यस, IoT एंड AI इज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको अपने क्रॉप की हेल्थ से लेके आपका क्रॉप कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, न्यूट्रिशंस क्या लग रहे हैं उस पर, एंड जो पूरी कॉस्टिंग है, जो आपकी जो ROI है आप जो निकालते हो, क्योंकि कोई अभी आप देखो इंडिया में बहुत कम फार्मर्स है जो ROI निकालते हैं कि हाँ हमने इतना ये प्रोड्यूस लगाया है एंड इसके रिटर्न इतने आएंगे एंड अगले बार इतना इन्वेस्ट करना है एंड इतना निकाल के हमें अपने पास रखना है रिजर्व करके, राइट। आप बहुत कम लोगों से सुने होंगे, क्योंकि जो स्मार्ट फार्मर्स है, जो पढ़े लिखे, जो हमारे जैसे लोग हैं, वो लोग इतना ROI निकालना या फिर सारा कुछ करते हैं। सो हम सारा कुछ उस ऐप के थ्रू जो भी हमारे डिवाइसेस लेंगे उसमें बिल्ड कर रहे हैं कि हाँ आपने 20,000 लगाए हैं तो आपको रिटर्न कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सारा कुछ उस ऐप में है, ठीक है। या फिर वो जो डिवाइस है हम आपको दे रहे हैं, तो ये इससे क्या होगा कि आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आप अगर लॉस कर रहे हो तो आप इस साल गेहूं लगा रहे हो, अगले साल आपको गेहूं लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लॉस में जाओगे उससे, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टेक्नोलॉजी, ये नॉट इन लद्दाख बट ये सारे इंडिया के लिए एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड और ऑब्वियसली जो हमारे ग्रो सिस्टम्स है, बिकॉज हम लोग एंड टू एंड सिस्टम्स बनाते हैं, तो ग्रो सिस्टम से लेके आपका जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी काम करते हैं, इवन सीड्स भी प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को फॉर फर्स्ट 6 एंड दो क्रॉप्स के लिए उनको हम लोग हेल्प करते हैं ताकि वो पहले ग्रो करें एंड सीखें एंड उसके बाद दे कैन स्टार्ट पेइंग अस। वैसा भी ऑप्शन है हमारे पास, सो दैट कि पहले वो यूज करना सीखे कि है क्या एंड उसके बाद वो पे करे। पैसे की जल्दी नहीं है, ऐसा है। तो इन सारी चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे डेजर्ट की बात करते हैं आप, राजस्थान से हमें इंक्वायरी आई थी कि वहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है एंड एक फार्मर ही थे, उनको हाइड्रोपोनिक सेटअप करना था, उनको लगा हम एक हाइड्रोपोनिक्स ग्रो किट बनाने वाली कंपनी है, तो हमने उनको क्लियर किया कि नहीं, हम आपको हाइड्रोपोनिक से ज़्यादा बचत करा सकते हैं। हमने उनको अच्छे से सिखाया कि आपका ROI कैसे निकलेगा, तब जाके उन्हें समझ में आया एंड तब वो रेडी हुए। तो अभी बहुत जल्दी वो अपना फंड्स वगैरह रेडी करेंगे एंड तब पायलट हम उनके साथ करेंगे। सो डेजर्ट में ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेजर्ट में आप नहीं कर सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमारे टेक्निक्स एंड हमारी ग्रोइंग जो सिस्टम्स है वो इम्पोर्टेंट है वहाँ के। जी। Okay. One more question is for you. How can we make technologies cost effective since all farmers cannot access it? As we can take example of ISRO and Bihar. I couldn't understand the last line, but again the question was regarding cost effectiveness of the technologies. दैट इज व्हाट, या सो बेसिकली जब हम सेंसर्स की बात करते हैं ना, क्योंकि ये सारे सेंसर्स एंड जो 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 मदरबोर्ड्स वगैरह जो हम लोग बनाते हैं या फिर जो भी रास्पबेरी पाई वगैरह यूज करते हैं, जो पूरा का फार्म कंट्रोल करता है बेसिकली, ठीक है, ये सारी चीजें हम जो है चाइना से मंगाते हैं या फिर दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास भी हमारा सेम सवाल था कि हम चाइना से क्यों मंगाए जब हम अपने देश में बना सकते हैं। एंड हमारे तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो बनाइए हमें आत्मनिर्भर भारत। ये सेम सवाल था जो मुझे क्वेश्चन आया, ये सेम सवाल मैंने भी पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो CEO थे इंक्यूबेशन के। सो उन्होंने मुझे यही जवाब, हम लोग इस पे ही काम कर रहे हैं ताकि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स, इंडिया में ये जो सारे बोर्ड्स है सर्किट बोर्ड से बने, ताकि कॉस्ट कटिंग हो एंड हर फार्मर ले सके। एंड बेसिकली जब तक मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, ठीक है, अगर आप 20,000 का फ्रिज खरीदते हो, अगर आपको उस पर ROI पता ही नहीं होगा कि 20,000 के फ्रिज के साथ आपको करना क्या है और आपको क्या रिटर्न मिलेगा, आप 20,000 इन्वेस्ट करोगे क्या? नहीं करोगे ऑब्वियसली। या फिर आप जब घर पे AC लगाते हो तो जहाँ जरूरत है वो पता तो होना चाहिए कि वो जरूरत है, वो एजुकेशन, वो नॉलेज जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक ऑप्शन ही नहीं है कि कोई खरीदेगा। तो आप 2,000 की भी चीज बना के अगर फार्मर को बोलो कि भाई ये तुम्हारे खेतों में बहुत अच्छा काम करेगा, बट वो नहीं लेगा जब तक उसको उसकी जरूरत नहीं दिखेगी। एंड इंडिया में मैं आपको एक चीज और भी कहूंगा, जैसे हम लोग बेसिक pH मीटर, ठीक है, तो जो कमर्शियल pH मीटर भी आता है वो भी हमें ब्लू लैब से जर्मनी से मंगाना पड़ता है, जो कमर्शियल है, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, ठीक है। तो हमारे पास अभी वो भी ऑप्शन नहीं है कि हम इंडिया में बिल्ड कर सके जिसपे हम ट्रस्ट कर सके एक्चुअली। तो गैप है, कहीं ना कहीं नॉलेज में गैप है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपने देश में आपको भी पता है कि अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वर्टिकल फार्मिंग एंड और चीजें करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो पढ़े लिखे लोग जो जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, ठीक है।
So बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गैप है जो हम एक सेक्शन में तो आई थिंक नहीं खत्म कर सकते, बट यस आई थिंक मैंने आपके सवाल के जवाब दिए। हाँ, लेकिन प्रणय अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और थोड़ा सा एक बढ़ते हुए आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ चक्रास कैन हेल्प STI Hub Ladakh in promoting the technologies in agriculture. How can you help us? Can we have your technologies showcased at STI Hub Ladakh, or can we have you sometime in Ladakh for detailed discussion with the farmers on ground? Absolutely right, because we are actually tying up with this, and like we are actually working with a few communities as well. So recently we joined a community, like it's a transgender community, and we like think कि transgenders को भी like chance मिलना चाहिए agriculture में. So लद्दाख के लिए yes, अभी हम लोग जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग पेटेंट्स ले रहे हैं. सो वंस पेटेंट हो जाएगा हमारा, उसके बाद लाइक हाँ बिल्कुल हम शोकेस कर सकते हैं. एंड ऑल्सो लाइक फरवरी मंथ में मे बी एंड तक में हम लोग फिर से कनेक्ट कर सकते हैं. एंड हम लोग लाइक कुछ वॉलंटियर्स ढूंढ रहे हैं पैन इंडिया से. एंड मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे लद्दाख में बात करने के लिए, बोलने के लिए मौका मिला, और आप मुझे बुला भी रहे, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए. एंड एक्चुअली हम वॉलंटियर्स ढूंढ रहे हैं ताकि ये जो ट्रेनिंग एंड ये नॉलेज जो शेयर करने की चीज़ है ना, घटती नहीं है, तो इसके लिए हमें ये चाहिए. तो इसके लिए हम कुछ वॉलंटियर्स हायर करें जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, जिनके साथ हम बैठे ट्रेनिंग करें, उनको ट्रेनिंग दे, उनसे कुछ सीखें, उनको कुछ सिखाएं, ताकि वो लाइक एक कम्युनिटी में स्प्रेड कर सके चीज़ों को. Exactly. Thank you for that, and I believe that's why people are asking for your contact. So it would be great if you can drop your email ID in the chat box. Yeah, please. Sure. And with that, Anu, I hand over to Anupriya. Thank you, Mr. Pranay Kumar. You and your agri-tech startups based up in Sikkim is really providing efficient information to be disseminated in the public domain. Thank you for talking about the challenges in agri-industry and adoption of different technologies in agriculture. We wish you rise and stay in touch with our STI Hub in future also. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for having me. With that, Anupriya, we can invite our next speaker for the day. Or speaker. Sir, our next presenter is Ms. Shifali Vinod Ramtik. Yeah, hello everyone. I am Pawan Kumar, CEO and founder of the PS1925. Basically, really sorry because Shifali ma'am is busy in another meeting. So today उनके जगह पे मैं ये भी प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? तो really sorry. So it's okay, Pawan. It's okay, Pawan. No need to say sorry. Pranay, can you stop sharing your screen so that Pawan can share his content? Pranay, can you hear us? Okay, let me make him a matter. Okay. Pranay, can you stop sharing your screen? Mohit, can you please call the speaker? In the meanwhile, Anupriya, can you talk about the next speaker or the company? Sir, Ms. Shifali Vinod Ramteke was the last presenter of today's event. Okay. So I think we can wind up here now. No. Mr. Pawan Kumar is Mr. Pawan Kumar is presenting on behalf of Ms. Shifali. Okay, sir. Okay. So I am just introducing Shifali Vinod Ramtek. Shifali Vinod Ramtek, the founder and COO of PS1925, a drone startup working on tackling issues faced by farmers in India. She is an enthusiastic researcher and entrepreneur with mission of blending science with entrepreneurship to bring technology-based scientific resolutions to farmers in India. They are leading to bring crop protection, spraying drone solutions for precision agriculture and climate smart farming in India.
Yes, you can present your presentation now, please. Pawan, you can share your content and you can talk about your work. Pawan, can you hear us? Hello. Yeah, Pawan, can you hear us? I believe there are some issues at Pawan's end. Hello, I am audible. Hello. Yes, Pawan, you are audible. Please share your content. एक्चुअली सर मेरा स्क्रीन में शेयर नहीं हो पा रही अभी, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ बट मेरा स्क्रीन जो है शेयर नहीं हो पा रहा है. Just click on the share content arrow on top, and from there you can opt the window which you want to share. सर वो ऑप्शन अभी नहीं आ रहा मुझे, वही मैं कर रहा था अभी. Okay. I just share options. If it's not coming through, you can. सर एक्चुअली मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या अभी? नहीं, अभी विजिबल नहीं है. अगर आप बहुत जल्दी से अपना स्लाइड डेक मुझे भेज सकते हैं तो भेज दीजिए. मैं अपना ईमेल आईडी टाइप कर रहा हूँ चैट बॉक्स में. ओके सर, एक्चुअली आई थिंक शेफाली मैम आ गई हैं, तो ज्वाइन करिए शेफाली मैम भी. Please help Dr. Shefali in managing the talk, please. Yes. Yeah. Hello everyone. I'm so sorry that I was in actually I had the meeting for 5 p.m. because So I'll just share my screen. I'll start with the presentation ASAP. Okay, just give me. Yeah. Yes. Is it visible? Yes. Yeah. Okay, I'll just. Dr. Shefali, before you proceed, let me just say a few words that you can talk in common language also, because we have many farmers. Or otherwise, it's your choice. You can go with English only, or it's up to you. Okay, sure. So hello everyone. I'm Shefali Nodramtike, the founder and CEO of the startup PS125. So I'll tell you a little bit about my startup first, and then we'll move on to basics से जाएंगे, क्योंकि जैसे कि सर ने कहा कि farmers and सब टाइप के stakeholders आए हैं इस मीटिंग में. So मैं चाहूंगी कि हम उस तरीके से बात करें कि हम एक दूसरे को समझ पाए. So सबसे पहले कंपनी के बारे में बताऊंगी. हमारा जो PS1925 एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिसे कि ड्रोन्स कहते हैं वो बनाता है. हमारी कंपनी का एक मोटो है कि हम मेक इन इंडिया के प्रिंसिपल्स पे अपना ड्रोन बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी थी कुछ टाइम पहले तक काफी महंगी थी एंड लोग एक्सेस नहीं कर पाए थे. जैसे फार्मर्स के लिए भी अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हम उस पर आगे आएंगे कि हम किस तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी को ला रहे फार्मर्स तक. हमारी जो कंपनी है वो काम कर रही है यूएवीज पे फॉर द पास्ट 6 years. 6 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं. हमने दूसरे सेक्टर्स पे काम किया है, जैसे कि हमने दवाइयाँ पहुंचाने के लिए काम किया था विद द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसको हम लोग कहते थे अपना चिकित्सा ड्रोन. एंड हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर के लिए बनाया है उसे हम कहते हैं कृषि PS1925. वैसे ही हमारा डिफेंस के लिए रक्षक ड्रोन है, एंड ऐसे ही दूसरे सेक्टर्स के लिए हमारा जैसे सिनेमेटोग्राफी के लिए दृश्यम है. क्योंकि हमारी कंपनी का कॉन्सेप्ट है कि हम देसी ड्रोन्स बनाना चाहते हैं जो कि इंडिया में बने एंड इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए, इसीलिए हमने ये नाम चूज किए हैं. तो हम 7 मेजर सेक्टर्स के लिए कर रहे हैं. एंड करंटली जो आज मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है
कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसके AI कहा जाता है, उसकी मदद से हम क्रॉप प्रोटेक्शन और स्प्रेइंग या फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जिसे आज कहा जाता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर, मतलब कि किस तरीके से हम प्रिसाइज तरीके से अपने एग्रीकल्चर को मैनेज कर सकते हैं और हम अपने इनपुट्स, मतलब कि कम लागत लगा के ज्यादा पैदावार को लाया जा सकता है, उस पे हम आज बात करेंगे। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफ बताऊं, मैं एक PhD रिसर्च स्कॉलर भी हूं इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, एंड मेरे को फाउंडर से आपने बातचीत करी, वो पवन कुमार है। सो हम दोनों ने क्या किया था, हम लोगों ने काम शुरू किया था 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से। मेरा बैकग्राउंड बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। एंड हम लोगों ने अपना काम कैसे शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे सब फार्मर्स है, तो हम लोग थोड़ा सा एक स्टोरी से कनेक्ट करना चाहेंगे फार्मर्स के साथ। सो हम लोगों ने क्यों चूज किया, मैं ये पहले बताना चाहूंगी, एंड फिर हम आते हैं कि ड्रोन्स क्यों जरूरी हैं। एक्चुअली जो मेरे साथ जो को फाउंडर है मिस्टर पवन कुमार, ही बिलोंग्स टू अ विलेज रियोतीपुर, अगर आप लोगों ने सुना होगा, एक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, जहां पे जो एशिया का सबसे बड़ा विलेज माना जाता है एरिया वाइज। तो वहां पे अब पवन ने बचपन से देखा कि अपने जैसे चाचा वगैरह भी उनके खेती जो करते हैं, उन्होंने ये विटनेस किया कि काफी दिक्कतें आती हैं फार्मर्स को, कि लेबर टाइम पे ना मिलने की वजह से या फिर कुछ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस ना होने की वजह से जो क्या होते हैं, कीड़े खा जाते हैं फसलों को टाइम पे ना, क्योंकि पोस्ट इमर्जेंस, प्री इमर्जेंस, अलग अलग टाइप के पेस्टिसाइड स्प्रेइंग शेड्यूल्स होते हैं जो नहीं कर पाते फार्मर्स, क्योंकि उनको लेबर नहीं मिल पाता, या फिर क्या होता है अगर पेस्टिसाइड स्प्रेइंग करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर की वजह से, केमिकल्स की वजह से भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये सबको देखते हुए हम लोगों ने 2018 में अपनी रिसर्च को एज अ स्टार्टअप कन्वर्ट किया, जिसको हम PS1925 कहते हैं, ये उसका लोगो है, ताकि हम फार्मर्स की हेल्प कर पाए। उसके लिए हम लोगों ने अपनी जर्नी कैसे बताई, उसके लिए आगे आते हैं। पहले स्टार्ट करते एकदम बेसिक से कि ड्रोन हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, ड्रोन जो है एक परफॉर्मेंस ही नहीं बट एक फार्मर्स को ये भी बताता है कि हम, मतलब इतने बेनिफिट्स हैं। अगर आप देखा जाए ड्रोन का मार्केट, अगर आपने रिसेंटली अभी सुना होगा, न्यूज में भी आया था कि जो तोमर जी हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मतलब अब मिनिस्ट्री भी काफी इंटरेस्ट ले रही है ड्रोन्स में। हम तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ड्रोन्स एक ऐसी चीज है जिससे आप ना कि मतलब अनलिमिटेड एप्लीकेशंस में देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपका एक खेत है एंड आपको उसमें से आपको पता लगाना है कि आपकी खेत की क्रॉप में क्या हेल्थ है, उस हिसाब से अगर आपको मैप करना है विद, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स बोलूँ तो हम मल्टी सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी पे काम करके वी इंटीग्रेट द क्रॉप हेल्थ डेटा विद द स्प्रेइंग ड्रोन सोल्यूशन, सो दैट वी इंटीग्रेट प्रिसीजन टेक्नोलॉजी इनटू द ड्रोन। अब इसको अगर सिंपल शब्द में कहा जाए कि अगर हमारी एक खेत है, जैसे कि हमारी इस पे ड्रोन उड़ता है, तो क्या करता है, उसमें एक स्पेशल सेंसर होते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स, एंड जो NVDI वेजिटेशन अलग टाइप के इंडेक्स के हिसाब से उसमें जाके देखता है एंड पता लगाता है कि क्या कंडीशन, जैसे वेदर की, सॉइल कंडीशन एंड टेम्परेचर, बहुत जरूरी फैक्टर्स होते हैं जब एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए, ताकि क्या होता है आपका क्रॉप ट्रीटमेंट या क्रॉप हेल्थ पता लगाने के लिए। और ऐसा माना गया है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी वो 9 बिलियन होगी 2050 में, और एग्रीकल्चर कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए अगर हमारी ड्रोन, जैसे कि सुना होगा आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों के हिसाब से अगर ड्रोन्स हमारे यूज होते हैं तो इससे काफी इंप्रूवमेंट्स आ सकती है हमारी। अब एग्रीकल्चर ड्रोन्स को क्यों यूज करें हम एज अ फार्मर, अगर हमारे दिमाग में सवाल आते हैं कि हम क्यों यूज करें, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो मैंने काफी बेनिफिट्स बताए भी आपको। अब जैसे कि ये जियो फेंसिंग है, जियो फेंसिंग का मतलब क्या है कि ड्रोन, आप ये सवाल करेंगे अच्छा ड्रोन तो जो काम करता है वो हम भी तो कर सकते हैं, तो क्यों ड्रोन अच्छा है, ये इस बात पे आज आप आते हैं हम लोग। देखिए, जैसे कि हम लोग जब भी कुछ जैसे कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी जो करते हैं, जाके पूरा सर्वे करते हैं फील्ड का, ये पता लगाने के लिए, फिनोटाइपिंग, क्रॉप डेटा निकालने के लिए, ग्रोथ रेट्स निकालने के लिए। तो अगर रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजीज देखें,
उससे भी कंपेयर करें, जो सैटेलाइट से डेटा निकलता है वो उससे भी ज्यादा प्रिसाइज अपना ड्रोन होता है। क्यों? क्योंकि वो लो लेवल मतलब कम लेवल के हाइट पे फ्लाइट करता है। एंड ये सेफ, बिल्कुल सेफ तकनीक है एंड ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी है, मतलब कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है इसका। अगर और मतलब देखिए तो आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मतलब ये है कि आपको इसमें इंसान मतलब इंसान की बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है। आप एक ऐप से अपना पूरा मैप बना के सीधा आप उस ड्रोन को उड़ा सकते हैं। बहुत ही एक टच, सिंपल टच से आप मैप बना के अपने ड्रोन को उड़ा सकते हैं। एंड अगर आप क्रॉप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो फील्ड है उसमें क्या समस्याएं, आप क्रॉप हेल्थ चेक कर सकते हैं। अगर इसकी एक और एप्लीकेशन है कि लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, सॉइल एंड फील्ड एनालिसिस के लिए, प्लांटेशन, जैसे ये बहुत ही ब्रिलियंट टॉपिक है। जैसे हम लोग का अभी फिलहाल हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से कोलैबोरेशंस किए हैं, तो उसमें से एक है प्लांटेशन बेस्ड फार्मर्स के साथ भी। तो जिनके अगर मैंगो के खेत है या एप्पल के खेत है तो उनपे क्या होता है, दिक्कत होती है कि बहुत ज्यादा हाइट के क्रॉप्स होते हैं। तो उन क्रॉप्स पे जाके स्प्रे करने के लिए क्या होता है, फार्मर्स को बहुत दिक्कत होती है, टाइम भी लगता है, लेबर नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा ड्रोन है कृषि PS-195 स्मार्ट स्प्रेइंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं इसमें आपकी अगर टेक्नोलॉजी वाइज जाएं तो स्मार्ट जीपीएस सिस्टम, बहुत से सेंसर्स है, हाई क्वालिटी कैमरा है एंड इसका जो कंट्रोलर हमने डिजाइन किया है वो इस तरीके से कि वो एक डेडिकेटेड विंड को भी झेल के कर सकता है एनालाइज करके कि अच्छा इतनी विंड स्पीड आ रही तो इतना, क्योंकि आपके जब देखेंगे एग्रीकल्चर बेस्ड जो कंडीशंस होती है इंडिया में उसमें टेम्परेचर एंड वेदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने इसमें स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे एल्गोरिदम्स डाले हैं कि ये सारी कंडीशंस को ध्यान रखते हुए एक स्प्रे शेड्यूल देगा एंड मैप करेगा उस हिसाब से। अब ड्रोन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कि ये मैंने पहले भी बताया आपको, अगर मैं बहुत ही इसमें डेप्थ में बताऊं तो हम लोगों ने जैसे कि इसके फायदे पे आते हैं। ठीक है, आपका अगर किस तरीके से हेल्प हो सकता है, जैसे हम लोग मैं केस स्टडीज के हिसाब से ही बताऊंगी ताकि ज्यादा लोग रियलाइज कर पाए टेक्नोलॉजी के अंदर ना जाते हुए ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं, ठीक है, एक ड्रोन है, हम लोगों ने जैसे अभी काम किया था जैसे इक्रीसैट के साथ, इक्रीसैट ACICRISAT हैदराबाद में है, तो हम लोगों ने उनके कुछ क्रॉप्स पे काम किया था। जैसे कि पी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो उसमें हम लोगों ने फील्ड पी पे काम किया था। तो हम लोगों ने कुछ एक क्रॉप साइकिल के लिए हम लोगों ने काम किया। तो हम लोगों ने फार्मर्स पे पहले जाके मार्केट रिसर्च सर्वे किया था, कम से कम 500 फार्मर्स पे हमने उत्तर प्रदेश रीजन में हमने जाके उनसे इंटरेक्ट किया था। तो हमें पता चला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फार्मर को, अच्छा ड्रोन टेक्नोलॉजी तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम कैसे बेयर करेंगे। सो एक टेक्नोलॉजी को आप कैसे अवेल कर सकते हैं, इसीलिए हम फार्मर्स की हेल्प करने के लिए एक सर्विस मॉडल ला रहे थे। क्योंकि अगर देखिए कि मेरा क्या फायदा हो रहा है, तो वैल्यू प्रोपोजिशन जिसको कहते हैं। एक ड्रोन क्या होता है आपका, हमने जब उस टेस्ट को किया था इस क्रॉप साइकिल के लिए, अलग अलग क्रॉप्स पे किया, हमने मैंगो पे भी काम किया, शुगर पे केन पे भी काम किया, तो हमने देखा कि हमारा जो वाटर कंजम्पशन है वो सीधा 80% कम हो गया था एंड पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर कंजम्पशन भी हमारा कम से कम 60% कम हो गया था। क्योंकि आप अगर देखिए, जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए बस इलस्ट्रेशन है कि अगर ये एक आपका फील्ड है, ठीक है, आपका ड्रोन उड़ा, उसने देखा कि कौन से एरियाज में कितना कितना कैसे कैसे हेल्थ उसके, कौन से कीड़े लगे, जैसे अलग अलग इसमें मैनेजमेंट भी सिस्टम्स होते हैं ड्रोन में, सेंसर बेस्ड। सॉइल मॉइस्चर का मैप बनाते हैं, या फिर पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कीड़ों के लिए होता है, इरिगेशन वाला होता है कि आपको कितना पानी कहाँ पे कैसे करना है, ड्रिप इरिगेशन के लिए भी हम मैप कर सकते हैं। तो अगर पेस्ट मैनेजमेंट है, तो अगर यहाँ पे रेड एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा कीड़े हैं, या फिर येलो एरिया वहां पे मीडियम बेस्ड है, और ग्रीन है जहाँ पे नहीं है, या वीड का ले ले, वीड नहीं है वहां पे, जो कहते हैं ना जंगली घास उग जाती है, तो हम उतने एरिया पे करें जहां पे रिक्वायर्ड है और उस पर ना करें, तो हमने देखा कि हमारा 60% रिडक्शन आया उसमें। एंड इससे क्या हुआ, हमने ये भी देखा कि हमारे जो फार्मर जिनके साथ हमने काम किया था,
हमारा उनके साथ ये एक्सपीरियंस रहा कि उनकी पैदावार भी बढ़ी, कम से कम 40% उनकी पैदावार बढ़ी जो हमने उनके साथ काम किया था। अब इसमें और भी सबसे बड़ी जो आती है समस्या कि आपका जो फार्मर्स की सेफ्टी बढ़ती है क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं हो रहा है हार्मफुल केमिकल्स से, एंड आपका 10% फास्टर डेटा, मतलब कि आपको डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज आपकी फास्ट हो जाती है क्योंकि आपको क्या है, रियल टाइम डेटा मिल रहा है ड्रोन से एंड उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। अब आपका हम लोग एक और यूज केस देते हैं। अगर आपने सुना होगा, न्यूज में भी आया था पिछले साल जब लॉकडाउन था 2020 में, तो लोकस्ट आए थे, बहुत सारे जो कीड़े आए थे, ये अफ्रीका से फिर पाकिस्तान से ट्रैवल होते होते पहली बार इंडिया में काफी मेजर पार्ट्स में इनका उत्पाद मचा था, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी लोकस्ट की वजह से। पहली बार मतलब उत्तर प्रदेश एंड दूसरी जगह भी जैसे राजस्थान एंड अदर एरियाज में भी पहुंच चुका था लोकस्ट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ड्रोन्स को डिप्लॉय किया था क्योंकि एक आपके एप्लीकेशन वाइज अलग अलग होता है। एक होता है अल्ट्रा लो वॉल्यूम एप्लीकेशन। क्या होता है अल्ट्रा लो वॉल्यूम से आपका जो आपके जो ये लोकस जैसी स्पेशल कंडीशंस में आप एफिशिएंटली स्प्रे करके हम लोगों ने लोकस से लड़ाई लड़ी थी क्योंकि काफी फार्मर्स का नुकसान हुआ था। तो अगर इन एग्जाम्पल्स को देखें तो फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छी तकनीक है जो हम लोगों ने बनाई है। ये हमारे पवन कुमार है जो हम लोगों ने गाजीपुर में जाके टेस्ट किया था, सर्वे किया था अपने फार्मर्स के साथ। ये हमारा ड्रोन है। एंड अगर हमारे बारे में थोड़ा और बताएं तो हम लोग ने काफी जगह रिप्रेजेंट किया है। ये टेक्नोलॉजी वैलिडेटेड है बोइंग से, सिस्को से, फेसबुक से। एंड ये तो बस कुछ नाम है। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कार्टिन यूनिवर्सिटी में गए थे पहली बार। कनाडा इंडिया एक्सेलेरेशन प्रोग्राम है जिसमें कनाडा और इंडिया ने मिलके एक प्रोग्राम किया था जिसमें हम लोग टॉप 10 स्टार्टअप्स में सिलेक्ट हुए थे। एंड अभी हमारा MOU रिसेंटली ICFA जो एक यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत काफी काम कर रही है उस पर, हमारा उनसे भी बातें चल रही कि हम कैसे फार्मर नेटवर्क तक पहुंच के अलग अलग FPO से कनेक्ट होके हम लोग कर पाए। एंड जवाहरलाल विश्वविद्यालय जो है जबलपुर में, उसकी मदद से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम पहुंच पाए। ऐसे ही हम लोग जैसे अभी हमें बहुत अच्छा मौका मिला है STI हब में आके अपना ड्रोन तकनीक का और एक ड्रोन्स के बारे में भी फार्मर्स को जागरूक करने का जो हमें मौका मिला है। तो हम जरूर चाहेंगे कि आगे जाके हम जितने नेटवर्क हैं इसमें फार्मर्स, उनको हम लोग अपने ड्रोन की मदद से हेल्प कर पाए। तो ये थी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी। अगर किसी को टेक्निकल क्वेश्चंस भी हो या फिर आपके किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। या Thank you, Shefali, and thank you, Pawan, for the wonderful session. And I would say कि आपने बहुत अच्छे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और UAV को बताया कि कैसे वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हेल्पफुल हो सकता है। आपने बताया कि कैसे क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं कन्वेंशनल एग्रीकल्चर सेटअप में, जो कि मिस्टर पवन ने खुद पर्सनली फेस किया और उसके ऊपर काम किया। तो उनसे बेहतर शायद ही उसको समझ सकता है कि पेस्ट कंट्रोल के लिए या आपको सॉइल के कुछ पैरामीटर्स मेजर करने हैं या कुछ मैन पावर इश्यूज हैं, तब भी वो UAV आपके हेल्पफुल होते हैं। और आपने बताया कि कैसे इंडियन पर्सपेक्टिव में पर्टिकुलरली UAV हेल्पफुल हो सकते हैं इन फार्मिंग, और काफ़ी पैरामीटर्स पे आप मैपिंग कर सकते हैं अपनी खेती पे, अपने उस पे। और जो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा कि हाउ रिसोर्सेज कैन बी ऑप्टिमाइज्ड बाय यूजिंग AI एंड UAVs, लाइक पेस्टिसाइड्स को कैसे रिड्यूस करना है, या वाटर जो इरिगेशन करना है वो कम कैसे करना है, या फर्टिलाइजर्स को कितना ऑप्टिमम देना है। सो आई बिलीव दैट वाज रियली a commendable talk and really informative for us, people like us who are sitting in scientific institutions. So I believe जो किसान हैं जो या जो स्टार्टअप्स हैं या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सुन रहे हैं हमें, वो लद्दाख से हैं या अराउंड इंडिया कहीं से भी हैं, आई बिलीव वो सब बेनिफिट हुए होंगे आपकी टॉक से। एक मोहित ने सवाल पूछा है कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि हाउ दिस टेक्नोलॉजीज कैन बी
easily used by farmers, मतलब like how we are connecting to the farmers. ठीक है, आपने एक टेक्नोलॉजी बनाया, डेमोन्स्ट्रेट किया, but how we are bridging that gap, particularly with the reaching to the farmers. थोड़ा सा वो बताएं, आपने कुछ मॉडल पे बात किया था, सर्विस मॉडल, फिर से एक बार बताएं आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मतलब सही बात है, अगर हम आते हैं, अगर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज होती है तो ये सवाल आता है फार्मर्स का कि कैसे हम लोग खरीद तो पाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत महंगी टेक्नोलॉजी होती है। बट हम लोगों ने इसीलिए एक इनोवेटिव मॉडल सोचा जिसको कहते हैं सर्विस मॉडल, या अगर उसके टर्म्स माय बिजनेस मॉडल के पे पर यूज या सब्सक्रिप्शन मॉडल कहा जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका, जैसे फार्मर हैं, वो बताए कि उनका कौन सा क्रॉप है और उन्हें कब करना है, उनका मतलब स्प्रे साइकिल हमें पता चल जाए, एंड ये पता चल जाए कि कितने एकर्स उन्हें करने हैं। ये सब इनपुट लेके, जैसे हम एक कॉल पे ये सब इनपुट्स लेते हैं, एंड फिर हम लोग उन फार्मर्स के पास एकड़ वाइज, जैसे उस एरिया के वाइज डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप है या कौन सा उसके क्या क्या पैरामीटर्स है, उस हिसाब से हम लोग एक नॉमिनल रेट पे, जितना आपका वहां पे स्प्रेइंग का रेट बनता है, उससे थोड़े से कम रेट पे हम आपको देते हैं पर एकड़ वाइज। ना कि आपको पूरा ड्रोन नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ड्रोन में काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है। ड्रोन लेना वैसे भी फीजिबल नहीं होगा एक फार्मर के लिए, क्योंकि उसके लिए ड्रोन पायलट्स चाहिए होते हैं एंड ड्रोन से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं। जैसे हमारा जो ड्रोन है वो 10 kg पेलोड उठा सकता है, एंड इट कम्स अंडर 25 kg पेलोड क्लास, जो स्मॉल कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स में आता है। तो आपको स्मॉल कैटेगरी की सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेगी, एंड रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड जितनी भी इंजीनियरिंग उसमें लगती है, उससे रिलेटेड कम से कम 50 पैरामीटर्स होते हैं जिस पे आपको टेस्टिंग करानी होती है अलग अलग लैब्स में जाके। तो टेस्टिंग इज कॉस्टली, दैट इज वाई वी नो ऑल ऑफ दिस, एंड इसीलिए हम फार्मर्स की हेल्प करना चाहते हैं सर्विस मॉडल से, ताकि हर फार्मर इस टेक्नोलॉजी को अवेल कर पाए आसानी से। जैसे कि अगर हम देखें, हम लोगों ने अगर पंजाब में देखें, पंजाब में 400 से 500 एक एकड़ का लगता है खर्चा, जैसे देते हैं वो लोग जो स्प्रेयर्स होते हैं उनको। तो हम पर जैसे बीघा पे जाए, अगर जैसे यहाँ पे भी अगर होता है 150 से 300 रुपए में होता है उत्तर प्रदेश, तो हम उनको एक नॉमिनल रेट जैसे कि 100 से 150 के बीच में उनको देते हैं अपना पर बीघा वाइज। तो एकड़ वाइज हमारा 1500 बैठता है। दिस इज जस्ट अप्रोक्सीमेशन, अगर क्रॉप अलग होगा तो वो चेंज हो जाएगा। सो हम इस तरीके से फार्मर्स की हेल्प करने के लिए ही हमने इस मॉडल को सोचा। जी आई रिक्वेस्ट कि आप अपना कांटेक्ट डिटेल्स चैट में छोड़ें, क्योंकि काफी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे आफ्टर दिस टॉक ऑफ योर्स। और I myself, being the project coordinator of STI Hub Ladakh, would invite you to deploy your technology in STI Hub Ladakh, so that actually what we are doing, actually I want to give you a brief detail how we are working. Actually, we invited many innovators from IIT Delhi, BITS Hyderabad, and IIT Madras. Tomorrow you can also hear some lectures from innovators from IIT Madras and IIT yes, Delhi. I saw this. Yes. I saw this schedule. Yeah, it is very like. Actually, what we did, we asked all these innovators in past also, and now also we are asking to somehow deploy their technologies for some, if not in perpetuity mode, but for some time they can deploy their technology in STA Hub, so that the budding innovators in Ladakh can see and learn from those things, and can have you as mentors in their realizing their dreams of becoming entrepreneurs, just like you. So they, so we want you people to help the people of the children of Ladakh. So I believe now Mohit, I will ask Mohit to contact you for the modalities, how we can do this thing. Okay, how we can have your technologies at display in STF Ladakh, or how we can have you on board for mentorship to the students. I will ask him to work it out with your team. Sure, that is great, sir. Actually, हम खुद कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे IIIT इलाहाबाद में भी हम लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, ग्रेविटी खिंचाव की इनोवेशन के लिए, कि इनोवेशन को अट्रैक्ट करना।
तो हम लोग का ये मॉडल था कि हम लोग हेल्प करना चाहते हैं स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स या फिर जो एंटरप्रेन्योर आना चाहते हैं, जैसे AICTE में भी जैसे आपने मिनिस्टर वो है ना इनोवेशन काउंसिल खुला है, तो हम वहां पे भी मेंटरिंग देते हैं स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर्स को या फिर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को। तो मुझे आपसे जान के बहुत खुशी हो रही है कि अगर हम कंट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि आप भी समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स की फीलिंग समझते हैं कि उनको क्या दिक्कतें आती हैं एंड क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, एंड वो स्टेजेस से गुजरना कि पहले आइडिया से लेके कॉन्सेप्चुअलाइज करके फिर उसको सीड से लेके प्री सीड जितने भी स्टेजेस पे हम जाते हैं, तो उसमें काफी स्ट्रगल होता है एंड प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बनाना, बिजनेस मॉडल करना। तो अगर कोई भी हमसे सीख पाए, अगर हम इस तरीके से कर पाए, एंड STI हब इज डूइंग ग्रेट ऑसम। मतलब मेरे को थोड़ा सा ब्रीफ मिला था कि आप लोग इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं इसको लेके, ताकि आप काफी एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर रहे हैं। तो इट विल बी एन ऑनर सर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के जी। Yeah, actually, these things are becoming possible just because support from the people like you. If you have heard other speakers, people came to our support when we just, had this idea in our mind that we're gonna have this STA hub in Ladakh. We will be writing to DST for a grant that will establish such a thing in Ladakh. That at that time, people supported us when we reached out to them, like we are thinking of something like this, and they said, okay, we are with you, we'll be helping you. So, that's why these things are becoming, possible because of help from innovators, researchers like you and other NGOs in Ladakh. So thank you very much, Shefali. There's a question, I believe somebody posted a question that thank you very much. My question is on drone use at high altitude where most of machine drops its capability. What drone type are you using? And recently UT admin also used for land measurement. Since Ladakh farmers are marginal farmers, their area of land are very small as compared to the other farmers. We in Ladakh also have service model for drone, but not for farmer. Can you please share an idea for Ladakh? So do you have something in mind to help marginal farmers in Ladakh? Yeah. So basically अगर टेक्निकल क्वेश्चन पे जाएं, सो इन्होंने कहा है कि हाई ऑल्टीट्यूड पे मोस्टली मशीन्स नहीं काम करती। तो इट डिपेंड्स, वो सिर्फ ड्रोन पे निर्भर नहीं करेगा। एक आपकी वायरलेस ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात आती है इसमें, कि आपका कितना रेंज जा रहा है ड्रोन का। तो उसमें वायरलेस ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज जो ड्रोन की आपको एनहांस करनी पड़ेगी। जैसे कि आपका नॉर्मली अगर 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक जाता है, अगर आप और हाई जाना चाहते हैं, जैसे 1 किलोमीटर बेसिकली होता है रेडियो ट्रांसमिशन रिसीवर ट्रांसमीटर रिसीवर का। सो अगर आप हायर स्केल में जाना चाहते हैं तो 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पे भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको दूसरे टाइप की ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय करना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली वहाँ की जो लैंड है ना, काफी वो है, जैसे हिली एरिया है ना। तो वहाँ की जो आई थिंक हम लोग तो वहाँ पे गए भी हैं, हिमाचल हमने जो देखा है, तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे उनकी जो लैंड होती है काफी छोटे छोटे और ऐसे होती है, तो जिसमें हमारे में एक टेरेन रडार है जिसके हिसाब से वो अपने आप को हाइट एडजस्ट करता रहता है। तो डेफिनेटली वो वहाँ पे काम करेगा, बिकॉज हमने वहाँ पे कुछ जगह पे ट्रायल किया था। अगर इन फ्यूचर कभी हमें मौका मिलता है तो हम लोग वहाँ पे भी कर सकते हैं ट्रायल, बिल्कुल। जरूर आइए हमारी टीम में। वी हैव some good experts in electrical power systems. We have experts in glacial sciences. So definitely we'll extend our help to you, and we expect your help in disseminating your technology at STA Hub Ladakh, if you can somehow. Yes, sure. Thank you, Dr. Pawan, Dr. Shefali, for joining us. Thank you so much, sir. Today, it was really great to hear from you the real, technology, how you, worked, and you won some really good prizes from government, from foreign governments, from universities, from industry. Congratulations for that, and thank you very much for joining. And before we conclude our session, there is an announcement for all the participants. Please, all participants can use the same link for joining tomorrow for listening the sessions over livestock and renewable energies. And also, I would like to request our speakers, they can also join tomorrow for the sessions to hear from our experts. Okay.
Yeah. Thank you. Thank Thank you. you. Thank Thank you, you so much. It was Shivai. Thank you. lovely interacting with you. It was lovely. Yeah, we had a very good experience and मैं देखा आप लोगों ने बहुत मेहनत कर रहे हैं and STI Hub is like बहुत ऊंचाई पे and बहुत innovators की help हम लोगों जैसे लोगों की help कर रहा है actually. So we are very grateful that you are helping the whole entrepreneur innovator community and also for other people like everyone you are helping. So thank you Actually, so much. idea was literally Yeah. idea was that every session is complemented by Yes. people like you. We have 2 or 3 lectures from R&D or academicians, and then 2 or 3 lecture talks from the industry like you people who develop the technologies and deployed on ground. So that Yes. was the idea. That yeah, it was the schedule was very good. I actually looked at the schedule. Yeah, you're right. That in industry academia collaboration, like awesome. Yes. Yeah. So that was the idea. Okay. Thank you very Thank you much so much. for a long day. You all joined. We'll connect you again tomorrow at 10 a.m. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much.